at the members of the first Indian team participating in the 44th Chess Olympiad. Grandmaster Sasikiran Krishnan. He has played 100 classical games for the Indian team at the Chess Olympiad. That is such a huge bonus for the Indian team, isn't it? Sasikiran is also a 4-time Indian national champion. He was part of the Indian team that won bronze at the Tromso Olympiad, and he also won an individual silver medal at the same Olympiad. Grandmaster Narayanan SL is from Kerala, and he has slowly and steadily climbed the rating board. He is currently ranked number 6 in India, and this will be SL Narayanan's debut at the Chess Olympiad. Grandmaster Arjun Erigaisi. True to his name, with the Gandhivam, he is hitting all the right targets. Well, Gandhivam 2003 is the username of Arjun Erigaisi on chess.com. He is the current Indian national champion as well as the current junior speed chess champion. And Arjun is currently at his peak rating as of now, and his amazing performances at the Tata Steel Chess India Rapid and Blitz very unforgettable. His youthful energy will be a great strength to the Indian team. Grandmaster Harikrishna Pentala has represented India in 8 chess Olympiads. I'm talking about OTB chess Olympiads. And he made his debut at the chess Olympiad at the age of 14 years 5 months in Istanbul. He was also part of the Indian team that clinched gold in the Asian Games at Doha in 2006. Harikrishna also contributed to the Indian team with his performance at the online chess Olympiads in 2020 as well as in 2021. Grandmaster Vidit Gujarati. He'll be playing the OTB Olympiad for the 3rd time in a row. He led the Indian team as the captain in the FIDE Online Chess Olympiad in 2020 and clinched gold. He was also part of the team in 2021 that won bronze. In the last 2 years, Vidit has streamed his chess games as well as released a lot of vlogs that cover his chess journey. It will be exciting to see Vidit in action at this Olympiad, and we can expect a lot of vlogs from the event as well. Grandmaster Srinath Narayanan is the coach and the captain of this Indian team. With a prior experience of assisting a lot of players as well as coordinating the team during the previous online Olympiads, Srinath has proved to be Mr. Dependable. He has helped the Indian teams with the openings and strategies previously, and his role in this OTB Olympiad is likely to be the most important role of his career so far. In the recent years, Srinath has also taken up streaming and is a regular commentator on our channel. We might get a shot or two from him during the Olympiad. Stay tuned to our channel and let's wish the Indian team in the comments. Let's take a look at the members of the first Indian team participating in the Women's Chess Olympiad. Bhakti Kulkarni. I am Bhakti Kulkarni, hails from Goa and has represented India in many team events. She has won the Indian Women's National Championship in 2018 as well as in 2019. She is a former Asian chess champion as well, and she was part of the India's historic silver medal at the World Women's Team Championship in Spain. She was also part of the Indian team that clinched gold in 2020 FIDE Online Chess Olympiad as well as the bronze medal in the 2021 FIDE Online Chess Olympiad on chess.com. I am Tanya Sachdev. Tanya Sachdev is a popular name in the chess circle. Apart from playing chess professionally, she is also a streamer, commentator and a presenter. She was awarded the Arjuna Award in 2009. She has also won the Indian Women's National Championship in 2006 and 2007. She is a 3-time Commonwealth chess champion. She was also part of the Indian team that clinched silver in the World Women's Team Championship in Spain. Coming to the Olympiads, she has won an individual bronze medal at the Istanbul Chess Olympiad in 2012. The best part is that she has been part of the Indian team for every chess Olympiad since 2008. Vaishali Ramesh Babu. She will be making her debut at the Chess Olympiad this year. She became an international master recently and also secured her 2nd Grandmaster norm at the Fisher Memorial event in Heraklion. She was part of the Indian team for the online Chess Olympiad in the last 2 years. And Vaishali was also part of the Indian team that won silver at the World Women's Team Championship in Spain. Grandmaster Harika Dronavalli. She is a 3-time bronze medal winner in the Women's World Chess Championship
and is one of the top players in women's chess. She was awarded the Padma Shri in 2019 for her achievements in the field of chess. She is employed by Indian Oil, and in 2021 she won the FICCI FLO Influential Woman Award. Coming to the best part, Harika has represented India in 8 over-the-board chess Olympiads and 2 online Olympiads. She is the most experienced player when it comes to the Olympiad in the team. Grandmaster Koneru Hampi is a popular name in the global chess circuit. She became the youngest woman ever to achieve the title of Grandmaster at the age of 15, beating the previous record of Judith Polgar by 3 months. This record was later broken by Hui Fan. Grandmaster Koneru Hampi is a former Women's World Rapid Champion as well. She has been awarded the Arjuna Award as well as Padma Shri for her chess achievements. She won the BBC Indian Sportsman of the Year in 2020 following a public vote. Currently, she is employed by ONGC. She played a huge role in the victory of India at the online Olympiads in 2020 with an important victory in the Armenia game. With a lot of experience at the world-class events, it is great to have a star like Koneru Hampi in the team. Grandmaster Abhijit Kunte is the coach and the captain of this Indian team. He is the 4th Grandmaster of India. He has helped the Indian team in the capacity of a coach before. He was bestowed with the Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement in the field of chess recently. He was the vice captain and coach of the Indian team along with Srinath at the online chess Olympiad that happened on chess.com in 2021. He was also coach of the Indian team along with Shyam Sundar at the World Women's Team Championship in Spain. The best part about him is that he knows and understands all these players really well. Let's wish the Indian team all the best in the comments. Let's take a look at the members of the second Indian team participating in the 44th Chess Olympiad. Grandmaster Ronak Sadhwani. He hails from the Orange City, Nagpur. He is a regular at chess.com events like Rapid Chess Championship, Title Tuesday, Arena Kings and so on. In 2021, he earned a spot to play the Bullet Chess Championship alongside world-class players like Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja, Levan Aronian, Daniel Naroditsky and others. In the same year, he also became world number 1 in the under 16 category. He brings a lot of energy to the chessboard and it will be great to see him in action at the Olympiad, and he will be making his debut at the event. Grandmaster Pragnananda. Pragnananda is a famous name now, all thanks to his amazing wins over world champion Magnus Carlsen. His sharp calculations and solid repertoire make him one of the best prepared juniors in the world. He was part of the online chess Olympiads that happened on chess.com and has a good camaraderie with the teammates, and I think that will be a big bonus to the Indian team. Next, Grandmaster Adhiban Bhaskaran. Adhiban, also known as the Beast for his hyper-aggressive style of play. In modern times, he is often associated with the move first b3. Speaking of Olympiad, he contributed to India's bronze medal at the 41st Chess Olympiad in Tromsø by scoring 7 out of 11 on board 4. He was also part of the online Olympiad in 2021 that won bronze. So Adhiban will be looking forward to making the most of this opportunity. This may be the comeback tournament that Adhiban is looking for. Next on our list, we have Grandmaster Gukesh Dommaraju. He is India's youngest Grandmaster as of now. And if there is one junior who has climbed a lot of rankings, that is Gukesh. At the time of recording this video, he is junior number 2 in the world, next to Alireza Firouzja. And he has a special connection with Spain as he has won 5 tournaments in Spain in a span of 1 year. And he'll be making his debut for India at the Olympiad. Grandmaster Nihal Sarin. Nihal is known as the devil when it comes to fast chess. He has won Junior Speed Chess Championship on chess.com twice.
And on the other side, Nihal has also won classical tournaments. An interesting fact about Nihal is that at the age of 10, at Kerala, he played a simultaneous exhibition match against 112 players of all age categories and he won all those games. One of the qualities of Nihal is that he is very unpredictable and has an universal style, and this could work really well for the Indian team. And he was also part of the gold medal winning team in the 2020 FIDE Chess Olympiad. It will be very interesting to see Nihal play in this Olympiad. Coming to the captain and the coach of the Indian team, R.B. Ramesh. Grandmaster R.B. Ramesh is a renowned coach. To give you a brief of his students' accomplishments, his students have won national titles, 36 national titles, and 35 World Youth medals, 42 Asian medals and counting. And he is a coach of Pranananda, Arvind Chidambaram, Karthikeyan Murali, Arjun Kalyan, Vaishali and many others. It is important to note that he was the captain and coach of the Indian team at the 2012, 2014, 2016 and 2018 Olympiad. His inputs and presence will be a big boost to this Indian team. Let's do an interesting segment with Ronak Sadhwani and Nihal Sareen. Who do you think sleeps late? Oh. Who plays B3 more? Okay. Who likes 10 plus 1 more? Okay, that's right. Who is good at bug house? Who is good at playing, or let's say who is good at surprising opponents when you're playing against each other? Who is more surprised? Alright. Who do you think has the least chance of playing A4 on the first move? Okay, so you are less likely to play A4. Who knows? You never know, huh? Alright. Who is good at puzzle rush survival? Survival mode. What about puzzle rush 3 minutes? Okay. Who has tried 4-player chess? I mean, we both have tried. Yeah, I've tried more. Who is a better streamer on OBS? So you are well equipped and you have some experience, yeah? Who is good with interesting tweets? This is that I don't tweet. Okay. Now I am running out of questions. Good sign for us. Okay, thank you Ronak and thank you Nihal.
Hello, Oh, hello, we are live. hello. Welcome everyone to the round 9 of FIDE Chess Olympiad 2022 और आज हमारे साथ जुड़े हैं as usual साहिल टिक्कू भाई. साहिल भाई, The same old boring Tickoo with the ridiculous hairstyle until it dries out. क्या हाल है चैट भाई? कैसा चल रहा है सब? भाई आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडे भाई. आज 9th राउंड और आज भाई एक बार अगर हम लोग मैचअप्स देख ले तो लोगों को बताते कि क्यों एक्साइटेड हम भाई. लेट्स गो. हाँ, I think pairing से काफी कुछ साफ हो जाएगा भाई, बिल्कुल. And as you can see, India पहले settle हो जाते हैं भाई. I think it's like many things, you know, in morning we don't settle down quickly. पहले pairing settle हो जाते हैं. And now we have India. Okay, अभी settle now नहीं we हुआ have है. Now we have video of Anish Anish Giri. Anish Giri की भाई pairing wearing बाद भाड़ में गई भाई. Anish Giri is more important chat. I totally agree with this. स्ट्रैटेजी बना रहे हैं भाई तो भाई एक बार चैट में देख ले भाई कौन कौन जुड़ा है हम लोग साथ. भाई देव पटेल इज देयर, सम गाय समवेयर. भाई थैंक यू भाई, आप कल भी जुड़े थे हमारे साथ. देव पटेल इज अगेन देयर. ओके, शांतनु, अमन झा, टोटोरो, बॉस बेबी, सौरभ यादव. भाई जो भी हमारे साथ जुड़ा है एक बार चैट में हाय तो लिख दे यार हम लोग सबको. हेलो. हाँ बिल्कुल, पता लगे भाई कौन कौन चैट में है. बाय द वे सारे प्राइस बढ़ चुके हैं चैट में. बता देना आपको मिल गया है कि नहीं भाई. जो भी मेंबरशिप से बता देना चैट. एंड वी फाइनली हैव द पेयरिंग्स. इंडिया वन अगेंस्ट ब्राजील. ओहो, हरे कृष्णा अगेंस्ट मिस्टर सूपी. याद है कि ओह यस आई रिमेंबर सूपी. वाह, यही सेम रिएक्शन काल से ने दिया था भाई. ओह तो वी रिमेंबर सूपी वर्सेस मैग्नस. बहुत ही अमेजिंग एक मूव खेला था उन्होंने, क्वीन मूव वेयर इट वाज अ क्वीन सैक. एंड वही प्लेयर है ये. तो आज देखने में मजा आएगा कि हरि कृष्णा के साथ वो क्या खेलने वाले हैं. विदित इज विद अलेक्जेंडर, अर्जुन इज विद क्रिकॉर, Sashi Kiran is with Andre. So it will be fun to watch. India 1 versus Brazil. And chat, they absolutely have to win now. Like they cannot risk losing, drawing, anything. If they want a medal, the only sure shot way is to win 3 in a row. That's it. कोई अब leniency नहीं चलेगी. They have to win. Let's go to the next pairing. And by the way, chat सारे के सारे जो भी membership थी वो बढ़ चुकी है. In case किसी को नहीं मिला है तो please write in the chat. In case ऐसा तुम लोग जीते हो तो. वो तो बहुत लोग लिखेंगे यार, ये गलत. जीते नहीं हो तो मतलब जीते हो तो ये नहीं कि जीते भी नहीं और मेरे को तो नहीं मिला. सेल्फ डैमेज इन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट था भाई. सभी लिखेंगे मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला. Let's go by next. India 2 versus Azerbaijan. अजरबैजान के साथ हुआ नहीं था क्या? नहीं हुआ. नहीं भाई, फर्स्ट बोर्ड पेयरिंग देखो भाई. Yes, I have seen that. Gukesh versus Mamedyarov भाई. Shakriyar Mamedyarov भाई, one of the very strong player in classical. ठीक है, बट देखते हैं आज क्या 9 out of 9 होगा. चैट को क्या लग रहा है भाई? If you think 9 out of 9 होगा तो please write in the chat. Yes, and then it is Nihal Sarin versus Rauf, Pragnananda versus Wasif, Ronak versus Nijat. So it will be fun to watch. And the main thing is chat, ये pairing. दूसरी तरफ Uzbekistan is playing against Armenia. If Armenia wins, they are almost guaranteed for a gold now. Just they have to play normal chess. Uzbekistan can stop them. And if they draw, whatever, draw is the best for India because Armenia will go to 16 points and Uzbekistan to 15. If India 2 wins and Armenia does not win, then India 2 will be number 1 ranked after this round. Wow. I think ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. एंड गुकेश के पास एक सुनहरा मौका भाई 9/9 करने का. एंड यू नो आई थिंक एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. हाउ मेनी टॉप 10 प्लेयर्स विद गुकेश नॉक आउट फ्रॉम टॉप 10, बिकॉज कल उन्होंने कारुआ निकाला. टुडे इफ ही विंस there is a possibility Mamedyarov is ranked 9th right now. He will drop down to 11th and Vishy Anand will join top 10. So Vishy Anand can benefit. And Anish Giri is 2768. If he loses today and tomorrow we have Gukesh against Anish and if Gukesh wins, Anish is also out. So I think Gukesh is literally ठान के आए हैं top 10 players में किसी को रहने नहीं देते जब तक वो खुद नहीं पहुंचते. So बहुत interesting pairing. Can we look at the other things now? India 3 एक बार देख लेंगे quickly. India 3 का है एस्टोनिया का साथ. तो ओके, ये तो वुमेन सेक्शन में सीधे जंप कर गए हम लोग. India 3 crazy. ओके, बट एनीवेज इंडिया 3 वुमेन सेक्शन में एस्टोनिया के साथ खेलने वाली है. ईशा जी खेलने वाली है नरवा के साथ. नंदिता जी खेलने वाली है ओल्डे के साथ. साहिती जी का है सिनित सिन्हा जी के साथ. एंड विश्वा जी का है ब्लॉक हिन के साथ भाई. which will be fun to watch again. And we have India 3. And यहाँ पे I think India is the favorite on the last 2 boards clearly. So finally they would win. But unfortunately team 3, they are out of medal contention chat. So they will try to finish off high.
And all important match, Poland versus India 1. If India wins this chat, gold medal ke percentage, I would place it roughly 90% आज का जीतने के बाद. So all important match. We have Humpy against Kashlinskaya. Kashlinskaya IM है लेकिन 2500 है, उनके सफेद pieces हैं. So Humpy के लिए draw भी decent रहेगा. Harika has to push against Sochko Monica. Sochko Monica पहले भी खेल चुकी है. I think Humpy का match हुआ था, I think. In Olympiad, I remember, so she's also very strong. Then, of course, Vaishali against Olivia, the one with 8x8. So, आज Vaishali का असली test है. Can she hold or win today? And then finally, Tanya against Maria, where Tanya should be the favorite, of course, with white pieces and the similar rating. So, India one looking favorites, I would say, on paper. Yeah, and I hope they win because अभी वो लोग top पे चल रहे हैं, right? हाँ, they're 1 point lead over, I think it is Georgia. And Georgia is playing Ukraine. तो उनका भी draw होने के बहुत chance है. So if they win, they might even have a 2-point lead with only 2 rounds to go. Wow. And that is literally almost guaranteed for a gold, I think. True. एक बार India 2 quickly देख लेंगे. India 2 versus किसका है? India 2 is versus Switzerland, जहाँ पे वंतिका खेलने वाली है, लीना के अगेंस्ट, पद्मिनी जी खेल रहे हैं, गजल के अगेंस्ट. ये तो सब इंडियन नेम क्यों लग रहे हैं? मैरियान गोम्स खेल रहे हैं गुंडुला के अगेंस्ट, एंड दिव्या जी खेल रहे हैं कैमिले के अगेंस्ट. भाई सो नाम थोड़े इंटरेस्टिंग है. इंडिया 2 में क्या हमारे कोई चांसेस है कोई मेडल जीतने के? ब्रॉन्ज मेडल के नहीं है, लेकिन वी हैव चांसेस टू विन. वो क्या बोलते हैं उसको, board prizes. Vantika has chances, so I think Vantika is the one who's still fighting for board prizes there. So yeah, some chances. Awesome. And chat में क्या चल रहा है? How is Mamedyarov playing in this tournament? Why Mamedyarov को allowed नहीं क्या खेलना? भाई कंट्री का अपना नंबर 1 खिलाड़ी है, खेलेगा यार. Jao is not playing luckily, otherwise it will be a much closer match now. Bhakti has played 3 matches, chat. She won 3 on 3, but I think clearly this team is stronger. जो India 1 थी. So I think we go to the games now. अभी start नहीं हुई है chat, but we can maybe have a look at the hall. पहले हम लोग standings. अरे हाँ, standings. What is going in the standings? B stats, chat. B stats OP भाई. I think B stats become a pro commentator in one tournament. Yes. लोग के करियर निकल गए भाई. तो standings देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले I think great energy by B stats and chess assist today. So उनके लिए भी commentary OP होना चाहिए. अरे थैंक यू भाई, थैंक यू. आई थिंक डेफिनेटली भाई बी स्टार्स शाइन करते हुए, एंड उसी तरह शाइन करेगी टीम बी भी. आई थिंक एक बार हमें स्टैंडिंग्स दिख जाए और एक बार हम फिर वो देख लें भाई, वो बोलते हैं ना या स्टैंडिंग्स आ चुकी हैं. सो आर्मेनिया ऑन टॉप विद 15 पॉइंट्स, लेकिन 20 भाई लुक एट द टाई ब्रेक्स. Armenia has the worst tie break among all the top like 6 teams at least. Yes. So if any team ties with Armenia among the top teams, they will end up winning. So Armenia के पास एक ही ऑप्शन है कि या तो अगले राउंड में डिस्ट्रॉय कर दो भाई 4-0, 3-1, which is not going to happen, right? So the only option is to get gold is to finish 1 point ahead of the others. So that's why Uzbekistan का मैच आर्मेनिया के साथ is also very important, and I'm hoping कि ड्रॉ हो जाए. उससे क्या होगा, उज्बेकिस्तान 15 पे रुक जाएगा और आर्मेनिया 16 पे रुक जाएगा, and India too, if they can defeat Azerbaijan, they will go to 16 tied with Armenia, but with a better tie break they'll be number 1 ranked just before 2 rounds. And let's go भाई, let's go. India 1 का बीस भाई, India 1 भी है वहां पे नीचे, अभी भी चांस है, but they have to win all 3 very clearly. अब चलते हैं वुमेन स्टैंडिंग्स. लेट्स गो टू द वुमेन स्टैंडिंग भाई, एंड लेट्स सी वहां क्या चल रहा है भाई. यहाँ पे जॉर्जिया यूक्रेन का मैच आपस में है. दैट इज रियली कूल फॉर इंडिया. एक टीम या दोनों पीछे रह सकती हैं, एंड फोर्थ का उनके साथ है पोलैंड के साथ. सो दैट इज आल्सो क्रेजी पेयरिंग. सो आई थिंक पेयरिंग इंडिया के फेवर में लग रही है, एंड इफ इंडिया कैन विन टुडे दे आर ऑलमोस्ट गारंटीड ऑफ अ मेडल, बिकॉज़ 17 पॉइंट पे चले जाएंगे, एंड जॉर्जिया अगर ड्रॉ हो गया तो 15 और 14 पे रह जाएंगे, एंड आई थिंक 2 पॉइंट की लीड with I'd say 2 rounds to go is almost convincing for gold. तो इंडिया को यहाँ पे जीतना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि आज जीत गए तो हो गया कि हाँ अब तो मेडल आ ही रहा है अपने पास. मेडल कंफर्म है, गोल्ड भी मोस्ट लाइकली, गोल्ड भी मोस्ट लाइकली हो सकता है. 2 पॉइंट की लीड पे पहुंच जाएंगे बाकी सारी टीमों से, तो 2 पॉइंट, 2 राउंड टू गो, व्हिच इज क्रेजी आई थिंक. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं गुकेश के अरे अपना हीरो. वाओ, अरे देख रहे हो क्या चैट? Oh ho, भाई साहब, this is insane. We have Gukesh there. This is absolutely insane, chat. बहुत मजा आने वाला है भाई आज की गेम देखने. He has the white pieces by the way. Yes. White आज finally उनको white pieces मिला, नहीं तो आज भी black दे देता, कहता है जीतो भाई. हाँ, वो frustrate हो चुके हैं black से पेल के, आज white से ही पेलने का मूड लग रहा है इनका. Interesting भाई, interesting choice of words.
एंड मोहम्मद यारोव अभी भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ निहाल सरीन की फोटो खींची जा रही है, सब कोई फोटो क्लिक कर रहा है भाई। निहाल सरीन ने N95 मास्क पहना है, इंटरेस्टिंग, ही इज लाइक सुपर कॉशियस। यहाँ पे रौनक एंड प्रग को भी आप लोग देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं भाई। अब रौनक जिन्होंने कल क्या ब्रिलियंसी खेली थी भाई, मजा ही आ गया था देख के। 94 यस 94 एंड यहाँ पे प्रग भी बैठे हुए हैं जिनके सामने कैमरा मैन आ गए हैं भाई। ओके इंटरेस्टिंग। कैमरा की सेटिंग में पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ दिख रहा है मुझे उसमें। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। Level of discipline he's showing. Yeah, man. I think the thing is, you can get carried away easily, right? Matlab, you start defeating everybody, and then suddenly, like your mindset hai na, it's a bit different. Like at least I personally can't relate to it. It's definitely different. I think he's definitely made up of different material. So we've seen many, like I think Gukesh is trending on Twitter right now, and it's like he deserves it totally. And today, if he wins, I think, as Gautam just put it yesterday, he said on Twitter ki if you know Martians had a sort of missile launched towards Earth and we had one chess match to defend, he would probably put up Gukesh there. Wow. And you know, if for example Gukesh wins today, he would have knocked out 2 players from world top 10 most likely, and that would mean ki bhai ab koi rok nahi sakta Gukesh ko. चैट में लिख रहे हैं भाई निहाल परफॉर्मेंस हैज बीन सो अंडररेटेड आई बोट टू। आई डोंट थिंक इट वाज अंडररेटेड, ही प्लेड रियली वेल भाई। जब भी उनको जरूरत था टीम के लिए डिसीजन लिया उन्होंने। एंड द बेस्ट थिंग इज ही इज लिटरली रैंक 2 इन द बोर्ड प्राइजेस। सो एक ही बंदा आगे उनसे, बस एक बंदा उनसे आगे है भाई। और आज लगता है वो भी बंदा पीछे हो जाएगा, क्योंकि आज निहाल विल बी स्ट्राइकिंग आई फील। तानिया की ओपोनेंट कितनी खुश है है ना, शी इज सो नाइस स्माइल। एंड तानिया इज लाइक आई एम गोइंग टू वाइप हर हैप्पीनेस। गेम के बाद देख गेम के बाद कितना हंस गया। उनकी टीम काफी cheerful लग रही है, but you know that's a good sign for the opponent team usually. If you're cheerful, you're relaxed, I think that helps you play your best chess. I think tense होने से sometimes doesn't help. That's true. वो तो मैं मजे ले रहा हूँ बस भाई। हाँ, of course. मार्शन तो आप टिक्कू जी, अरे बस बताना नहीं है यार, ऐसा सीक्रेट्स है। जे चैट में एक बार देख ले कौन कौन है भाई हमारे साथ जुड़े भाई। अब तो गुकेश के मास्क का ऑक्शन होगा और मैच के बाद मैग्नस मोहित लिख रहे हो कौन होगा जो उस मास्क से भाई। नहीं आई डोंट थिंक सो, ही मस्ट बी चेंजिंग मास्क्स मोस्ट लाइकली। मार्शियन तो आप हो टिक्कू जी, लिख रहे हो उधर भाई। She is the one who's 8 out of 8. She's not the one who's 8 out of 8 yaar. I think the opponent of Vaishali is the one who's 8 out of 8. You can see her on the bottom left. And yeah, I mean, we'll have to. She's first time we've seen her on screen, right? So we'll see how she plays against Vaishali. एक बार क्या है, एक बंदा imagine Vishi, Gukesh, Hari, Vidit and Prag playing in a team. Let me imagine. Imagination done. Thank you so much, Shantanu. We were actually discussing today itself कि in the next Olympiad, when it will not be in India, they will be playing only. Like, there'll be only one Indian team playing, right? So imagine the fight already. Like you know, you have. Vishi will not play, I assume, but even then, like Vidit, Hari, Gukesh, Nihal, Prag, Arjun, I mean, oof! And like the match has begun. Oh, crazy! Handshake हो चुका है भाई. Can we just switch to the Gukesh का वो? I want to see the handshake. Yes. Oh, Mamedyarov wearing a T-shirt. Oh, he's all and chill. Let's go. Is it the same T-shirt chat जो उन्होंने Vishi के साथ पहनी थी जब Vishi गलती से डिजाइन कर दिया था? Can somebody check that shirt? वही shirt है क्या? Maybe he's like Indians के खिलाफ lucky shirt है, यही पहनता हूँ. He's wearing a lucky shirt. I'm wearing the lucky hoodie. We will find out who is luckier. And Gukesh wearing the lucky mask. I guess. Oh, Nihal कुछ हो रहा है क्या? Why are they? I think there's some issue with the Nihal clock apparently. Yeah, now it started. Yeah, now it started and Nihal over there. Ronak searching for his opponent. Ronak also chilling. I think Ronak के opponent ने knight d4 देख लिया गलती से. अभी भी देखा उन्होंने आज सुबह उठ के. आपने किस मूव पे वोट किया है गुकेश के लिए? Oh, which move could he play? I think he'll play d4, yeah? He will play e4, I think. d4. Chat e4 और d4. Come on, जल्दी हो. वाइट से खेले हुए देखा ही नहीं गुकेश को टूर्नामेंट में, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। आई थिंक विल गो d4। मोस्ट वाली d4। वंश राणा हम आएंगे 4 बजे आएंगे हम। और हाथ रख दिया है e4 की d4, वो e4 के नहीं d4 नहीं d4 खेल दिया है। इसके साथ मुझे लाइफ टाइम मेंबरशिप चेस.com पे, अच्छा वो ऑलरेडी मिली हुई है। माय बैड। अंडररेटेड का मतलब ये नहीं होता कि he played bad. No, I know that. अंडररेटेड का मतलब क्या होता है? And I think he is appreciated by everyone. By for example, कल जब उन्होंने वो ले लिया, he took a draw for the team and everyone appreciated that. I think you are choose करके आप सुन रहे हो commentary. French defense खेला है. Very very interesting choice है Nihal.
And we have one d4 by Prag as well. We have Ronak is playing. Okay, e4 e5 over there. We'll see Italian hoga, Spanish ho kya hoga. Can we go to Gukesh's cam? I think अभी कुछ blackout हो गया था वो. Camera इतनी rating handle नहीं कर पा रहा है. How is Mamedyarov playing in this tournament? We have already answered this because his country wants him. So खेल रहे वो लोग. Yep. He's playing well. I think Karuna is not in form. Mamedyarov की performance rating is like 2820. So he's playing better than his rating. So इसको हराना आसान नहीं होगा. Although Gukesh has the white pieces now, so he can also press in the opening. Like yesterday, he had a worse position against Caruana, right? And then he came back. So today he will not have that in the initial position. So we have d4, d5 already. Will he go for the London? Oh my God, will he? No, he will not go for the London. And Gukesh के opponent ही बदल गई हैं. ये कोई ladies आ गई हैं. She's our photographer, Maria Emelianova. Oh yeah, wow. She's Maria chess.com photographer. But I think एक से मुझे लगा, I think Mamedyarov turned into a fan, yeah. Instead of playing, started taking photos. पीछे निहाल को भी देख सकते हैं. उनके opponent, looks a bit tense, I think. Although Mamedyarov is not at the seat, that's very surprising, right? एक move खेल के ही उठना, not very common. Washroom जाना होगा भाई, क्या पता भाई. ये तो है भाई. How is performance rating calculated? Manish Bhatta का question, can you answer that भाई? हाँ, तो basically यार, imagine करो आपकी rating है ही नहीं, ठीक है? आप पहला टूर्नामेंट खेल रहे हो, आपने 9 राउंड खेले. रेटिंग परफॉर्मेंस बेसिकली है कि अगर आप उसी टूर्नामेंट की रेटिंग आती है आपकी, तो उसको हम रेटिंग परफॉर्मेंस बोलते हैं. बेसिकली यू कैलकुलेट द एवरेज रेटिंग ऑफ ऑल योर ओपोनेंट्स. लेट्स से आपकी रेटिंग है ओपोनेंट्स की 2100 एवरेज आई, एंड देन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पॉइंट्स यू स्कोर बेस्ड ऑन सर्टेन टेबल्स, यू गेट अ रेटिंग ऑफ योर एवरेज रेटिंग प्लस या माइनस समथिंग. लेट्स से 2100 एवरेज है, आपने 9 में से 6 पॉइंट मार लिए, इट्स मोर देन 50%. सो क्लियरली योर एवरेज इज मोर देन 50%, राइट? सो यू गेट अ रेटिंग ऑफ लेट्स से 2300 और व्हाटएवर इट इज. एंड वो एक ही टूर्नामेंट में अगर देखी जाए तो उसको रेटिंग परफॉर्मेंस बोलते हैं और कुछ नहीं. ओ क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड. वाओ, who played Queen? Oh, Mamedyarov played gambit accepted भाई, जो मैं भी खेलता बहुत ज्यादा हूं भाई. Already a surprise, chat. Not the opening I would have expected, because when you play a guy who's chat, there's one thing. कई बार टूर्नामेंट में ऐसा होता है, you're playing somebody who's in incredible form, ठीक है, who's just destroying everyone. I was playing a tournament once. मेरे को last round में एक, I think GM को हराना था with the black pieces, and I needed to win to get the IM now, ठीक है? And I was in great shape, but instead of playing normal chess, like ये बंदा कितना खतरनाक खेल रहा है, let me try something crazy. मैंने कुछ ऐसी घटिया लाइन खेली, I lost in 15 moves. So of course this is not as bad, but I would say कि to be honest, हाँ, मतलब पर मेरे को लगता है कि Queen's Gambit Accepted is also playable यार. मैंने बहुत खेला है. It's playable. मतलब मैंने बैंक को ही खेला था, it's also playable. But I would say कि मतलब you might put more pressure on yourself to play something sideline ताकि he's not prepared. But the main thing is he's not just well prepared. He's just playing incredible chess. Well, yesterday he was not well prepared, but he destroyed Caruana. So yeah, I think sometimes that can backfire. Of course, Mamedyarov के level पे मुश्किल है, but let's see. Let's see भाई. Chat, तुमने कभी खेला है क्या? I just wanted to know, कभी खेला Queen's Gambit Accepted? Because I have everyone, जिसको भी मैंने देखा सब declined ही खेलते हैं भाई. I have never seen people playing it accepted. मैं तो खेल लेता हूँ accepted. मेरे को तो मजा आता है. नहीं यार, फ्री की चीज कोई दे, there's nothing called as free lunch. तो भाई मैं ऐसे कैपाब्लांका का फैन हूँ ना, तो कैपाब्लांका ने कहा था कि the best way to refute a gambit is to accept it. तो मैं accept कर लेता हूँ भाई. हाँ, but this is not a real gambit, no difference है भाई. This is not a real gambit भाई. ये कौन तुम, and he plays e4. भाई साहिल भाई, e4 के बाद आप वो ट्रैप जानते हो Queen's Gambit Accepted में? अगर जानते हो तो दिखा दो. कौन सा वाला निरंजन भाई? अरे वो जिसमें रुक मरता है. वेरी गुड. कौन सी बात कर रहे हो? But I actually don't know, but because he will not try to save the c4 pawn यार. By the way, he plays e5 now, and यहाँ पे knight f3 I think is the best move. You basically don't take on e5. You don't want black to basically take on d1. Very important. So let's see how Gukesh plays this. And e4 is the most ambitious line, by the way. It is because you take the center immediately. You're not trying to play e3 and mildly तुम खेलोगे फिर. You go e4, take the center, and now you play knight f3. Played already on the board. Vishy is deputy president हो गया क्या?
Yes, yes, he has won the elections. It seems like कुछ तो news आ रही है, लोग भी कह रहे हैं. Really? तो I am hoping Oh, wow. नहीं कहूँगे. मेरे को officially तो नहीं पता, but I have heard it from the chat only. So congratulations if that has happened, bhai. And Niranjan bhai, if you can confirm one, that would be great. News is confirmed, guys. Vishy Anand is the deputy president of FIDE. So congratulations to all the Indians, bhai. Yes. अब हम लोग FIDE के rules भी change कर सकते हैं. हाँ. चेस को चतुरंगा से रिप्लेस कर देंगे भाई अब. That's the deal. Now we are the BCCI of chess. Exactly. Now we can hear other countries complain, yeah, कि यार हमारे खिलाफ से rules bend हो रहे हैं. Anyways. At least that preparation है Gukesh का. I don't think so. I think at least ये होगा कि now we'll have at least one big event every year in India. I think मुझे लग रहा है. Every single year we'll have, and after this Olympiad especially, I think we'll have one big event in India every single year. कभी होता ही नहीं था actually. It was never happening in India. टाटा स्टील तो है ही एक. I think उसके बिना. टाटा स्टील is there. हाँ, उसके अलावा और होगा I think. होना भी चाहिए यार. टाटा स्टील के अलावा तो कुछ भी नहीं देखा मैंने. मेरे को देखने को भी कुछ नहीं मिला. मैं 4-5 साल से फॉलो कर रहा और सिर्फ टाटा स्टील के टाइम हम लोग देखते थे. वो भी आने वाला है नवंबर में. वो भी आने वाला है. That would be crazy. चैट यूजुअली क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में मुझे बैकएंड से हमारे पूरी 50 लोगों की टीम लगी हुई है स्टैट्स में. सो मुझे फीडबैक आ रहा है कि मतलब गुकेश really does not play e4 too often after this queen's games. He plays knight f3 sometimes. So interesting fact. And the fact that if Mamedyarov is also surprised, the fact that he can be surprised is a good thing. Although he's playing very fast for now, bishop b4 check खेल दिया है. I do feel Gukesh is definitely the favorite here. What do you think, Bees bhai? क्या लग रहा है? मेरे को तो लग रहा है I think this will backfire on Mamedyarov because I think वो ऐसे उसको वो करने के लिए खेल रहे हैं कि I will just put him off कि कुछ अलग ही खेल दो. हाँ, मुझे भी वही लग रहा है. And I think Gukesh but the thing is कि उसका अभी तो कैलकुलेशन बहुत क्रेजी लेवल पे चल रहा है ना भाई. वो ओपनिंग में तो कभी भी वैसा नहीं था कि बहुत बेटर रहता है. हमेशा थोड़ा सा हल्का वर्स रहता है and then he just picks it up. So I'm hoping that he will do great. Yeah. Even I'm hoping. और चैट में क्या चल रहा है भाई? फॉर एमपी बोकारो एमपी क्या है भाई? ये क्या है भाई? बीस भाई कैमरा ऑफ करके ऑन कर दो यार, मजा आ जाएगा. अच्छा 1 सेकंड भाई कर देते हैं भाई. B starts Bokaro MP. Then we can have Bokaro International Open also. Soon more tournaments will be sponsored just like Tata Steel with big prize money that will attract GMs from around the world. Pralay Ajin करे. That's true भाई. That's true. We are hoping. सौरभ भाई कह रहे हैं चलो अब तो चेस में भी IPL होगा यार. हरियाणा की टीम होगी क्या उसमें? क्या इस नन्ही सी जान को भी खेलने को मिलेगा क्या? चेस का IPL is I think pending. बहुत टाइम से planned है. Let's see क्या होता है भाई. Yes, we can go to the other games. Let's go to the Nihal game. Yeah. Oh, it's progressed quite a bit. Can we have a look from the top? Oh भाई इतना कुछ हो गया. ये क्या हो गया भाई? 10 मूव हो चुके ऑलरेडी भाई. E4 से ओपन किया है भाई ओपोनेंट ने. E4 पे E6. Is he going for the French defense? D4, D5, knight to D2, C5. नाइट जी टू F3. बिल्कुल ही तन्मय भट्ट वर्सेस वो उनका मैच चल रहा है. कौन है वो? मानिक महाना. तन्मय भट्ट वर्सेस मानिक महाना. C capture on D4, knight capture on D4, knight to C6, bishop to B5, pinning the knight, unpinning by playing bishop D7, knight capture on C6, B capture on C6, bishop goes back to D3, bishop to D6, queen to E2 आ गया अब, E5, C4 and D4 is played by and F4. F4 यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मूव है. Apparently this was not the best move, but कोई नया आइडिया लग रहा है because आप देखो टाइम देखो उसके पास 1 घंटा 34 मिनट. तो रॉफ जी कोई नया आइडिया तैयार करके आए हैं. एंड यहाँ पे निहाल वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज़ क्या नया आइडिया? मैं इधर चेक देके उठा लेगा. D3 आएगा चेक देने. बेसिकली E4 is a big mistake here because if you take on F4 then E5 gives white a clear edge already. It's plus 1.3 on engines and even optically the knight coming to E4, white castling, he will move the knight maybe to F3 also and pick up D4, F4 सब कुछ weak है. So EF4 नहीं मारना है.
यहाँ पे knight f6 is possible from black. Or one crazy suggestion is chat queen h4 check, g3 and then queen to e7 or even h3 just to put the queen somewhere is one of the suggestions of the Indian. Now this is not clear if he will play it, very difficult. So I would personally prefer knight f6. मैं तो कह रहा हूँ उसको मारने दो, उसके बाद फिर हम ये पुश करके ये कंसोलिडेट करने। हाँ so basically वो e5 white को allow नहीं करना है किसी भी हालत में, so that's very important here. So Nihal is calculating, he's definitely not in prep, chat, definitely not in prep, so he will have to figure it out over the board and hopefully he can. एंड जो भी हमारे साथ जुड़े भाई सबको एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दे भाई, और एक बार चैट में हाय बोल दे यार हम लोग को, कौन कौन है हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार हाय प्लीज भाई। कुछ टाइम हरियाणवी में कमेंट्री को, मैं कश्मीरी हूँ यार एक्चुअली, हरियाणवी आती नहीं है भाई। यस ही इज अ कश्मीरी गाइस, उसको कश्मीरी भी नहीं आती वैसे, बट आती है लेकिन समय को बताओ तो मूड तब भी नहीं खेल पाता। वो डिफरेंस है। एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पता है भाई, पता है। टाटा स्टील इंडिया किधर होगा यार? आई थिंक वो कोलकाता में होता है जहां तक आई नो। ओह सो चैट बेसिकली यहाँ पे जो क्वीन ई टू मूव है ये पहले खेली जा चुकी है निहाल के गेम में, e5 भी आ चुका है, बट यहाँ पे बस c4 नई मूव है वाइट निहाल के लिए। ही हैज फेस्ड ed5 एंड अदर मूव्स बट c4 इज अ न्यू वन, सो क्लियरली नया आइडिया निहाल के लिए एंड ओपोनेंट डीप प्रिपरेशन में। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल भाई। दीपा जी हमारे साथ जुड़ी है, संस्कार, राहुल गैकवाड, हैप्पी, अमन शर्मा, सिड जी, परमेश ए जी, मिल्ट, तुषार, अभिनव, धवल, रॉबिन सिंह, रूट, वेदांग, सिड जी, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। एंड भाई लिखते हैं और क्या, नेक्स्ट गेम पे चले थोड़ा सा, क्रिटिकल मिशन, डू यू वांट टू वॉच इट? नहीं, आई थिंक वी हैव टू थिंक फॉर अ लॉन्ग व्हाइल हियर, दैट्स द थिंग। ओके हैप्पी फ्रेंडशिप डे पिछले महीने नहीं होता था? वो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, ये इंडियन वाला वर्जन। अच्छा समझ रहा हूँ चैट। फ्रेंडशिप, ओके, एनीवेज लेट्स मूव ऑन। ये क्या भाई, लेट्स गो भाई। प्रज्ञानंद विद द व्हाइट पीसेस ओपन विद d4, नाइट f6, c4, अभी तक तो ये ओपनिंग मेरे को भी आ गई खेलनी। e6, नाइट f3, b6, g3, बिशप टू a6, b3, बिशप b4 चेक, बिशप टू d2, bishop capture on d2, queen capture on d2, c6, bishop to g2 and d5 is played on the board. एक बिशप पेयर तो चलो भाई चला गया, पहले टाटा बाय बाय हो गया बिशप पेयर का दोनों साइड का। एंड आगे देखते हैं गेम में क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोजीशन साइड को? हाँ सही लग रही है पोजीशन। आई थिंक यहाँ पे क्लियरली व्हाइट इज एब्सोल्युटली फाइन, कैटलान बिशप f g2 पे, एंड ये जो टेंशन है डी पॉन में, दैट मींस कि ये पॉन d5 पे हमेशा रहने के चांसेस कम है। At some point he might just take on c4 and bishop खुल जाएगा उस मोमेंट में। So I would say कि Prag looking absolutely fine and I would give him good chances to push here, clearly slightly better I would say. Awesome. Prag कैमरा नहीं, Prag का कैमरा है bro, we can see it over there, थोड़ा सा ऑफ है कैमरा, मतलब ऐसा थोड़ा पीछे है basically I think। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 नेदरलैंड्स में है इस बार, ऐसा कह रहा है भाई कोई। भाई वो नेदरलैंड्स में हर साल होता है, वो क्लासिकल वाला है। एक टाटा स्टील इंडिया होता है जो ऑलरेडी कंफर्म्ड है, आई कैन इवन लेट यू नो डेट्स इफ यू वांट टू। हां वो तो हमेशा ही होता है ना, हर साल होता है। नहीं ये सब कुछ एक इसका पार्ट है ना, जीसीटी का, ग्रैंड चेस टूर का, ऐसा कुछ है ना। अब ग्रैंड चेस टूर क्या होता है भाई, उसमें मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट है, और पता है बहुत सारे टूर्नामेंट में जो विनर होता है वही उनको अलाउड होता है खेलना, ऐसा कुछ तो मैंने सुना था। हाँ तो बेसिकली जो टॉप कुछ रैंकिंग में आते हैं उनको नेक्स्ट टाइम इनवाइट मिलता है, और फिर बाकी लोग दे काइंड ऑफ चूज बेस्ड ऑन कि who's kind of playing well in that moment, वो चीज है। वाओ। एंड ये दिमित्री का क्यों गेम है यहाँ पे निरंजन भाई? आई डोंट नो ना, तभी तो आपने इसका गेम क्यों रखा है इधर? मेरा कुछ इंपॉर्टेंट गेम है, हमको पता नहीं है भाई, पूछ लिए भाई। चलो भाई रौनक की गेम, ऑल इंपॉर्टेंट गेम, लेट्स गो। 18 मूव ऑलरेडी प्लेड। ओ भाई साहब, कैन यू हैव अ लुक? इसका ओपोनेंट लेट तभी आया भाई, ओपनिंग बुक चार्ट रहे थे वो। कैन यू हैव अ लुक? e4, e5, knight f3, knight c6,
bishop to b5, knight to f6, castles, knight capture on Yo, e4, rook captures on, sorry, rook to e1, knight to d6, knight capture on e5, bishop to e7, bishop to f1, knight capture on e5, rook capture on e5, castles, knight to c3, bishop to f6, rook to e1 back, rook to e8, challenging the knight. Rook, knight to d5, rook capture on e1, queen capture on e1, b6, knight capture on f6 with check, queen capture on f6, d3, bishop b7, queen to e3. भाई सारे मूव्स हो गए भाई, इन्होंने तो एकदम परफेक्ट. c5, queen to f4, queen capture on f4, bishop capture on f4, knight to f5 and a4. I think क्या करना चाहते हैं इनका ओपोनेंट? चाहते हैं जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करके घर जाना. हाँ, I think किसी का इंतजार कर रहे होंगे, but honestly speaking, I think the game does seem to be, I think they look like both are in deep prep. And when you're in deep prep, usually you can play very, very fast. And if you look at the position as of now, दोनों के बाद 1.5 घंटे. हाँ, so I think White wants to play a5 at the correct moment, and एक rook exchange हो चुका है already. It reminds me of the Hare Krishna endgame, right? मतलब two bishop against bishop and knight. So you always have to be careful as black in these structures. Always. जितने pawn exchange होंगे ना, एक बड़ा contrary होता है जाट. When you're trying to defend a worse position, rule होता है कि भाई जितना exchange करना है उतना better, right? लेकिन जितना आप exchange करते हो उतना दो बिशप खुलने लगते हैं. उतना they start coming out of the closet. So I think, when you're playing with the bishop and knight against two bishops, the easiest solution is to exchange a bishop. As simple as that. इतना आसान काम हो जाता है ना उसके बाद. So I would say it's not easy yet, of course. Bishop on f1 बिल्कुल out of reach है. उनका connectivity कम है. So I would say कि Ronak should defend. For now, clearly White is slightly better, I would say, but the bishop on b7 for now looks very strong, right? It's a long time. पता है ऐसे 1-1.5 साल पहले ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं जितने भी गेम देखता था ना मैग्नस के, जो भी एंड गेम में जाते थे, on purpose he will always have a knight against a bishop and he will always win. Magnus. Okay. And he will always win. I don't know, somehow he loved the knights or whatever, but he will say कि नहीं bishop तो bishop ही होता है, ठीक है, but then he will play with the knight always the end game on purpose, ठीक है. वो चाहे तो रख सकता है अपने पास bishop, but नहीं, वो knight रखता है. I think it's knight more और because bishop में वो जीतता है. More because people are playing for a draw against him, no? So he is the one who has to create an imbalance. I think that might be the reason. जैसे निम्जो में भी क्या करते हैं, bishop भी मार देते हैं ना, because we know कि हम bishop pair दे रहे हैं, but we're getting something in return. So ऐसा कुछ है. By the way, Tata Steel की dates, I think chat, it's not clear yet, but no, I think it's already there. Rough पता चुका है. It's November 29th to December 4th, by the way. Tata Steel India की dates. एक बार बैकएंड में आप चेक करें भाई, क्योंकि ये जो गेम चल रही है, it is exactly similar to Caruana versus Wesley So. Oh, क्या बात कर रहे हो? Do check out the backend. You will understand more than me. Sahil Tickoo. यो अमरीश भाई, यो धवल भाई, कैसे यार? चैट कैसे हो आज? क्या फीलिंग आ रही है यार? यो सफन भाई कैसे हो? सौरभ कैसे हो भाई? क्या लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है कि आज इंडिया क्या लगा इंडिया 2 का? बहुत इंपॉर्टेंट डे यार. आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या रिजल्ट रहेगा. आई थिंक दे आर इन ग्रेट फॉर्म, बट ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू डे. यू हैव टू प्रूव इट अगेन, या? Yes, correct. For sure. So, what shall we do now, Bees bhai? Shall we go to team A or shall we? एक बार गुकेश का फिर से देख लेते हैं कि पोजीशन क्या है, and then we'll go to the team A. यार भाई, इंडिविजुअल बोर्ड्स पे इंडिया 2 हाई थी स्पेन से. व्हाई दे आर प्लेइंग? वही ओल्ड प्लेस पे क्यों नहीं? आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बीस भाई क्या है मतलब, समझ नहीं आया मुझे. एक सेकंड, आई कांट अंडरस्टैंड. मे बी हम लोग जब इंडिया ए का गेम देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि कुछ तो चेंजेस हुए होंगे. मे बी कुछ भी हो, गुकेश तो हरा देगा. अरे वही तो उम्मीद है यार. आई एम होपिंग फॉर बिशप d2, b captures, queen capture on d2, queen capture on d4. ये हो चुका है. नाउ offering a queen exchange where if there is a queen exchange. The thing is, queen d4 is what you play when you're happy with the draw. So I think, like usually in most cases, I think queen d4 is a good move, by the way. Let me point out. But thing is, when you play knight takes d4 here, no, it's usually more ambitious in most cases because you maintain the queens on the board. Queen d4 ke baad, I think it's a sign Gukesh does not mind a draw. I think, and that is not so bad, to be honest, because Gukesh clearly outranked hai board 1 pe. A draw would not be so bad. But queen d4, very interesting choice. And now
भाई ऐसा लग रहा है मेरे को डेजा वू हो रहा है भाई, जैसे हम ये बात पहले कर चुके हैं and इस गेम में फिर क्वीन एक्सचेंज हो गई, फिर गुकेश जीत गया। जीत गया, हाँ पॉसिबल तो है भाई। डेजा वू क्यों हो रहा है यार मेरे को चैट हाँ। में पहले ये सुन रखा है क्या? हाँ बहुत बार सुन रखा है भाई, मैं खुद ही बोला है तो। अच्छा अच्छा, ओके भाई लेट्स गो टू इंडिया ए, देखते हैं भाई वहां पे क्या चल रहा है भाई। कैन वी क्विकली गो निरंजन भाई टू द विदित सॉरी हरीश गेम फर्स्ट? And Hari looking to come back today, huh? One important game for Hari. He needs to strike. Karuna Wesley की exact same position. Now I saw, nice. Let's go chat. Oh, काफी interesting position है. Let's go to game 1. Gukesh better depth 100. अमन भाई ऐसा कौन सा इंजन उठा लिया आपने भाई? भाई मेरा माउस वापस आ गया। कहाँ गया था माउस यार? पता नहीं, कहीं कहीं चला जाता है भाई बीच बीच में भाई। लेट्स गो भाई, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हरि कृष्णा गेम भाई। हरि कृष्णा ने ओपन किया है D4 से D5, C4, E6, knight to C3, A6, C captures D5, E captures bishop to F4, knight F6, E3, C5, knight F3, knight F3 दो बार कैसे बोल दिया मैंने फिर? knight F6 था वो, ओके। knight to C6, bishop to E2, C4, castles, bishop to B4, bishop to B5, and this is the current position भाई। What do you think, Sahil Tickoo? हाँ, so ये जो opening है ना, so basically this is considered to be a bit risky usually because white can always take on C5 before black has played C4 and give you an isolated pawn. So black का plan है to basically even take on C3 if need to play B5 and start pushing the queen side pawns बस, मतलब वहाँ pass pawn के लिए खेलने का। The problem however is कि now I have a majority on the king side and if I manage to play through with a move like I don't know what, maybe B3 or even E4 someday, I think ये center or king side में white can get an edge. So it's a very ambitious way of black to play, but also a bit risky. So and Hari Krishna is also ahead on time, so that tells me कि Hari Krishna is prepared. So an opponent पे उनके शक्ल पे मुझे confidence की एक बूंद भी नहीं दिख रही, तो I would say Hari Krishna looking decent enough. सब D4 खेल रहे हैं आज। D4 तो इनकी फेवरेट लगती है भाई, कोई E4 नहीं खेलता है भाई आजकल। D4 is the future chat. Boy Fischer was wrong. I said it. E4 is a perfect opening भाई। But anyways भाई let's go भाई। E4 आ गया on the board भाई। E4 खेला है भाई विदित का ओपोनेंट ने। विदित क्या ओपोनेंट है भाई? फियर अलेक्जेंडर। ये क्या नाम है भाई? अलेक्जेंडर से फियर करो, सीधे बोल रहा है भाई ये। E4, E5, knight F3, knight to C6, bishop to B4, knight F6, D3, bishop to C5, castles, D6, C3, A5, rook to E1 and bishop to A7 dropping back. And अभी तक castle नहीं किया है विदित ने, but anyways he can castle whenever he wants to, it seems like. And you know VD के लिए chat बहुत important game है I think बहुत important game है because by the way VD has castled I think. Bishop B3 Bishop B3 played, castled and H3, but I was hoping in this position ना कि opponent का ऐसे विदित का castling खराब करने के लिए ये move खेल लेता and then we can just manually castle. नहीं भाई, वो पीस क्यों देगा भाई कि वीडी मैनुअली कैशिंग करे? इतना कोऑपरेटिव तो ये आजकल गर्लफ्रेंड भी नहीं होती, तो ओपोनेंट तो बहुत कम चांस है। तो ऑल आई वुड से इज कि दिस पोजीशन वीडी, यू नो, वीडी हैज प्लेड ऑल 2600 प्लेयर्स चैट and today he's finally playing a 2500 player. Fear is very strong by the way, attacking player भी है काफी, लेकिन VD should be clear favorite regardless of colors, black, white, pink, blue, whatever the piece color. ये क्या भाई? So I think, and this is the time, yeah, last 3 rounds, if VD can go on a winning spree here, he will literally drag the team with him. And he'll be the star. Last 3 rounds से अच्छा है कि पहले अभी इस गेम का सोच ले, इसमें चले जाए विनिंग में। हाँ मतलब of course 3 rounds ये उसका part and parcel है. He has to strike today and India really needs him. They really need him to strike now. Okay, let's go to the next game. It is Arjun Erigesi versus Krikor Sehwag. Sehwag जी खेल रहे हैं भाई। सहवाग खेल रहा है क्या? अच्छा। Yes भाई। अच्छा, and Arjun has opened with the English opening C4 and निरंजन भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। Oh, Krikor also work for Chess.com Portugal, तो निरंजन भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं भाई। देशद्रोही निरंजन। निरंजन भाई
ये सब अब मैनिपुलेशन नहीं चलेगा, चेस को सपोर्ट करते वाला। यार, C4 chat- C5 नाइट F3। हाँ, आज मुझे बहुत सारे रैंडम स्पैम मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे, किसने नंबर लीक किया रे? क्या चक्कर है भाई? किसने नंबर लीक कर दिया तेरा? पता नहीं भाई, आज 4-5 आ चुके हैं भाई सुबह से ही। नहीं, स्पैम, पूरे स्पैम भाई, पता नहीं किसने लीक कर दिया भाई। कौन है दुश्मन भाई, कौन है, बता दो यार। एनीवेज, प्रखर ही कर सकता है भाई। कहाँ से आ गया भाई? Anyways, let's go. C4 C5 Hello knight everyone, F3 we knight are C6 with- D4 C capture on D4 knight capture on D4 knight to F6 knight to C3 E6 G3 queen to B6 knight BD7 knight to E5 bishop to F4 knight F to G4 E3 A6 queen to A4, and this is a position on the board. Yeah, so to be honest, I really don't know much about this position in terms of theory. But इंजन देख ले भाई, कोई बात नहीं। Indian, yeah, let me open the game. It does look very double-edged. I think सारे piece, ऐसे hanging है. Like, I can play h3 and the knight on e5 will hang, the knight on b5 is hanging, but the rook on a8 is hanging. If the knight on e5 moves, knight c7 check aa raha hai. So it's all hanging by a thread basically. And until I think a6, it was all normal. But queen a4 was apparently not the best move. So it's kind of I think, I don't know if it's a new idea or not. Maybe Nijma can shed more. No, it's not a new idea, because there are games on chess.com. Like there are, I think, around 11 games after queen a4. But definitely not a popular idea, I think. I think I would say it's the second best move. h3 is the most commonly played. So I would say maybe it's something which is not well known. And Arjun is trying to basically use it in his prep. But to be honest, looking at his clock, it doesn't inspire too much confidence. What do you think, this guy? भाई मेरे को तो ये कुछ ओपनिंग ही नहीं समझ में आया भाई, और ये पोजीशन भी अजीब सा ही है भाई। यहाँ पे पॉन मार नहीं सकते हैं, नाइट भी हटाने का भी दिक्कत है, ये पॉन अपना मर रहा है, पर इस पॉन को भी सीधे नहीं मार सकते हैं क्योंकि फिर अटक भी सकता है यहाँ पे। मतलब बहुत ही वैसे आई डोंट नो, मेरे को समझ में नहीं, टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। By the way, Caruana चैट में क्या चल रहा? हाउ इज द जोश? हाय सर, Caruana blundered, is he? Yeah, he's Okay, slightly worse. He's slightly worse. We'll check it out, guys. We'll check it out. And let's go to the last game from Board A. And that is Sasikiran versus Andre. Andre? नहीं आना यार। अच्छा, ओ। ये क्या है? And D4, knight F6, C4, E6, knight to C3, bishop to B4, E3, castles, bishop to D3, D5, knight F3, C5, castles, D capture on C4, bishop capture on C4, knight BD7, A3, bishop capture on C3, B capture on C3, B6, and this is a position by. So similar, yeah. He took on C3 again. So clearly, we're giving like the bishop pair, but now he's fully developed. He'll put the bishop on the long diagonal, then play rook C8, and then maintain this tension. He wants white to capture on C5, and then take on C5 with the knight, ताकि ये C3 pawn weak रहे. और white भी कहेगा तू मार भाई, मैं क्यों मारूं? So this is very, very common, yeah. Bishop देना knight के लिए usually because they want to create an imbalance. And for now, it's a popular position. I can see many games on this position. And Sasikiran, well, opponent looks well prepared, I guess, Andreji. But for now, he's thinking. Yeah, he's taken a deep think. Chat में opening में ही चल रही है maximum games. So maybe we can switch. For now, nobody has a clear edge, I think. Yep. Let's check out the women's A section, क्योंकि उनका भी गोल्ड का चांस है, and they are playing against Georgia. Can we quickly have a look at the final positions of the board? By the way, chat. By the way, पता है एक उल्टी हुई तितली ने मुझे बोला है कि Arjun is still in prep. Crazy. What? Arjun is still in prep, guys. Arjun is still in prep. Crazy prep by Arjun. And we have the women's boards right now. Already chat. it's a draw. अच्छा नहीं है सर. अरे ये क्या है भाई? Already it's a draw. अरे भाई. India A versus Georgia है, guys. Georgia. Can you believe Georgia एक लड़की का नाम भी हो सकता है और एक कंट्री का भी? Crazy नाम. चैट अपने बेटे का नाम फरीदाबाद रख देना यार आज के बाद. फरीदाबाद कौन रखेगा भाई? रख सकते हो. You can do it, chat. You can do it. Yes, let's go right to the Connery Humpy game, bhai. Let's quickly check out कि क्या चल रहा है यहाँ पे. What do you think about the position, Sahil Tickoo? Let me quickly open up the game. So I have the Humpy game right now. Humpy, right? Yes, Humpy Yeah, versus Alina.
Yeah, so I think c5 pawn to jayega, of course. Black will take with the queen or the knight, depending on the situation. And no side has the bishop pair. And we started this from the, I think, okay. So the queen's gambit, okay. So to be honest, usually the queen on a5 does not have a good impression on me, but because there is no dark square bishop, it's kind of perfectly fine. And yeah, I mean, Humpy's position looks okay. I think she will take on c5 and she will then, I think bishop c8 is the problem piece. Once she can develop that piece, she's absolutely fine. So a possible plan could be queen takes c5, b6, bishop b7. That's one of the plans I would keep in mind. But of course, white will play rook d1 at some point. So knight on d7 will also be attacked. So usko bhi rehna padega kabhi na kabhi. So, but yeah, the position looks very typical Queen's Gambit. Yeah, slight, tiny bit edge for white because it's fully developed. But for now, the position does seem to be fine for Humpy. I don't see any issues, clear issues at least. एक बंदा पूछ रहा है, according to you, which opening is fast and unstable or slow and stable? Fast and unstable. Any opening that Nihal Sarin is playing, I guess. I don't know, man. Which is fast and unstable? Kya hota hai? Or slow and stable. Slow and stable, to yaar, London system, man. Always the best. Fast and unstable, I will say chat play h4, h5, h6. First three moves, guys. वो पहले ही अच्छी स्किल देगा ना ब्लैक भाई h5 पे वाला नहीं करेगा तो h4 h5 तो खेल ही दो भाई एकदम ही अनस्टेबल भाई किसी को कुछ नहीं समझ है हो क्या रहा है उसके बाद a4 a5 भी खेल दो भाई हाँ fully unstable भाई so let's go to the game of Harika now and see how she's doing. Yes, Harika का क्वेश्चन ये है भाई इन्होंने खेला है क्वींस इंडियन डिफेंस पेट्रोजियन वेरिएशन. So after bishop a6 it's interesting. So can we go to move number 5? 5. Oh, 5. Queen to c2 यहाँ पे played by. हाँ, so queen c2 के बाद apparently bishop e7 यहाँ पे एक अच्छी move नहीं है. But why? The thing is you're not kind of attacking the center. For example, c5 could be a good move here, or even bishop b7 to basically prevent e4 from white. So bishop e7 has been played like on chess.com the 1500 game chat 1500 game है भाई इस position से उसमें सिर्फ 10 game में खेला गया है. And in contrast bishop b7 1200 almost 1200 game में खेला गया है. So I think bishop e7 not a good move, or at least not the best one. e4 played and now white has 3 pawns in the center and she controls the center completely, and black played d5 to battle it now. But now e5 played, and white will always have the edge in the center somehow. So maybe it's some idea by black and she's prepared. But her time does not tell me that. Like her time situation is like, okay, maybe I know it, maybe I don't know it. I'm not completely sure she's well prepared here. We'll see what she does. I think knight e4 is the obvious move. You want to put the knight on the active square. And then white can simply play bishop d3, attack the knight, prepare castling. I just don't see any issues. Like, I don't know why did she go for this. क्या कि knight e4 खेलना पड़ेगा उनको. हाँ, knight d7 is very passive. She plays knight d7. I predict a Harika win immediately. Immediately. हाँ, immediately मतलब I can predict a win for Harika, guaranteed. अच्छा. मतलब ये नहीं कि 2 में हार जाएगी उसकी opponent, but you get the point. नहीं, I didn't get the point, bhai. No, you will. So I think knight e4 will happen very soon. So can we go to board 3? Harika looking in decent position, chat. Yes, and guys. This is the all important game, chat. Board 3, Olivia against Vaishali, जिनके 8 by 8 है भाई. 8 by 8 हैं इनके. ये है गुकेश from Georgia. हाँ, exactly. And इनकी ऐसे बोलता था, she looks ऐसे calm शक्ल से, like ऐसे harmless. Harmless in the sense कि she's not like ऐसे aggressive behavior नहीं लग रहा. She's looking very calm. London system खेलेंगी. But suddenly भाई 8 by 8 है opponent का. It looks very very steady. And bishop b4 played. White plays knight c3 and now d5. And white ने immediately castle कर दिया है. So that will not be my choice of moves because it allows black to take on e4 now. And isolated pawn मिल जाएगा. Very interesting. भाई आपको पसंद है ऐसे pawn के साथ खेलना कि नहीं पसंद है? I don't mind, bhai. I don't even mind playing the double pawn, bhai. Why I don't even mind getting checkmated. सीधा बोल दो. हाँ, Poland chat. नहीं, because double pawn मेरे को ऐसा लगता है कि the defensive ability of a double pawn is very underestimated, bhai. So if you had 2 options, pawn f2 g2 या फिर pawn f2 f3, which one would you choose? f2 g2 of course. क्यों defense करो ना यार?
पर F2 F3 भी चलता है, like you can चलता है play it क्या? out. Yeah. अच्छा, I've played so many. मैं तो कभी-कभी मेरे को पता है कि मेरे पास हमेशा वो रहेगा, इस जो मैं जैसे खेलता हूँ जब सिसिलियन रो के लिए समय के अगेंस्ट, तो मेरे को मालूम है कि मेरे को डबल पॉन्स यहाँ पे आने वाले हैं, पर आई एम लाइक इट्स फाइन, आई विल प्ले इट आउट. I can see, yeah, मतलब Vaishali's game after castles, we don't have that many games from this position. So ए भैया बंदा लिख रहा है कि पोलैंड से मैच है, पोलैंड से मैच है क्या हम लोग का? हाँ, ये पोलैंड से, पोलैंड अरे से है. पोलैंड से यार, जॉर्जिया से नहीं है यार. पहले तो मैं जॉर्जिया बोले जा रहा हूँ, आप क्यों नहीं बता रहे हो मेरे को? अरे मैं अपना कुछ बोल रहा हूँ उस टाइम पे, मैं सुना ही नहीं. ये क्या है भाई यार? थैंक यू यार चैट, लव यू गाइस. हाँ, so I think ये मैच वैशाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. If Vaishali can strike today, she will stop the run of her opponent and also help the team win gold. So Vaishali के हाथ में, you know, it could be the decider match. This match could literally decide the medal India gets. And now we go to Tanya's game and see how she's doing. She's been great form in this tournament. She's leading the board prizes in her category on board 4. So let's see how she's doing. Okay, d4, knight f6, c4, e6, knight f3, d5, knight to c3, c5, c capture on d5, knight capture on d5, e4, knight capture on c3, bishop capture on c3, c capture on d4, c capture on d4, bishop to e4 check, and bishop to d2, bishop capture on d2, queen captures, castles, bishop to c4, knight to d7, castles, b6, rook c1, bishop to b7, bishop to d3, rook to c8, and this is the final position on the board currently. Yep. And this is very normal. Yeah, we've seen this multiple times. White takes the center. He will now, I think Hari Krishna game thi wahan where he had pushed h4 against Surya Sheikh Ganguly, if you remember, jahan pe draw ho gaya tha. So very similar without the pawn on h4, I think. However, the rook is on c1, so some trades possible, I think, on the c file. And jitna trades hoga, I think it's still kind of, I would say, equalish. The bishop on b7 putting pressure on the e4 pawn. So black will always have this tingling pressure ki you will never have that full liberty to attack. So I think looking balanced as of now. Tanya has the white pieces. I think she will definitely push. She plays queen e3, defending both the pawns with the queen. Very, very decent move, I think. However, not like a crazy attacking move, I guess. So for now, if I had to predict, I would go with the draw. But yeah, we'll see how it progresses. And भाई चैट में किसी ने लिखा है कि तानिया के टेबल पे सैनिटाइजर नहीं, क्या कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट आल्सो? साहिल, आई थिंक ओपोनेंट की साजिश है ये, वापस लाया जाए सैनिटाइजर. हटा दिया ओपोनेंट ने भाई. हे गिज़्मो गर्ल, कैसे हो? हटा दो भाई, जल्दी से वापस ले आओ. चीटिंग है ये. आई थिंक तानिया डिड नॉट रियलाइज दिस. या ओपोनेंट की साजिश है, तभी हर्षी थी गेम के स्टार्टिंग में वो हटा दिया मैंने. आई थिंक दैट माइट बी द केस. maybe that's why she was laughing at the start of the game. Yeah, so looking like the games are just शायद अभी opening part ही है, अभी किसी game में clarity नहीं है. I think Harika is the only one who's slightly better. Her opponent, I do not think she's prepared. I think this was not prepared. She kind of maybe played fast, and something happens. You play very fast and you forget the theory. Maybe that was this case. So we come back to team B from the open section. Chat, yes, let's go. And भाई यहाँ पे queen exchange हो चुकी है भाई, but the Indian doesn't like this move. It says it's a inaccuracy. Can we quickly go to Gukesh की बात कर रहे हो ना? हाँ भाई, गुकेश की बात कर रहे हो. Let's go to Gukesh game. इसके पास फीड भी रहता है भाई, इसको दिख भी रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ, फिर भी नहीं क्या आदमी है भाई. मुझे क्या दिखता है? तेरे को दिखता नहीं है क्या? अरे वीडियो निंजा खोला करना भाई. वो देख रहा हूँ, उसको तो कैमरा फुटेज है ना भाई अभी. अच्छा, कुछ भी मतलब भाई 20 22 क्या मतलब दिन के 3 बजे हेलुसिनेशंस भाई, ऐसे कैसे चलेगा यार? sorry chat, sorry about that. Anyways, so queen d4 के बाद गुकेश के ओपोनेंट ने एक्चुअली क्वीन टेक्स d4 मारा. Yes, and that is the main move here. Actually, that is the main move. So after queen takes d4, knight takes d4, a6 played by his opponent. And now the idea, of course, is to play b5 at some point. So taking on c4 makes a lot of sense. And clearly white should be tiny bit better, right? Because knight developed there. हम bishop भी develop करेंगे pawn मार के. So we have 2 extra pieces developed. We have the extra pawn in the center on e4. So white should be tiny bit better, I feel. और निरंजन भाई फिर से बैकएंड में भेजते हुए 8th मूव पे बिशप d7 was played by मामू before. मामू बोल दिया सीधे मोहम्मदयारोव को भाई. I don't know, अपने रिश्तेदारों के गेम्स क्यों भेज रहे हैं, I really don't know, but thank you निरंजन भाई, I'll check it out.
ठीक है, यहाँ पे तो सिंपली कैप्चर करने वाले हैं, बट आई थिंक ही इज जस्ट थिंकिंग कि कुछ इंटरमीडिएट मूव है क्या, कि मैं कुछ डेवलप भी कर लूं फिर बाद में मार लूं. I think we already saw from Gukesh, right? He calculates very deep. Hey, Gukesh, क्या हाल है यार? हाँ, कुछ नहीं बोल रहे. So he calculates really deeply, right? He goes very deep into the variations. Yeah, now he takes. So he's not only calculating bishop c4, he's going very deep, like 5-10 moves deeper. कि आगे के मेरा planning क्या है? Piece कहाँ जाएंगे? When will I castle? When the knight goes to c3 or d2 and so on. Got it. And let's go to Nihal game quickly, guys. By the way, 97 played very quickly by Mamedyarov. Mamedyarov looks prepared. Yeah. Mamedyarov ने क्या खेला? Knight to e7. Knight to e7. Oh. Because knight f6 would have, kind of either after f3 the knight will be dominated, or e5 would kick the knight away. So knight e7, a more pragmatic move. But now knight c3, and how is white not slightly better in this position? It just makes no sense. He should be slightly better, right? I mean, 3 pieces in the center. You have only one knight built on e7, which will have to move again. I think the plan is to go knight bc6 and try to challenge this knight on d4. But see, I don't think it's like a position jahan Gukesh can win easily. But he's not risking much, and he's plays quickly as well. Knight quickly played, and now we'll see either castling or knight bc6. We'll see what happens, chat. अब castling करने की जरूरत है क्या? सेंटर पे रख के ले आओ बाहर को. हाँ, वो भी कर सकते हो. In fact, you could put the white king anywhere. There are no queens, तो कोई टक्कर नहीं यहाँ पे. Yeah. And एक बार निहाल की गेम देखेगा तो लोग कह रहे हैं कि निहाल is in deep think भाई. Knight f6 was played, s3 खेला, और यहाँ पे he's in a deep think. Nihal sir in 30 minutes down. Nihal under pressure on the clock. So Rof G, I think he has defeated some Indian very strong. Even Vidit he has defeated once. I think he's very strong. And वो पूरी opening prep करके आए हैं. And the fact that he played s3 so quickly after knight f6 makes me worry a little bit. And hopefully Nihal, holding his head, he knows he has to defend. Nihal cannot afford to lose, chat. One loss means you need one more win to cover it up. And it also lowers the confidence of the entire team. जो कल US के साथ हुआ. Suddenly one guy was losing and everybody crumbled. So I think Nihal is trying to come with the best moves here. How can I defend in the best way? And also not play the main lines, because bilkul main khelenge to maybe sometimes the opponent prepared. So it depends on how confident he feels in this position. He cannot afford to use too much time, of course. Let's see how it progresses. एक बंदा कह रहा है इंडिया की हाईएस्ट रैंक क्या रही है एक्सक्लूडिंग ड्रॉ वाला गोल्ड मेडल, ये क्या है? I think third रही है. We won bronze, chat, in the open Olympiad, not the online Olympiad. जो मतलब ऐसे वो तो बोलते हैं. So can we quickly go through the Prague and other games and then come back to Gukesh once? Yes, bye. प्राग का माथा और फोर्थ रैंक बराबर लाइन में है भाई. प्राग इज लाइक भाई पूरा बोर्ड मेरा, तू अपना देख ले भाई. ऐसी फीलिंग से आ रही है. एंड आई थिंक वी लेफ्ट इट एट castles, right? I think d5 पे left it at move number 8. Yes, bishop g2, d5, and then white castled. Knight bd7, rook to c1, castled by black, a4, and bishop to b7. Yeah, so Prague definitely seems to be slightly better. Even a move like a5 here is very tempting to maintain this pressure on the queen side. However, his opponent has not used a single second on the clock. वो board की तरफ देख भी नहीं रहे हैं. So this tells me he is prepared. He's prepared. And India का जीतना जरूरी है. So Prague is not taking it lightly. He's also taking his time. He's not hurrying with this. I think Nihal game बहुत complicated है. वहां पे he's under time pressure. यहाँ पे I don't think so, because the position, if Prague wants to play simple chess, he could totally play knight c3 and he would not risk anything. So यहाँ पे I'm not too worried about the clock as of now. So I think Prague looking decent enough. I can expect him to put some pressure on black. यहाँ पे इंडियन दिखा रहा है a5 kill दो भाई. Yeah, a5 looks very logical, because उसके बाद क्या है? I will maintain this pawn. Will I take on b6? Will I play a6? Will I stare at you in your eyes? I don't know what will happen. So I think a5 is a very tempting move. And Prague is calculating, do I draw knight first? Yeah, a5. So we'll see how it goes. Let's go to Ronna's game once. Let's go, bhai. Prague should win. Yeah, let's hope so. Yeah, let's hope so. Ronna ki game. Okay. And okay, so after the move a4, move 18 पे अगर हम चले जाएं एक बार, yes, I would love to see how he handled this. He played the move knight to d4, and that basically
knight d4. So c2 is attacked. You play c3. And now he drops the knight back to e6, attacking your bishop now. See, he really wants to get that bishop. But now white places the bishop on d6. Excellent square. Not only does it stop the d pawn, it cuts off the king. So the king cannot come to f8 now. And it's a dominant piece, chat. And now a5 played, preventing a5 from white. But once you look at these pawns, a5, b6, c5, जब भी endgame आएगी, this bishop on d6 will be deadly. It can chop off all these 3 pawns. So endgames, में issue हो सकता है, and he plays bishop e2 now after a5, and now f6 played, king क्या सस्ता है ही नहीं कोई, and now f4 played from white. So white chat is definitely pushing here. I am a bit worried, but the fact that Ronak has more time on the clock gives me confidence that he's prepared and he knows what he's doing. So, but position wise, I am a bit worried, I would say, in this position. Oh, you're worried. But यहाँ पे अभी क्या खेलेगा फिर black? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये F2 के बाद. So f5 आने वाला है at some point. So g6 makes some sense, but then white can also play g4. So it's not a long-term solution. And 2 bishops, मैंने बोला जितने piece exchange होंगे, जितने pawn exchange होंगे, उतना bishops के लिए अच्छा होता है, because they can attack more. They get more open lines and files can, like diagonals and so on. So I think Ronak under slight pressure, I would say. I'm not feeling comfortable in his shoes right now. So can we go to Gukesh's game now and see what the hero is doing? Yes, भाई गुकेश की गेम पर वापस चलते हैं भाई. और चैट क्या जा रहा है? टेबल टेढ़ा है ना, टेबल टेढ़ा है. देखने में लग रहा है अगर पानी बहलाएंगे तो भाई डूबा लेफ्ट में जाएगा, बट I don't think so. I guess कोई कैमरा टेढ़ा होगा most likely. टेबल ही टेढ़ा कर दिया चैट तुमने, ये क्या है भाई? Okay. So after knight to e7, he played knight c3 and b5 from Mamedyarov, and the bishop drops to e2. A very, very good square, because the bishop is having an eye towards the queen side and the king side. And now black will maybe play c5 and attack the knight as well. So black is trying to kick away all these active pieces one by one. Very interesting strategy, Mamedyarov. And the fact that he's also the fact that he has equal time to Gukesh gives me a lot of confidence, because he's taking Gukesh seriously, and he's also not that well prepared. ऐसा नहीं कि अभी सब याद लाइन है हमको रटी हुई है. So I think he's taking time. That's a good sign for Gukesh. Good. यहाँ पे भाई c5 खेल सकते हैं ना, नाइट को पीछे जाना पड़ेगा फिर. True. He could play c5. He kicked the bishop back. Now he kicked the knight back. But of course, pawn ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध फेंक दी है, तो they weaken a lot of squares now. So d6 square कितना weak हो जाएगा c5 के बाद, d5 square weak हो जाएगा c5 के बाद. So a4 can become more dangerous for white. So it's sort of one way street. या तुम उठा के pawn ऐसे अपने opponent के मुंह पे दे मारोगे तो वो भी react करेगा ना भाई. So it's like it's a double-edged way to play, of course, because your pieces are not developed. Got it, man. So shall we stick to this game for a while, at least for a few minutes? बीफा क्या लग रहा है, या और गेम देखनी है, आप बताओ. अभी देख सकते हैं यार. आई थिंक अभी यहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहा है. ठीक है. अभी गुकेश है भी नहीं बोर्ड पे, और जैसे ही मोहम्मदयारव खेलेंगे तो हम लोग को तो दिख ही जाएगा. तो तब देख लेंगे हम लोग. ओके, मोहम्मदयारव चाय पी रहे हैं भाई. सही है भाई. कोच ने आगे साइड में चाय रख दी. क्या इशारों. किसी ने बताया था ना चैट में, लाइक पुराने जमाने में they used to keep a different beverage based on the kind of position, है ना? Like, oh, is it? बताया था चैट ने. I think चैट नहीं था. I think basically they used to keep a different kind of beverage based on the evaluation of the position. So hot का मतलब you are losing, ठंडे का मतलब it's like better या whatever ऐसे. अभी भी करते होंगे क्या? Who knows, man? Like there could be strategies. Like I don't think Mamedyarov will do it. Of course, he's a top player, but you never know. For it just takes one unethical guy. चैट एक वीडियो है जहाँ पे chess.com के क्लिप्स चैनल पे उन्होंने कुछ एक कोच ने कुछ पिलाने के लिए दिया था भाई अपने कोच के प्लेयर्स को. भाई किटकैट और बेवरेज क्या लिंक है भाई, जाके चेक कर सकते हो यार. साहिल इज लाइक ये क्या कर रहा हूं मैं. ये कर रहे हैं अब यार. नहीं, मुझे एक्चुअली वो चक्कर नहीं है. समझा नहीं. नहीं कुछ हुआ नहीं एक्चुअली. बस जो चेस क्लिप्स चैनल है जो होस्ट करते हैं
उनका नाम चैट पे शायद पता होगा। अच्छा, वो ऐसा लंबी कहानी है भाई, आई थिंक चैट को पता होगा किसकी बात कर रहा हूँ। एनीवेज, सो बाबा चेस। लेट्स गो भाई, गेस कर ही लेता हूँ मैं सब कुछ भाई। And anyways guys, queen to f6, bishop capture f6 के बाद queen to f6 कैप्चर रिकैप्चर किया है भाई हरि कृष्णा वर्सेस पोलो के गेम में भाई। And by the way निरंजन भाई, chat wants to know when are you joining? Suit up bro, suit up। आई थिंक 20 चैट पर लंच करना है। चैट में तो एक बंदे ने लिखा नहीं इससे 5 मिनट में एटलीस्ट 20 चैट पर लंच करना है। भाई तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं 20 भाई, देख लो चैट देख लो, तुम्हारे शोल्डर पे रख के फायरिंग कर रहे हैं भाई। यार पूछा है भाई लोगों ने। नहीं आज तो 4 बजे मैं ब्रेक ले रहा हूँ भाई। And Rakesh bhai is also in the chat, go team India। Yes Rakesh bhai, go team India। आज 4 बजे मैं ब्रेक ले रहा हूँ भाई। मैं यही बैठा रहूंगा लेकिन ब्रेक। Everyone please like the stream भाई, एक बार 300 लाइक पहुंच जाए फटाक से भाई तो मजा आ जाए भाई। And we will ask the giveaway question as well। Can you go ahead and Sahil ask a giveaway question? हाँ, so giveaway question कर सकते हैं। Let me, okay, डाल दो भाई। हाँ भाई निरंजन भाई कुछ डालने वाले हैं अभी स्क्रीन पे, आने वाला है बहुत बढ़िया वीडियो, देखो भाई। ओके How are they giving us the same time? ओ राकेश भाई भी है, राकेश भाई सारा माल सारा अच्छा ले लेते हैं यार, बट ये क्या है भाई सेम टाइम पे कैसे? नो आइडिया भाई क्या चल रहा है। A coincidence? I think not। Yeah। But anyways भाई चैट में काफी लोग पूछ रहे हैं भाई निरंजन भाई निरंजन बहुत बिजी है एक्चुअली, चैट I've heard Niranjan is really busy and he will join us at around 5 p.m. tonight and then he will stay till the end. So today he might not be there till 5 p.m. chat. It's okay Niranjan भाई, we can handle it। 20 मिनट में हैंडल कर लेंगे यार, फिक्र मत करो भाई, हम हैंडल कर देंगे निरंजन भाई, आप स्ट्रेस मत लो यार, हम कर देंगे हैंडल। Question guys, can we have the giveaway question? Let's go Tickoo please। हाँ, so giveaway question is chat, at what time exactly will Niranjan भाई join the call? Guess करो, जो एग्जैक्ट गेस करेगा ना, एग्जैक्ट पहला बंदा, उस बंदे को बाद में मेंबरशिप दी जाएगी भाई। गेस करो एग्जैक्ट टाइम पे निरंजन भाई कब ज्वाइन करेंगे, टू द मिनट। उनको क्या पता है भाई यार। गुकेश सोच रहा है किस टाइम पे आएंगे यार निरंजन भाई। चलो भाई आगे देखते हैं भाई। गुकेश के गेम पे वापस जाते हैं भाई। जस्ट वांटेड टू सी क्या कोई प्रोग्रेस हुआ है क्या यहाँ पे। वो ही प्लेड c5 and then c4 also। Wow। Yeah, he played c5, knight to b3 and he played c4। ज्यादा ही pawn push नहीं कर रहे, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया कुछ, थोड़ा सा lot of pawn pushes भाई। and now lot of again I will go back ना knight to d4 सीधे। yeah, knight d4 मैं knight का पोजीशन तो अच्छा ही है, मैं तो knight d4 looks logically। हाँ true। क्या इसके बाद ये भी पुश कर देंगे क्या ये? नहीं वो नहीं करेंगे, वो करेंगे तो जाएगा कंफर्म। 420 नहीं है भाई, बहुत टाइम है। आई थिंक मुझे फीलिंग आ रही है 5 बजे आएंगे भाई, बाकी पता नहीं निरंजन भाई के हाथ में है वो। No, Niranjan is joining in next 5 minutes guys, all the best। नहीं chat he will not join, I promise। ये क्या है भाई, वो ऑलरेडी इधर है भाई बैठा हुआ आदमी, उसको सिर्फ सूट पहनना होता है पीछे टांगा हुआ। Oh no chat, I'm getting a urgent message, 4 बजे मुझे जाना पड़ेगा chat, urgent। ये क्या है भाई, ये मोदी जी का कॉल आ रहा है। Okay guys, ये सब तो मजाक वाला क्वेश्चन है। Let's ask a question। In how many ways can knight get from c6 to f4 in 3 moves? Can you find out the answer? मजाक वाला क्वेश्चन है, I did not agree to this। अरे और क्या, ये सब वाहियात क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे और गिव देंगे हम। क्यों भाई, यही तो असली गिव अवे है। क्यों चैट कौन सा क्वेश्चन चाहिए भाई तुम्हें, नाइट वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए, बताओ भाई। नाइट वाले में चैट तुमको अभी के अभी मिल जाएगा कि मेंबरशिप मिल गया, इसमें तुमको वेट करना पड़ेगा कि आज आएंगे कब आएंगे, क्या सही टाइम था। अरे मेरे घड़ी में तो 4:15 हो रहा है, मेरे में तो 4:14 हो रहा है। देख लो शायद, देख लो भाई, देख लो। नहीं बाद में आना, देखो चैट भी वही करी यार, शिव समाज एग्रीइंग टू मी, इज लाइक बाद में आना यार।
And chat, I will repeat the question. In how many ways can a knight go from C6 to F4 in just 3 moves? बहुत से लोग लिख रहे हैं 4-3-2 4.45 क्या होता है भाई? और टाइम लिख रहा है। अच्छा, लोग दोनों आंसर कर रहे हैं, बढ़िया भाई। चैट 400 लाइक कर दो, फिर दोनों की एम्बिशन साथ में कर देंगे भाई। 400 लाइक कर दो चैट, जल्दी से कर दो भाई। अगर दोनों की आंसर एम्बिशन तो 400 लाइक कर दो भाई चैट, जल्दी को। श्रीवत्सन में कह रहे हैं आपने आंसर बता दिया। मैंने आंसर नहीं बताया, आपने क्वेश्चन नहीं सुना ब्रो। प्लीज बिकम अ गुड लिसनर। इन हाउ मेनी वेज कैन अ नाइट गेट फ्रॉम C6 टू F4 इन 3 मूव्स? इन हाउ मेनी वेज, नॉट इन हाउ मेनी मूव्स। एक बंदा कह रहा है 12 भाई। 12 तो ना टाइम का आंसर है ना मूव्स का, ये तो भाई अलग ही आंसर है। गुकेश सोच रहा है यार। क्या आंसर क्या है निरंजन भाई? आपको भी नहीं पता है और आपने क्वेश्चन पूछ डाला। लगता से नहीं चलेगा यार निरंजन भाई। ओके, कैलकुलेट कर लो। C6 to F4। C6 भाई करो भाई कैलकुलेट भाई, दोनों आदमी भाई। तो स्टार्टिंग पोजीशन से लिख रहे हैं। D4 E6 F4 is 1, D4 E2 F4 is 1। एक मिनट मैं एरो कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ करो भाई, आप करो भाई। यहाँ पे है D4 हमारा D4 एक स्क्वायर है, D4 एक स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, D4 एक स्क्वायर मार्क कर दो। एंड D4 से वी कैन गो इन 2 वेज, ठीक है। नहीं वो हटा, सिर्फ D4 मार्क कर दो ना। दो तरीके D4 से हो गए, सिर्फ D4 हाईलाइट कर दो। C6 और F4, हाँ C6 और F4 अलग कलर में। हाँ एग्जैक्टली। ग्रीन से F4 भी कर दो, ठीक है। ग्रीन से F4 कर दो, हाँ ग्रीन से कर दो बस, एग्जैक्टली। D4 से 2 तरीके हैं, 2 हो गए ना। यस। नाउ वी गो टू E7। यस। E7 से कितने तरीके? 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं, करेक्ट। तो 4 हो गए। D8। D8 से कितने तरीके हैं? 1 5 हो गए। B4, ठीक है। B8 से कितने तरीके हैं? 0। B4 से है कितने? 2 तरीके हो गए। यस। तो 7 हो गए। यस। एंड A5 से तरीके 0 तरीके हैं, है ना। E5। A5 क्या था? A5 क्या था? और E5 से हो गए 2 तरीके हो गए, करेक्ट। सो 9 हो गए। करेक्ट। So 9 is the answer, I guess. I think so. I also feel so. Okay, these are अपने feelings पे इन्होंने आंसर बता दिया है कि the answer is 9 guys। किसने बताया लेकिन 9? किसी ने चैट में लिखा है क्या 9? आरुष मिश्रा। हाँ आरुष मिश्रा ने लिखा था भाई। आरुष मिश्रा, you are the winner. You are the winner, congratulations। आप अपने chess.com ID यहाँ पे लिख दे चैट में and he will keep a note और of एक it। सिंह भाई कह रहे हैं हाँ ये कर लो पहले, ओलंपिक्स तो होता रहेगा। चलो गुकेश की लाइव पोजीशन लगा दो यार, ताकि चैट को लगे कि कमेंट्री भी चल रही है साथ में। Yes guys, yes, what a game भाई, what a game। What do you think, Tickoo? I don't know. देखो, the fact that he's playing Mamedyarov is obviously difficult as a chess player, and Mamedyarov काफी confidently भी प्यादे आगे फेंके जा रहे हैं, but the form, the confidence boost Gukesh must have gotten yesterday after defeating Caruana। अब 6-on-6 छोड़ो, 7-on-7 छोड़ो, 8-on-8 करने के लिए उनको वर्ल्ड के एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खेल चुके हैं, उनको हराना पड़ा फ्रॉम अ मच वर्स पोजीशन फ्रॉम द ब्लैक पीसेस। जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना उसका, वो अलग ही है। एंड क्या हराया था भाई, फाइनल पोजीशन में ही हैड 3 more pieces। वो सब तो ठीक है, बट दैट पोजीशन वाज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसमें इतने सारे पीसेस बचे थे, इसमें माइनर पीसेस का ही गेम है। क्वीन पहले एक्सचेंज हो चुकी है, उसमें क्वीन था, व्हिच मेक्स पीपल थिंक्स अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड। पर इसमें कैन वी लाइक कॉम्प्लिकेट दैट मच? हाँ, so I'm not saying he will win this. All I'm saying is कि मतलब he should have no issues at least drawing. मतलब he should not lose this. And the only question is, can he outplay Mamedyarov enough to win the game? Maybe not, maybe yes. We'll see how it goes. राकेश भाई 7 बोल रहे हैं, क्या उनका आंसर गलत है? राकेश भाई आपका 7 है भाई, आपकी डायमंड मेंबरशिप वापस ली जाती है। सॉरी सो मच। दैट्स राइट आंसर इज 9। हाँ, कोई बीच में आते हुए रास्ता ब्लॉक करते हुए गुकेश से सोचते हुए भाई। Yeah, Gukesh said in one of his interviews that Caruana is one of his favorite players. That's true. He said that, and that's the thing. It's crazy. नहीं, सबको ऐसा ही बोलते हो ना कि he is one of my favorite players। टॉप के प्लेयर्स को तो बोलेंगे ही ना भाई। One of my favorites, ये भी नहीं कि favorite है, one of my favorite, of course। He's one of my favorite players, and I have really grown watching his games. So yeah,
ऐसा ऐसा तो ये सब बोलते हैं। ओके, ममेद्यारोव भाई मतलब बोर्ड पे भी नहीं बैठा है। इट्स लाइक लाइक ही साइकोलॉजिकल प्रेशर। आई थिंक इन्होंने लास्ट टाइम भी बोर्ड पे नहीं बैठे थे, विषयान ने रिजाइन कर दिया था। नाउ इज लाइक मैं बोर्ड पे बैठूंगा ही नहीं। बैठना ही नहीं है मैंने भाई, तस्वीर रखनी नहीं है। भाई इतना पास थे तो बैठ ही जाते। मेरे को लगा कहीं दूर गए होंगे, इतना पास थे तो कहीं बोर्ड दूर पे। नहीं जाते भाई, एकदम बगल में ही रहते हैं भाई, वहां से उठ के चले जाते हैं बस। दैट मेक्स नो सेंस। एनीवेज भाई ये बस आज इनका टेबल चेंज हो गया ना, पहले ये लोग सब ऐसे लाइन में ही बैठे हुए थे ना, ऐसे कनेक्टेड बोर्ड उनका वो था टेबल। नहीं ऐसे था, पहले ऐसे था। वहां पे नहीं वो नहीं, बैठा है, निहाल सिटिंग देयर। कनेक्टेड टेबल था भाई, एक ही कैम में सब दिख रहे थे चारों के चारों। नहीं नहीं नहीं, दो ही देखे थे कैमरा में। आई थिंक बीच में एक कैमरा था, दो दिखते थे। If नहीं he यार, draws, Gukesh gains Chat- 1 point chat roughly. 1 point मिलेगा roughly उनको। If Gukesh हम्म। draws, उनको तो बासी आ रही है निहाल के ओपोनेंट को। Let's go निहाल, अब तो जीतना ही है भाई। अपने निहाल के गेम में ओपोनेंट देखते हैं ना बासी भाई, है। H3 पे क्वीन टू E7 खेला है भाई उन्होंने। हाँ, that's the best move actually. So निहाल finding the best move. निहाल टाइम लेके खेलते हैं पर एकदम ही बेस्ट ही मूव खेलते हैं भाई। वो एक्चुअली आई थिंक बेस्ट मूव तो दिख जाता होगा उनको, पर वो आगे ही कैलकुलेट करते होंगे, पता नहीं कुछ। यू नेवर नो। कनेक्टेड था कल। ओके, ये बोर्ड 1 होगा शायद, डिफरेंट होगा मे बी। अच्छा हाँ, यू आर राइट कनेक्टेड था। राइट। हाँ अब तो राइट होगा, ये चैट You are right. चली गई थी तुम्हारे। नाउ आई रिमेंबर एक्चुअली, वो याद है ना, मैंने सोचा। मैं इतने देर से मैं बोल रहा था तो नहीं समझ में आ रहा था, चैट एक बार बोली तो या ऑफ कोर्स आई हाउ कुड आई फॉरगेट या। गुलेश को कुछ खिलाओ यार, गुलेश को। भाई नया बंदा है। to claim your membership you can just connect with Niranjan bhai on Twitter or Instagram, or you can just write your whatever username. You can also DM Beastars by totally. No, please don't DM me. For other reasons. And Niranjan bhai is here. अरे यार. Welcome. And chat, I'll be back in 2 minutes. I'll be back in 2 minutes. Chat, bye bye. पूजा पाठ करके आए निरंजन भाई, कैसा लग रहा है निरंजन भाई आज? इंडिया के लिए आपने क्या हो गया सब? पूजा पाठ। अच्छा, मैंने कुछ और सुना यार। यार तुम मत सुनो भाई, यार तुम भाई साहब, ओके पूजा हो गया, ओके। पता है चैट हम लोग का ना, पता है वो क्या कहते हैं, स्लोगन था नमस्ते दोस्तों ही करना था हम लोग को, पता है। तो जब भी पर ये लोग मेरे को बोलते हैं आप ओपन करिए विथ नमस्ते दोस्तों, ठीक है, मैं आता हूँ सिर्फ हेलो चैट क्या हो रहा है, खत्म ही कर देता हूँ मैं नमस्ते दोस्तों। तो सॉरी गाइस, नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? भाई निरंजन भाई यू आर ऑन म्यूट। यस आई जस्ट रियलाइज। सो नमस्ते दोस्तों सबके लिए नमस्ते। तो आई जस्ट रियलाइज दैट मेरा म्यूट हुआ था। तो नमस्ते वनक्कम सबको नमस्कार, एंड वी आर विथ बीस्टार्स एंड साहिल टिक्कू जॉइनिंग, एंड वी आर कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड 9। तो साहिल भाई, एक चीज पे ऊपर हमें जरूर सबको बताना है कि हम तीनों, शायद हम दोनों तो ओटीबी खेल चुके हैं, बीस्टार्स अपना डेब्यू खेले नहीं। हाँ, आई थिंक दिल्ली ओपन में था 2012। नहीं मैं आपस में नहीं बोल रहा हूँ, हम ओटीपी खेल चुके। तो ओटीपी हम खेल चुके, तो हमें पता है कि 9th राउंड जब हम पहुंचते हैं, हाँ, तो हमारा फीलिंग कैसा रहता है। तो मैं दो एक्सपीरियंस कर मतलब दो एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप अपना थॉट शेयर किया। हम 9th राउंड पे हैं। इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग रियली वेल, टूर्नामेंट में सब मजा आ रहा है, देन in the 9th round you will just see it as the first round because your energy is high, the win is giving you that extra push. So this I also I mean this was my thought. तो कैंडिडेट्स ब्रॉडकास्ट में विषय आनंद सर आए थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो एनर्जी है इट्स वेरी रिलेटिव इन टूर्नामेंट सर्कल, क्योंकि अगर आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है तो यू विल, let's say you have got that win even after 6 hours, you will not feel tired, थकान महसूस ही नहीं होगी आपको। लेकिन ऐसा समझो कि आपने बहुत अच्छा खेला, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको कुछ करने की जो एनर्जी इतना ज्यादा नहीं रहेगी जितना आपको रहना चाहिए ऑब्जेक्टिवली। तो आई थिंक इफ योर रिजल्ट्स आर रियली वेल, देन बाय द एंड ऑफ राउंड 9 or when you're reaching round 9 your energy levels are really high,
but if the results are so, then you have to rely on your external motivation, internal motivation. तो यहाँ पे साहिल भाई मैंने अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ये सेटअप तो यहाँ पे बीच में खाना ठंडा हो गया भाई है क्या भाई? तो क्वेश्चन ये है कि साहिल भाई मैंने एक एस्पेक्ट आपको बताया कि व्हेन यू आर विनिंग योर एनर्जी इज हाई एंड व्हेन यू आर नॉट विनिंग द एनर्जी इज सो आपके ख्याल में 9th राउंड पे हाउ इज योर एनर्जी यूजुअली? Yeah, so usually my energy is very high because I'm crying for 4 hours straight. After loss? Yes. So I would say कि energy is very high, but overall I think it depends. I think for example यहाँ पे because stakes are so high and उनके आसपास जो atmosphere is very different as compared to normal tournaments because normal में क्या होता है nobody cares about your performance apart from you and your family, right? But when basically you are for example let's say playing the Olympiad, आपके आसपास लोग होते हैं आपको cheer करने के लिए, so you kind of feed off that energy, I think. And even if you are doing badly, let's say in a normal chess tournament कोने पड़ने का मन करता है भाई कि ऐसे करके मैं रो जाऊं, लेकिन if you are playing badly here पूरा देश support करेगा आपको at least until you have medal chances. So I think it's like यहाँ पे I think energy is not going to play that much of a factor. However होता है सेकंड हाफ में ब्लंडर्स होते हैं, कई बार लोग थक जाते हैं एंड सो ऑन, सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. तो यहाँ पे मैं निरंजन भाई आपको मैं मान गया, यहाँ पे मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा. आप पे वो सब रहने दो भाई, इतना छोटे से क्वेश्चन का आपने इतना लंबा सेटअप किया भाई, बड़ा जीनियस है भाई. थैंक यू. तो मेरा अभी दूसरा सेटअप है, आई मीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. खत्म नहीं हुआ है, नहीं खत्म हुआ, क्योंकि आई थिंक दिस इज अ पॉइंट दैट I have this information, so I want to share this in a way that it looks very interesting. The main पर interesting लगे मतलब है नहीं interesting. नहीं, मेरे लिए बहुत interesting है. तो I want also all of you to get the essence of what I'm saying. नीरी भाई ओपी भाई, नीरी is a cutie भाई. Thank you भाई. तो second aspect जो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गुकेश है, इनके बारे में मैं कुछ ऐसे चीज़ें जानता हूँ which for me gives me an idea as to how he is able to play so well. तो I will share some things now. गुकेश हमारे क्या ऐसे कुछ पर्सनल वीडियो मुझे भी लगा भाई इनके गर्लफ्रेंड का नाम है, सब पता है. ये देखे भाई, ये देखे गुकेश की कर तो गुकेश नाम से देखिए. तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो उनका जो अगर आप ग्राफ देखोगे फिडे पे उनका ग्राफ मिलेगा आपको. तो 2013 या 12 में उनका रेटिंग 1100 था. तो अब तो ही इज इंडिया नंबर 2. तो 4 साल पहले मैं इनका जो सेटअप है, गेम का रिचुअल क्या है, ये सब मैं देख रहा था. तो इट्स द सेम एंड इट स्टिल बी द सेम. तो व्हाट ही डज इज ही डज अ लॉट ऑफ मेंटल प्रिपरेशन प्रायर टू द गेम आल्सो. तो इस एस्पेक्ट के लिए मैंने धोनी का वीडियो chess.com इंडिया चैनल में डाला हुआ है. So athletes like these, let's say the top athletes, even those competing in the Olympic Games, they prepare chess-wise, but they also prepare mentally. तो गेम को विजुअलाइज करते हैं पहले. तो जिस किसी को भी इसके बारे में जानना है, there is a very nice book with a lot of stories. It's written by Prakash Iyer and the book's title is The Habit of Winning. तो यहाँ से I will tell you why visualization और mental game का प्रैक्टिस है, ये क्यों हमें करना चाहिए. तो बीस्ट बाय यहाँ पे दे ऑल्सो प्रिपेयर फॉर सिचुएशंस. एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं लो स्टेट ऑफ माइंड में खेल रहा हूँ, इफ द पोजिशन और द स्टैंडिंग्स आर नॉट इन माई फेवर, हाउ डू आई फोकस. इफ द सिचुएशन इज इन माई फेवर, हाउ डू आई फोकस. तो यहाँ पे माइकल फेल्प्स आप जानते हो? हाँ भाई. तो माइकल फेल्प्स, साहिल भाई आप जानते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं ओलंपिक में स्विमिंग कैटेगरी में. लेकिन इनका एक चीज मैं आपको शेयर करूंगा कि उन्होंने स्विमिंग करते हुए ऐसे सिचुएशन को भी उन्होंने प्रिपेयर किया कि व्हाट इफ व्हाइल स्विमिंग हिज आईज बिकम अ प्रॉब्लम. उनके आंखों में कुछ हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में मैं स्विमिंग कैसे कर पाऊंगा. सो व्हाट दे डिड इज, व्हाट ही एक्चुअली डिड प्रायर टू द इवेंट इज ही विजुअलाइज्ड द होल race in his mind before the event, and that is just as a situation. उन्होंने 10-12 situations के लिए प्रिपेयर किए होंगे, जिसमें से एक सिचुएशन ऐसा भी होगा कि अगर मेरा जो गॉगल्स है अटक गया और मुझे नहीं दिखा, तो मैं कैसे जीतूंगा रेस.
तो एक बार एक ओलंपिक रेस में ऐसा हुआ उनके साथ, तो वो बिना देखे he swam the entire thing and won the race. Again, this is an effect of निरंजन भाई visualization. ओपी भाई चैट में लिख रहा है 20 चैट भाई को मजाक सूझ रहा है मेरे को तो बहुत सूझ रहे थे भाई, मेरे को एकदम सेटअप आया था ये कहते दे आल्सो मेंटली प्रिपेयर भाई ये वो रिचुअल्स करके एंड आई वाज लाइक हाँ भाई इवन इन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स ना भाई निरंजन भाई हाँ? मैं भी हर बार एग्जाम जब भी लिखने बैठता था ना तो आई विल लाइक ऐसे एक ऐसे भगवान की मूर्ति होती थी बॉक्स में छोटी सी, वो ऐसे निकाल के ऐसे पूजा वूजा करके उसके बाद मैं एग्जाम लिखना शुरू करता था. Yes, I mean, बट दैट वाज जस्ट टू शो ऐसे लड़कियों को कि देखो मैं कितना धार्मिक हूँ तो अच्छा. But I think actual visualization तो अभी I think ममेद्यारोव जी कर रहे हैं पूरे प्रेशर में उनका मुंह थोड़ा लाल होता हुआ दिख रहा है मुझे. आई थिंक लोकेश का आया तो चाहिए अपन के मुंह लाल करने की ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही है. तो 0-0 हो गया है, बट ऑल्सो यू हैव टू नोट कि वो ऑलरेडी एंड गेम में आ गए हैं. तो यहाँ पे 2 एंड गेम्स चल रहे हैं. एक रौनक का एंड गेम जहाँ पे स्लाइटली वर्स इन माय ओपिनियन, और यहाँ पे एक और एंड गेम है जहाँ पे वाइट इज स्लाइटली बेटर. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम पूछेंगे इस बार 20 बाय को नहीं, साहिल टिक्कू को, कि व्हाट इज उससे पहले निरंजन भाई आई विल बी गोइंग ऑन अ ब्रेक एंड आई विल बी बैक आफ्टर लंच. थैंक यू सो मच चैट एंड निरंजन भाई ओपी, साहिल टिक्कू ओपी एंड लेट्स गो गाइस एंड एवरीवन प्लीज लाइक द स्ट्रीम गाइस, प्लीज लाइक द स्ट्रीम. थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज कंटिन्यू. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, तो द क्वेश्चन इज टू साहिल भाई कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इन चेस? Most common? Yes. I don't know, like in my games is the Carlsbad structure, I guess. मतलब ऐसे वो जो D4, E3, F2, but ऐसे कोई, I guess I'm not really sure. I don't think it's that one, like structure तो नहीं होगा. Oh, yes, Pranali has read that book. That's nice, and that's the story. Very nice. Coming back, coming to this particular game, 3-3 versus 4-2 is the most common. You mean, okay. So 1, 2, 3, 1, 2, 3. So that's 3-3 is equal to 1, 2, and 3, I 4. think there is a Daniel King DVD on this also. Yes, that is where I also learned it. I've also. So सबके लिए अगर आपको मतलब डायनामिकली इंटरैक्टिव वर्जन में अगर देखना है तो डैनियल किंग्स मटेरियल इज रियली गुड. ही आल्सो हैज अ चैनल and I have personally learned a lot from his material. So this is one of the things I have learned, that the most common pawn structure in chess is 3-3 versus 4-2. So इस pawn structure में the player having 4-2 will be aiming for a central majority, F4, E5, and the player having 3-3 will be hoping to exchange a lot of pieces and use the king in the center. So I think that the king being on c1 could go to e3 and facilitate this advance. So I like white's position. What are your thoughts, Sahil bhai? You like white's position? Yeah, I do, but I also feel that black also has a decent variation because you already pushed the pawns, right? And although if I had to choose, I would choose white clearly because white is castled, all pieces developed. Black still has to make the choice where to put the king, I think. And to me, that's not obvious. And right now, what do? Do you play bishop somewhere? Do you take on, d4 now, and then play bishop b7 or bishop d7? Like, because both are different kind of moves. And I think the choices are a bit more complicated for black. And there are weak squares, right? d6, e5, c5, b6, c7. All these squares can be utilized. So I would choose white here. But I think it's very, very little. So, Okay. तो जो भी chess.com मेंबरशिप गिव अवेज जीते हैं वो मुझे ट्विटर में मैसेज कर सकते हैं विद द स्क्रीनशॉट. और it takes about 7 to 14 days, but recently, just yesterday and today, a lot of members have received their memberships. So if you're one, just send me a message on Twitter, twitter.com/IamNeri. That's my Twitter handle. Coming to the game, after 0-0, I was saying, what if black plays castles? Though this is not a Mamedyarov kind of move, what would you do? I mean, thing is, I want to get the rook to the 7th rank on a good day, but I can't do it because I mentioned the d6 square is available. So why not just take and play rook d6 here, and then I double up rooks,
and then I go f4, e5, knight d5. I have all these moves, and if you play bishop b7, I already have rook d7 also. Wow, You. this is nice. I mean, white is So I think- better. Yeah. So I think white has no risk, right? I mean, he's not risking, and the king on c1 is perfectly placed for the pawn push also, no, in the endgame. So it's not on g1. I have to waste time into f1, e1, d2, and I falls asleep halfway. So I think white's pieces are perfectly set up, and he should be slightly better. But because it's Mamedyarov and queens are out of the board, and there's no kingside attack, so to speak. So I do think the most likely result is still a draw, though. I vote for white's win, but you can vote for. I would want to see it, but it looks difficult. All right. So before heading to another game, I will just share another thing about Gukesh. I got a chance to meet Gukesh in the month of March in the Indian National Championship, where he tied for first along with Arjun Ergesi. तो वहाँ पे उनसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि हर एक चेस खिलाड़ी को, या ऐसा मैंने पूछा कि what is one quality that every Indian chess kid should have. तो उन्होंने बहुत ही सही जवाब दिया, और उस जवाब का उन्होंने कल प्रूव भी किया. तो उन्होंने जवाब दिया कि I believe that fighting quality is something that every chess player should have, and that is what I try to do. That he says that whenever he gets a tough position, he fights it out. He makes a comeback in the game, and that is what he did yesterday. आमिर खान जी कुछ कह रहे हैं, I think अपनी अगली मूवी के लिए. Amir Khan. All right, bhai. So for more motivational talks, you can definitely check chess.com India's videos. And coming back to the India B team, I think it's a good time to check Nihal Sarin, right? So Nihal Sarin, French. Yeah, French is something I have not spent so much time in my life with. Like French opening study करने में इतना समय मैंने दिया नहीं. पर what are your thoughts, Sahil bhai? Is this a good French for black? Is this a bad French for black? What do you think? So I have played the French a little bit, but definitely not this variation. And I mean, as far as I understand it, like white has played this move b4, which is, well, I would say surprising a little bit. Because bishop b4, obviously, I think he wants to play e5, I assume. E5. I don't think rook f4 makes any sense. So e5 is the idea. pawn क्यों दिया? If I capture? I think e5 खेलेंगे. उसके बाद f4 pawn उनको मिल ही जाएगा बाद में, at least. And he's basically preventing black from castling, I think. Like knight will the knight go. I just don't see it. So, can you guess the evaluation by Salwai? If I capture, I can see. You can. I can see it. I can see it on the screen. So it must be really bad. Yeah. But we saw it earlier, no? Like white wanted to play e5 in the opening also when we had that f4 move. So I think he cannot allow it. But on the other hand, b4, if I will not take on b4, I think the plan should be c5 for white, right? Knight c4 and so on. That should be the plan usually. I'm assuming. Yeah. That is what I think Nihal is considering. But castling makes sense then, right? Yeah, makes sense. But the position is very complicated, and I have not played this structure ever, ever. The one on d4, pawn on f4, and e4, c4, b4 is a very, very weird complex. Also h3 played, so weakening the dark squares, by the way. If I put the black queen on g3, suddenly I'm worried also. So it's very, very, a very weird structure. I've never seen this. And 1, 2, 3 Ambrish जो कल 6 months का membership जीते हैं, बोल रहे हैं कि निहाल is low on time. तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि निहाल सरीन is facing a structure which is not so common in chess, and जब structure बदल जाते हैं तो you have to spend more time understanding the nuances कि ये नाइट वहाँ पे है तो ये नाइट कहाँ जा सकते हैं, बिशप यहाँ पे है, तो उसमें थोड़ा समय तो जाएगा ही. Even I would have spent a lot of time. Board particle 04, I am sorry, I disagree with you. I don't think आपने वो स्टडी के बारे में सुना है? So basically, chat, there was a study done, psychological study, कि how fast can grandmasters, like top players, like remember positions, and how fast can amateurs do, like people who barely know chess, ठीक है? So whenever you had normal positions, no, जो openings की हैं, like normal positions, the grandmasters were super fast as compared to normal amateurs. In like for example, you show them a position for X number of seconds, and they have to replicate the position on another board. So they were super sharp when they had traditional positions. For example, I think Veritas ने opening a video बताया था recently.
So, but whenever you come to new structures which they have not seen, especially when they're not like king castle nahi hai, kuch weird positions mein hai pieces, then grandmasters are just as bad as the amateur in reciprocating the positions on the second board. So it's like jo pattern recognition hai na, that is what makes the great chess player. And whenever you see a new position, that's why they have to spend more time, because they just cannot, like, they have not seen this before. So they try to contrast and compare. पहले कुछ ऐसा हल्का सा कहीं देखा होगा 2 साल पहले, and then they will try to drag it from here to the current position, and that's the thing. तो ये जो स्टडी आपने बताया, इसका नाम क्या है, इस रिसर्च का, आप जानते हैं? मुझे याद नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत पहले सुना था, और अब जाके मैंने विस्से, यू कैन चेक वेरिटेसियम ओपीज, वेरिटेसियम ओपी कह रहा हूँ, वेरिटेसियम्स चैनल, उस पे आई थिंक ही आल्सो मेंशंस इट रिसेंटली. ओके, थोड़ा मेरे लिए नया है ये नाम, बट या इसी के साथ आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू रिकमेंड ए वीडियो टू एवरीबॉडी कि जो साहिल भाई ने बताया, इट आल्सो करस्पॉन्ड्स टू व्हाटएवर ही इज सेइंग. It's called My Brilliant Brain. It's a beautiful documentary on the life of Suzanne Polgar. So the BBC, I think National Geographic Channel, उनके ऊपर कुछ रिसर्च करते हैं, एंड there is a moving bus. उस मूविंग बस पे एक पोजीशन लगा होता है, तो वो मूविंग बस इतना फास्ट जाती है तो यू डोंट इवन सी, बट सुजान पोलगार इज एबल टू रिमेंबर दैट पोजीशन व्हिच इज ऑन द बस, ऑन द मूविंग बस. So there are many interesting things there, and I was fortunate to play a simul with Suzanne Polgar, and also got a signed chessboard from her when I attended that documentary promotion show. It was in Bangalore many years back when I was 11 years old. All right, तो हम आते हैं वापस. सो निहाल सरीन का पोजीशन थोड़ा नया सा है, लेकिन मैं अगर होता ब्लैक से तो मैं थोड़ा सोच के कैसलिंग खेल देता. ओके, यो जसन भाई क्या हाल है? एंड आई थिंक निहाल इज स्टिल 30 मिनट्स है उनके पास. Wow. Chat, Nihal is almost 1 hour behind. Yes. That is a bit uncomfortable though, we have to say. He looks uncomfortable. Can we check out Prag's game now? So Prag की game अगर जाएं एक बार. Yes. I think this is uncomfortable, Nihal. Clearly uncomfortable. Prag has played A5 apparently. तो A5 नहीं खेला उन्होंने, A4 नहीं खेला क्या अभी? उन्होंने Knight C3 खेला. So Prag also has 30 minutes. Wow. Oh, all the Chat, low on time. I don't know, chat, 46, why? 46. 46, okay, my bad. 30, thankfully 46 है. If you could see Nihal's time also, थोड़ा सा मुझे relief मिलता. I don't know, because I'm worried about Nihal's clock right now. Let me check. Let me check. तो ये है Nihal, but Nihal is actually having yeah, he actually has 30 minutes, less than 30, yeah. Yeah. Chat, Nihal क्या लग रहा है? Will he fall under severe time pressure? Because I am really worried now. यार आपने वो मीम नहीं देखा हमारे chesscore.com ट्विटर पे? कौन सा वाला? जो निहाल के ऊपर है कि मौत से ऐसे ठक करके मैं वापस आता हूँ. पता नहीं, याद नहीं है, देखा होगा. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किक फिल्म से एक फुटेज आता है. ओके. तो वो मीम है. कमिंग बैक, बोर्ड फ्लिप करो और बार का कलर चेंज. पता नहीं भाई, बार का कलर चेंज ये कौन सा है? बार तो व्हाइट ब्लैक ही होता है भाई. शतरंज भाई, ब्लैक एंड व्हाइट पीसेस, ब्लैक एंड व्हाइट बार. थैंक यू फॉर द स्पॉइलर भाई. नहीं, मैंने कुछ स्पॉइल नहीं किया चिराग भाई. मैंने तो एक आपको टीजर दिया, आप जाके बहुत कुछ देख सकते हो उस डॉक्यूमेंट्री में. ऑलराइट, कमिंग बैक, तो रुक B8 खेला है. तो साहिल भाई, आपने लंदन सिस्टम में बहुत साल बिताए हैं, लेकिन ये है कैटलान वर्स. तो इस कैटलान वर्स में आप अगर मुंह खेलोगे तो क्या करेंगे white say? So I think in a dream scenario I would love to play E4. Right now it's not possible. Also black can take on C4 and then play C5. इसका मुझे ध्यान रखना है. And if I open the game once, Prag की game, black ने rook B8 खेला. So rook B8 के बाद I think I think A5 move still makes sense, because if I take on P6 I will have rook A7 ideas. Yes. So वो move तो रहेगी. And बाकी it's all about the bishop on B7. So until black can liberate it, I think white will always be better. But I just feel कि Prag को इतना time use नहीं करना चाहिए, because यहाँ पे I'm sure even if there's a normal move, he'll still be better. Yeah, it's very difficult to kind of go wrong like in such positions. So I think time इतना use नहीं करना कि you kind of then don't have time later on, because Nihal का तो he's kind of forced to do it because he doesn't understand the position that well. But Prag का the position is kind of simpler, so I think he should play a bit faster, and he should. Yeah, A5 right now I think looks very logical to me. Continue the same plan.
तो एक अपडेट देना चाहूँगा, बट बिफोर दैट चैट, आपने ऑब्जर्व किया कि जब भी मैंने साहिल से ये सवाल पूछा तो वो तुरंत बोलने लगे कि E4 ब्रेक अगर मिला तो बहुत अच्छा रहेगा. तो द फर्स्ट थिंग ही इज थिंकिंग अबाउट इज द पॉन ब्रेक, विच इज समथिंग यू ऑल कैन ऑल्सो लर्न, कि जहाँ पे कोई भी पोजीशन में पॉन ब्रेक हो तो एक्चुअली दिस द फर्स्ट थिंग यू शुड कंसिडर. एंड यहाँ पे A5 और E4 दो पॉन ब्रेक्स है, और साहिल भाई ने बोले कि A5 पॉन ब्रेक अच्छा रहेगा, एंड दैट्स एक्चुअली द बेस्ट मूव इन द पोजीशन. तो इफ यू स्टिक टू प्रिंसिपल्स यू आर वेरी क्लोज, और समटाइम्स यू आर लाइकली टू प्ले इंजन स्टॉप मूव्स. तो अब मैं एक अपडेट देना चाहूँगा आपको कि निहाल सरीन के गेम में आप देखोगे कि ही हैज़ मेड सम मूव्स क्विकली. C5 आया, फिर बिशप तो E5 भी आ गया. सो आई थिंक he is very good at picking pace. So Nihal, I think I wouldn't worry so much about this. So this is probably a good time to check the third board. Fourth you mean? I mean fourth board, yes. Fourth board पे यहाँ पे है रौनक साधवानी. Honestly, रौनक की position I'm a bit scared. I am honestly a bit scared because दो बिशप का मैं बहुत बड़ा fan हूँ, and जितनी इन्होंने मेरे को he after I think he left it at F4. And F4 के बाद G6 उन्होंने खेला, but then White went ahead and played G4 also. So White को हल्का सा भी डर नहीं लग रहा है, and I am bit scared for रौनक. ओके, तो मैं 1 मिनट पोजीशन देख लेता हूँ, फिर मैं अपना थॉट्स शेयर करूँगा. 1 मोमेंट. And hello, chat, I'm back. वेलकम क्या बाय. है पोजीशन में भाई? तो दिस इज द पोजीशन. तो थोड़े डरे हुए हैं, मतलब कंसर्न्ड है साहिल टिक्कू जी About the time. अबाउट I've रौनक heard कि निहाल भाई का टाइम ऐसे 1 घंटा डाउन है, तो किसने जुदित पोलगार जी ने कहा था आधा घंटा मतलब हाफ पॉइंट डाउन. 1 घंटे में 1 पॉइंट डाउन मान लेके. अरे वेरी गुड, वेरी गुड. तो somebody is now well informed. वही है क्या यार, यही तारीफ dialogue होता अब वो है कि CEO में बेइज्जती मारेंगे. मेरे को समझ नहीं आता है. ऑलराइट, तो राइट G7 खेला गया है, F5 पॉन अंडर अटैक. तो साहिल भाई, तो जब भी पोजीशंस देखते हैं स्लाइटली वर्स, तो मैं सिर्फ 2 डिवीजन करता हूँ. ओके, स्लाइटली वर्स तो है, बट इज इट ऑफ दैट कैटेगरी वेयर ब्लैक हैज नो मूव्स, और इज इट ऑफ दैट कैटेगरी वेयर ब्लैक्स प्लेज वेरी सिंपल दो ही इज हैविंग अ बैड पोजीशन? तो ये पोजीशन कौन सा कैटेगरी में पड़ेगा? I don't think it's simple for black because, for example, इस पोजीशन में F5 हैंगिंग है. तो रुक F1 आएगा. Yeah, so the thing is, यहाँ पे रुक F1 खेल सकते हो exactly, and I think black would probably play King F7, right? I think that Yes, is King F7, obvious Rook move. to E8. And then, yeah, I'm not. The thing is, मेरे को हरे कृष्णा की पोजीशन से बहुत resemblance लग रही है somehow. I don't know why. Like it looks very similar, not as bad, of course, but I think अभी बहुत pawns है board पे, so long term it will be a bit difficult. As of now, black is fine. I think there's no clear threat because bishop h5 check possible नहीं है, and bishop is not on the diagonal. Like say bishop d1 अगर हम खेलेंगे कभी भी, तो I think वो यहाँ पे I thought bishop d1 might be strong, but उसके बाद सीधा knight f5 आ रहा है. बिशप D1. तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको हरे कृष्णा का गेम तो याद आ रहा है, लेकिन याद आज तो नहीं करना है उस गेम के ऊपर. लेकिन I would like to appreciate Abbas or Nizjad, who has actually made a very good, maybe smart opening choice. क्योंकि if you look at the game that Ronak played against Armenia, it's an end game where he was under pressure, and this is an end game where he's under pressure. So it's a very smart choice in my opinion, कि वो ऐसे ही positions को prefer कर रहे हैं जहाँ पे रौनक एंड गेम पे तो है, लेकिन इट्स नॉट अ पोजीशन वेयर यू कैन प्ले फॉर अ विन, स्पेशली बिकॉज़ तन्मय भट्ट ने अभी एक ट्वीट किया है अबाउट गुकेश. ही इज रिटन टावरिंग ऑल किंग्स लाइक एन एस, रिमेंबर द नेम, इट्स गुकेश. Yeah, nice. थैंक यू फॉर द अपडेट चैट. एंड चैट में क्या चल रहा है एक बार देखना चाहूंगा मैं यार. कौन कौन है हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए? गर्वित जी है और एक्सन जी है, प्रतीक यादव है, चेस फंडा है, एफएम प्रतीक पाटिल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, चिराग सखारे जी है. हेलो एवरीवन. एंड भाई क्या बता रहे थे आप निरंजन भाई? प्लीज कंटिन्यू. हाँ वही तो मैं ये बता रहा था कि ब्लैक का जो ओपनिंग चॉइस है आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, एंड वी आर एक्चुअली इन डेंजर. एंड
ये position I thought कि it falls under the category where the moves that black needs to make are easy because there are just only moves. I feel this is a kind where you don't have a choice between right move and wrong move. It's a decision between choosing moves of similar standard. मतलब आप बिशप c6 खेल सकते हैं, बिशप d5 खेल सकते हैं, किंग f7 खेल सकते हैं. Evaluation drastically change नहीं होगा. So that is what I feel, that maybe he has some easy moves and until a critical moment arrives. Plus I have this advantage in the time. अगर वो आर्मेनिया गेम देखेंगे तो he was a little down. तो यहाँ पे yes, objectively देखा जाए white is better. थोड़ा इंडिया बायस पे देखा जाए I think okay we have some chance to hold. Yeah, I think it should be holdable होना चाहिए. यहाँ पे ये आना चाहिए ना, नहीं तो अपना तो प्लान यहाँ आने का है भाई कि ये भी अटैक कर रहा है अब. Correct. हाँ, but once you play bishop b3 you also give up the a8 like h1 diagonal, so वो भी एक चक्कर है, like उसका ध्यान रखना है. एक्सचेंज करना है हमें कुछ पीस तो एक्सचेंज करना है, लेकिन ये डार्क स्क्वायर बिशप मतलब c5 b6 a5 हमारे 3 पॉन्स. Why are we giving up the diagonal? ये मार के मैं वापस इस पे आ जाऊंगा. तब तक यहाँ पे डेंजर हो जाएगा, मतलब रुक e1 रुक e7. जैसे ही मारोगे बिशप a4 like bishop a4 is I can also avoid it. Yeah, I can play rook k1 temporarily और ये and then c4 c4 थोड़ा रिस्की है. हाँ, ये थोड़ा रिस्की है. and then rook a3. हाँ. So it's a bit risky, like I would think twice like before playing bishop b3 somehow. I like the bishop on c6 because वो king white के king को थोड़ा सा टेंशन लगता है भाई कि कहाँ भाई कितने, like थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है उसको. So we are now looking at India B. I have a choice. India A या India A women's. India A women चलते हैं. ठीक है, let's go. India A women's. Let's start with the game of Grandmaster Koneru Hampi. Okay, draw. Okay, draw, सीधे draw. Okay, draw, सीधा draw. ये तो if this has a result, I'll be very surprised. ये तो draw होना चाहिए. Okay, let me check. I have not checked yet. Yeah, this is a game of Koneru Hampi. So yes, this is the situation. Okay, here is another point I would like to make. कि games के पहले I felt that this game will be a little challenging for us because Alina Kashlinskaya is married to a grandmaster who has been a second to Vishy Anand. So the opening knowledge of Alina Kashlinskaya I thought would be really good. So that is the reason I felt that we may not get an advantage on this position, or we may have to do something extraordinary to to equalize easily. But यहाँ पे I think white is slightly better. What do you think, Sahil bhai? Though evaluation is equal. White is clearly better because black is double pawn है. But usually I think with the bishop perfectly placed on c6 या whenever, even d5, usually I think at this level it should be a draw. One double pawn is not enough. And black has no other problems, absolutely no other chhatra. So I think bishop c6, simple rook c7 even you can keep, and I just don't see any issues. Knight d4, bishop d5, and then knight c6 training off knight. So I think ये most likely rook end game में जाएगा with equal number of pawns, and one double pawn will not mean much. But yeah, only white can win. I think black is not playing to win this because black a double pawn है, and it really lends him ineligible to basically gain any edge here. I have a feeling that she has been told that the expected goal here is half a point. And that is also telling us why she chose this opening, I think. And coming to Chess Funda's comment, Akash G is helping the Indian B women's team, the second Indian team in the women's category, as a second. So he is not playing here. VD is in trouble. वहाँ पे हम आते हैं. Chess facts with Niranjan Bhai. ये पता नहीं क्या है. All right. Let's go to the second game. Let's quickly go to the second में. हरिका गेम में क्या चल रहा है भाई? यहाँ पे क्या खेल दिया गया है? हरिका जी is with the white pieces, guys, and यहाँ तक देखा था हमने. I think knight to c3 was played, knight to e6, king to g2, castles, bishop to e3, and c6 is played by. By the way, can you go back to move 7 once? Yes, bhai, done. Knight fd7. She played it back. मैंने बोला था ना अगर पीछे जाएगी तो पीछे जीतेगी हरिका आज. Yes. And today I think Harika will win. This Yeah, is I also feel really a bad move. Like I don't know, like if you have a choice, you go forward.
चाहे पॉन मर जाए बट कम से कम एटीट्यूड नहीं मरना चाहिए. Knight D7 is a very passive move, and now I think Harika will win this. I'll be very surprised if he win this. Yeah. I think यहाँ पे स्पेस है, सेंटर है, क्वीन साइड पे भी प्रेशर है, किंग साइड पे प्रेशर है, H4 H5 खेल सकते हो. I just don't see any issues. तो लेट्स गो हरिका. She has That a looks very comfortable. very good one. अभी 20 स्टैट्स का सवाल का टाइम आ गया है. बीस्ट भाई आपको मैं हाँ 6 मूव देता हूँ. आप 6 मूव व्हाइट के लिए करिए जो थ्रेटनिंग ना रहे लेकिन प्लान करे कुछ. दिखाओ 6 मूव्स क्या खेलेंगे आप. 6 मूव क्या खेलूंगा मैं? यस. H4 knight G5 Okay. F4 knight to F3 B4. अच्छा तो पहले जो आपने लिखा था वो मतलब बोला था वो ठीक है. F4 और B4 मतलब दोनों साइड से खेलना शायद इस पोजीशन में ठीक नहीं है लेकिन अरे आप तो H4 अलग knight अलग G5 पूछे थे ना, सारा बता दूं क्या? H4 knight G5 पूरा ठीक एक है. ही. H4 knight G5 प्लान ठीक है. आई थिंक आई लाइक हाँ. दिस प्लान. तो इसी के साथ 6 मूव्स. साहिल भाई आपने ये गेम खेला है कभी? What's up? 1 2 3 चेस. 1 2 नहीं, 3 ठीक है. चेस. ये क्या क्या नया नया गेम लाते हैं भाई पता नहीं निरंजन भाई. कहाँ भाई से. क्यों क्या कर रहे हैं भाई निरंजन भाई अपने खाली टाइम में? अरे यही जानना इससे भी अपना चेस का जो अवेयरनेस है बढ़ता है. 1 2 3 ये देखो H4 played on the board भाई. वाह इसको हम एक्सक्लेम देंगे. एक्सक्लेम. B stats मूव लिख दो भाई इसको. H4 B stats मूव. अच्छा एनोटेशन में अब लगा सकते हैं. हमारे न्यूज़ रिपोर्टर को बता देंगे. नहीं भाई नहीं, मैं तो भाई इंजन देख के बोल दिया था भाई. अच्छा तो H4 आनंद भाई is a कह good रहे one. हैं B-Stats the biggest Twitch streamer of India is here. अच्छा भाई ऐसा है साहब. बिस्ट भाई आप मतलब इंडिया के नंबर 1 हो क्या? हाँ गूगल करने पे आता है. करो बिगेस्ट ट्विच स्ट्रीमर ऑफ इंडिया. देखते हैं. ऐसा कुछ नहीं, बस गूगल पे आता है भाई. रियली गूगल के अलावा और कहाँ आना चाहिए भाई? बिगेस्ट स्ट्रीमर ऑफ इंडिया. अरे गूगल पे तो बहुत कुछ आता है भाई, सब सच थोड़ी होता है भाई, सच नहीं मानते यार उसको. अरे हे भाई B-Stats, popularly known by the name Babu, has been officially declared as the biggest and most successful Twitch streamer from India. अच्छा ये तो Although मैंने some would argue that he is the most successful streamer ever to live on the planet, others would simply agree with them. Because why not? वो In my opinion, Babu is a gem for society and probably India's biggest contribution towards the world. I see him as an incarnation of the Almighty himself. अरे ये नहीं ऐसा नहीं. इतना भी My नहीं. dictionary of words would be a tiny speck if I start describing the greatness of this man. No, I actually meant it and I read it. No sarcasm here. And okay, we are having B-Stats who is actually number 1 on Twitch. That's great to know. अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप रुको ना भाई, जब गेम देखते हैं ना भाई, ये सब छोड़ो अच्छा ना ठीक भाई. है. तो H4 के बाद कुछ मूव्स किया जाए. मैं खेलूंगा ब्लैक से और साहिल भाई आप खेलिए व्हाइट से. लेट्स गो भाई, लेट्स गो. तो ब्लैक से क्या खेलोगे भाई? तो हम बंद कर देते हैं इसको और H4 के बाद मैं खेलूंगा H6. आ जाओ भाई देखते हैं पावर ऑफ चेस असिस्ट. इतनी हिम्मत. Why not just go G4? What you want to go G4? F5 I want to play. पता नहीं मेरे को किसी तरह से रुक वाला अपना H5 ओपन करना है. क्या G4? तो G4 खेलेंगे. नहीं भी G4 हो सकता है, या फिर मैं सोच रहा कि सैक मारूं क्या, क्वीन टू D2 खेल के थ्रेटनिंग सैक. हाँ मारो. आप तो बड़ा खुश हो रहे हो भाई. नहीं Let's go मारूंगा. Rook D1. Let's prevent C5 पहले. Okay, D1. I like Rook D1. Just a normal move. टिरिंग बंद कर दिया मैंने. कल वेस्ली सो से सीखा हूँ. अच्छा हाँ, कल सीखा आज खेल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ करेंगे ही फिर. वैसा ही होता है मॉडर्न चेस में. एक आइडिया कल देखा आज खेल लो. क्या खेलेगा टिक्कू? पता नहीं, सोच रहा हूँ. देखो व्हेन यू गेट एन आर्म फसाओ यू प्लेड भाई. खेल दो भाई, एक मूव आपके लिए फिर मैं खेलता हूँ. Let's go. हाँ ऑल राइट ऑन पसों. तो सब सोचो और मतलब जो भी है यहाँ पे पोल करना चाहिए हमें. 1 मिनट डेफिनेटली. तो रुक से अगर मारोगे तो मैं नाइट E5 पे लेके बैठ जाऊंगा. ठीक है, पॉन से मारोगे तो आपका पोजीशन खुल जाएगा. ठीक है, तो आप करो भाई जो करना है आपको. ओके तो ये जरूर सवाल आप आंसर करिएगा और मैं बिशप से मारूंगा. नहीं
रुक से मारूंगा, रुक से मारोगे मैंने नाइट आ By जाएगा the way, I just want to say, Knight to अर्जुन E5. के ओपोनेंट ने पीस सैक कर दिया है for an attack. What? Let's go to that ठीक है game, भाई। भाई quickly let's go। अब आया ना भाई, मतलब ये हुई ना बात, ये हुई ना गेम। और उनके पास 7 मिनट है, अर्जुन के पास 1.5 घंटा है। अर्जुन भाई। के पास। अच्छा ठीक है, ये है क्रिकोर। तो क्रिकोर को लाते हैं यहाँ पे। यस, ये है गेम, यही है हमारे पास जो अवेलेबल कैमरा फॉर ए ग्रुप। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। दाल में कुछ तो डाला है दया। डाला डाला सॉरी क्या होता है भाई? डाला है, क्या बोलने वाला था भाई। नहीं वो ऐसा नहीं है, दाल में कुछ काला है, ऐसा है वो। हाँ। Where is the attack? तो 1 मिनट के लिए आप जो हमेशा करते हो बेस्ट बाय मूव्स को हाँ। अनाउंस करते हुए आप चलाते हो, तो मेरे लिए बहुत यूजफुल रहता है, क्योंकि मैं उसी टाइम डेटाबेस में चेक करता हूँ कि क्या खेल रहे हैं ये लोग। तो कमिंग टू दैट एग्जाम्पल, But just go back and let's check out कि इसने फ्रॉम खेला क्या नाइट है, एफ ठीक है? G4 वहां से शुरू करो। Okay, knight f g4. हाँ, जो 8 मूव है, 8th मूव। यस, Got it भाई। knight f g4 के बाद खेला है भाई e3, A6, a6, Queen queen to A4, a4, g5, Very good. bishop capture on e5, knight capture on e5, long castles, रुक B8, rook b8, Very knight good. to d4, Correct. bishop to e7, bishop to e2। एक मिनट। हाँ। यहाँ पे हमें सबको बताना चाहिए कि नाइट D4 के बाद ब्लैक ने जो खेला है मूव बिशप E7, इसको बोलते हैं नॉवेल्टी। ये कभी पहले खेला नहीं है, इट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग बिशप E7। देन ये बिशप तो बहुत E2। गलत है ना निरंजन भाई? When a grandmaster plays it, it's called novelty. When I play, it's called blunder. मुझे वो बिग बॉस का मीम आ रहा है, याद आ रहा है। मैं खेलूं तो ब्लंडर, सीएम खेले तो नॉवेल्टी। अरे बिशप E7 इज अ सिंपल डेवलपिंग मूव, इतना खास मतलब ड्रास्टिक चेंज तो नहीं है। बट लेट्स गो फॉरवर्ड। बिशप E2, क्वीन B4, Bishop e2, queen b4, क्वीन queen to C2, c2, नाइट इनटू C4, knight into c4, a3, A3, knight capture on knight a3। A3, ओह, B3, इधर सैक मार दिया उन्होंने। किस लिए मारा ये सैक? कुछ नहीं मजबूरी होने में वाला, मारा king है to आई d2। थिंक। ओह, Because टाइम ही मजबूरी नहीं में है, क्या? टाइम ही नहीं है, he went for it. He went for it, but भाई उनके पास अटैक में लाने को पीसेस ही नहीं है ना, दिक्कत तो वो है। वाह। How will he do anything? बिश भाई, आप अटैक के बारे में कहाँ से सीखे हैं? बोल दो Naturally, बीस बार, बता दो यार, natural मैंने में सिखाया, यार। बोल दो कोई बात। I'm a natural। नेचुरल भाई हाँ देखो, अभी यहाँ पे सिर्फ ये बिशप आने को है भाई, और कुछ नहीं आ रहा है। ये रुक नहीं आ रहा है। ये बिशप का आने के लिए भाई 2 मूव लग जाएगा आना है तो। तो प्रेजेंट को Opposite- समझने के लिए आई थिंक वी हैव टू गो इनटू द पास्ट फॉर अ लिटिल मोमेंट हियर। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ही हैड टू मेक अ डिसीजन एट दिस पॉइंट। क्वीन C2 पे अर्जुन एरिगिसी C4 पॉन को दे रहा है, तो ब्लैक इसको इग्नोर करके B5 भी खेल सकता था, लेकिन But he decided to take it. तो when he decided to take it, he knew that on Yes. A3 he is forced to take on A3 because यहाँ Yes, पे yes. क्वीन C5 पे he has to suffer because of knight E4। हाँ, knight e4। तो मार दिया, तो दिस इज द पोजीशन। D5 आ गया है, पीस Okay, डाउन। उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो सैक नहीं था, वो एक तरह से भाई मजबूरी वाला सैक था, हाँ। एक तरह से कहा जाता है ना। करेक्ट। तो व्हाट मूव वुड यू प्ले बीस बाय विदाउट द इंट्यूशन? अरे यार ये क्या Without है the भाई? intuition. मतलब मैं किसी तरह से किंग सेव करना चाहता हूँ, या फिर उसके ऐसा उसको मौका ही नहीं दे सकता उसके पीसेस आए, तो ऐसे क्वीन को वापस भेज दूं पीछे, ऐसा कुछ। अच्छा, तो डायरेक्टली बताओ रुके बाद। या मे बी अच्छा, आप भी ग्रैंड मास्टर के भाषा में बोल रहे हैं baby। अरे ये क्या है? Intuition to English translator. नहीं भाई यार, Invented by Bliss intuition Chat. नहीं है भाई, मैं सच में मैं Okay. बता रहा भाई। लेकिन क्योंकि और क्या करेंगे, तुम तो चाहते हो ना कि तुम्हारा वो कि अटैक ना आए मेरे पे भाई, करेक्ट है कि नहीं? और मैं चाहता हूँ कि ये सब रुक निकल जाए यहाँ पे, और वापस मेरा किंग ऐसे यहाँ पे आराम से सेफ्टी में बैठा रहे अकेले, तो chill करते हुए। लेकिन मेरे मतलब वाइट का एडवांटेज प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे वाइट को पीस एक्सचेंज करने के लिए स्कोप ही नहीं दिख रहा है। साहिल भाई, आपके क्या ख्याल है इस पे? स्कोप तो नहीं है, पर उसके हाँ, पास but ये the thing अटैक is- का भी स्कोप है ना। हाँ, and the thing is, honestly, White's king is looking not that uncomfortable. मतलब I can play Rook D1, King E1. अब वो H5, H4 भी खेलेंगे, मतलब कितना खेलेंगे भाई? कहाँ अटैक करेंगे भाई? वो कहाँ मतलब अटैक करेंगे, पीसेस ही नहीं है।
उनके पास नाइट नहीं है ना. नाइट इज अ ग्रेट पीस टू C4 E4 स्क्वायर्स पे. नाइट नहीं है ब्लैक के पास. एंड बिशप को समझना बड़ा आसान है. स्ट्रेट घूमता है भाई, स्ट्रेट. तो somehow I think white is fine. and 4 मिनट है उनके पास, क्या ही कर लेंगे उसमें, बहुत मुश्किल है. एंड उनका पीसेस भी आ नहीं रहा है ना यार जल्दी से गेम में. क्या अटैक करे, कहाँ करेगा यार. ये तो मतलब सिंपल सा बात है, इसके इंजन का जरूरत नहीं है यार. तो यहाँ पे आस्था जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आई थिंक वी शुड गिव आवर पर्सपेक्टिव्स, बीस्ट भाई और साहिल भाई. रॉजर फेडरर बोल रहे हैं बॉसिंग द स्ट्रीम. अरे नहीं भाई, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं क्यों बनूं बॉस. आस्था द्विवेदी का क्वेश्चन है, किसी तरह दीपेंद्र ठाकुर ने आस्था का क्वेश्चन को आंसर कर दिया है भाई, आप पढ़िए. आस्था डिपेंड करता है, विदित किंग से अटैक भी कर देते हैं. अच्छा 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 समझ गया मैं, अब समझ गया. परी गाइस, परी. But I feel that the king doesn't represent just the king himself, he represents the entire team. So that is just a reflection that if you save your king, you save your team. All right. तो अभी मेरे को तो रुक B1 आने का मन है, to be honest. रुक B1 तो ला लेते, रुक B1, ठीक है. तो मैं खेलूंगा B5. You have to, you are forced. You have to, you are forced. बहुत कुछ सीख गए आप. GM language. What there should be. अब क्या है, किंग को पहले सेव करूं या कुछ है अटैकिंग सोच रहा हूं मैं. हाँ, किंग वॉक कर सकते हैं आप. Do I need to do a king walk? Is the question. अच्छा. Chess assist is thinking कि मैं मूव बोलूं या ना बोलूं. नहीं, I'm looking at other games, trying to see कि कौन क्या चल कर रहा है. Knight to A4 very ऐसे tempting move just to show off, but नहीं. हाँ लेकिन कुछ इवैल्यूएशन मार दे. आपको पता है भाई, रश्मि ने कहा भाई आज हम स्विमिंग जाएंगे. But it's ऐसे कोई बंदा खेल रहा है just to show off. समय में होता तो खेलते था. पर्पस नहीं है भाई, पर्पस नहीं मूव. या पर्पस नहीं है. I know. That is playing for the audience. Correct. No, that's a show off move, bhai. All right, so this game will keep going on, I think, and it's a good time to again but jump to. किंग का क्या मूव है, एक सेकंड. नहीं किंग का मूव, मतलब किंग का बोलते हैं. I think king even खेल सकते हैं. किंग इवन वही प्लान है कि किंग को आराम से आ जाओ. Yes. नहीं कंप्यूटर doesn't agree though. तो कंप्यूटर से क्या एग्री करता है वो देख लेते हैं एक बार भाई. आई जस्ट वांट टू क्यूरियस कि यहाँ पे क्या मूव. अरे 20 भाई को बता दे दो. मतलब अरे मोर बोल दिया आपने. साहिल भाई क्या हम टेस्ट करते ना. मैं ये सोचा, but ये नहीं. How is it working? I don't know. Knight B5. I was thinking of Knight B5. Bishop मैं B5, सोच रहा था, पर मेरे को नहीं समझ में आता कि how is it working. इस नाइट से मारो, नाइट CB5 से मारो. Okay. AB5, नाइट B5. अभी नाइट C7 का कुछ ट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल क्वीन अगर D7 जाएगा, then there is already I think Knight C7 and you pick up no rook A7 also, and rook on B8 is hanging. Okay, this is a tactic I also missed. I'm sorry. So B5 is not. ये तो crazy था. You missed it. I missed it. Yeah. Sorry नहीं चलेगा. Sorry. But Arjun will find it because he's Arjun. भाई क्या अर्जुन के ओपोनेंट को देख सकते हैं क्या अभी हम लोग? अर्जुन विल फाइंड इट. या आई थिंक सो अर्जुन विल फाइंड इट. वो बहुत ही मतलब लास्ट में आप देख सकते हैं. तो उसका मैं बड़ा कैमरा एक बार दिखाता हूँ सबको. हाँ. तो ये है बड़ा कैमरा व्यू जो आपके सामने आएगा इन 5 4 3 2 1. तो जो थर्ड प्लेयर है वही है क्रिकॉर. chess.com पोर्टुगल के लिए वो काम करते हैं. By the way, Srinath पीछे है. Looking at the games, always there. Yeah. Srinath always there. Caruana is also wearing the same jacket and watching all the and games. He's also losing today, by the way. He's again worse. I think Caruana के अच्छे दिन खत्म हो गए यार. He's done. नहीं. He's not. No, I don't think he's done because I have seen one tournament, one bad tournament. one bad, 2 bad, 3 bad भी हो सकता है लेकिन class is permanent. 3 bad, 4 bad, 5 bad was that, but he's still fighting. Yeah, class is permanent. I mean, Fabiano's class is अलग, completely at a different level. And what is happening in the visit scheme, भाई? Do we have any update? हाँ, हमारे पास updates हमेशा होते हैं. बस गेम को खुलने का इंतजार करना पड़ता है. अच्छा. Yes. तो ये visit game is very low on time. 24 minutes है भाई. हाँ. 30 minutes का difference है. तो first let us ask what Sahil bhai thinks about the position.
Honestly, I think it's very obvious. VD has, went for this G5, whatever. He's really trying to win. Yeah, matlab, I think he's definitely not going to sit around and hope कि कुछ आ जाए. So he's trying to create complications, and it might work in his favor, might not. And यहाँ पे I think he has an important choice, right? Do you take on G3 or do you take on E5? I think I'm not even sure because Bishop मिल रहा है तो लेने का मन तो करता है. But then that knight will take on G3, come to F5, H5, so it's not so comfortable. And so maybe just taking the pawn on E5 is sensible, like D takes E5 and just keeping it simple. So actually, I wish you would have asked me this question. So it would have been a test for me. But Sahil bhai, since I have seen the move, it's a test for you. After D takes E5, don't you think White can just capture knight into E5? Knight G3? D into E5, knight into E5, knight into G3, queen into D7. तो हम दिखा देते हैं चैट को कि हम ये चर्चा कर रहे हैं. ये भी खेल सकते हैं bishop into E5. But I am going to first take knight into E5 and test you here. Okay, knight G3, queen D7. The test of chess assist. So here I am sharing a secret. This is how top players also trained. Queen F6. There is one person with the engine. He is trying to find the moves against the player who is training to see whether he is able to match knight moves. capture on E5 में क्या दिक्कत Bishop क्या है? F2, queen F6 both look very interesting to me. Knight capture on E5 में दिक्कत क्या है मेरे को ये तो बताओ. If you take this knight, there is this, then there is फिर मैं रुक से ले this. लूँगा. हाँ, ठीक है. So आप अगर pawns count करेंगे, तो magically दीपेंद्र भाई ने क्या कुछ भी यार. दीपेंद्र क्या? Anyways, yeah. So I was thinking bishop F2 after queen F6. Both look very interesting. अरे नहीं समझ में यार मुझे कुछ भी क्या हो रहा है क्या? कुछ नहीं. Eh, but then I can play ना rook to D2. तो rook to E2 है उसमें. Rook to E2 है आपके पास. And then rook E to D2. तो क्या है? pawn अब तो हूँ मैं. pawn तो मैं ले लूंगा यार. pawn तो ले लूंगा. कितने देर तक बचाओगे pawn को? कौन सा pawn को लोगे आप? यार F2 वाला pawn लूंगा ना यार. वो पिंड है. आप खेलो तो भाई rook to D2. हाँ तो आप कौन सा स्क्रीन मतलब इंट्यूशन यूज कर रहे हैं क्या? rook E to D8. ठीक है तो मैं भी आता हूँ फिर. चलो फिर चलते हैं. आपका इंट्यूशन है, मेरा इंट्यूशन नहीं है भाई. मैं खुद से खेल रहा भाई. अच्छा तो I mean this position I think I don't know whether Vidit has seen this but I don't see winning chances for black here. So ये क्या दीपेंद्र भाई ने क्या बोला क्या है? मेरे को तो चैट में दिखाई नहीं दे रहा. अरे मत देखो ना यार, आपको सब देखना है भाई. ठीक. आप 20 की रात की स्ट्रीम देखते हो क्या? नहीं, मैं एक बार देखा था. हाँ फिर नहीं समझोगे. अच्छा. फिर नहीं समझोगे. फिर D5 I think is a move already played. So D takes E5 पे ये जो वेरिएशन मैंने बताया it's a possibility. So that is one I think one drawback here, that the best result is a draw here. Coming back, next game in this category is of बहुत सोचना पड़ रहा है आपको. नेक्स्ट गेम वो यूज रहे हो भाई. मतलब हमने हरे कृष्णा के गेम देखा नहीं. So I was thinking देख लिया हमने. So we have to go to Hare Krishna and Sasikiran. Let's go. Yeah, better when I last saw it. His opponent had played knight D2 and I think he was better, but maybe he missed it. So why is knight D2 a mistake? Now let me first switch off the engine and let me think. I think queen to H4 is the idea, to basically open G3 for a cute bishop on B7. So anybody would play queen H4. There could be some reason why Sasikiran has rejected this move. I'm trying to find why. So queen H4, does this remind you of a classical game, Sahil bhai? I mean every king side attack ever. No. I mean Alekhine का एक particular game है जहाँ पे he plays F5, then he plays knight E4, and then he goes rook F6, rook H6. So all those. यहाँ पे मैं उसका knight मार के queen G5 क्यों नहीं आ रहा?
नाइट मारते हो तो क्या होता है, ये बहुत लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं भाई। बीस्ट भाई आप कैटेगरी कर लो, ये जो आपने गलती की है अभी नाइट इनटू नाइट मारने की, ये है गलती ऑफ एक्सचेंजेस। सो जब भी आप एनालाइज करते हो तो अपना पैटर्न ढूंढना जरूरी है। तो नाइट अगर आप मारते हो D2 तो वो सोया हुआ बिशप जाग जाएगा। मेरा भी तो सोया बिशप जाग रहा है ना भाई। हाँ लेकिन इतना भी फायदा नहीं हो रहा है उससे, क्योंकि बिशप F1 वापस जा सकता है ना। तो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड नॉट डेलिबरेटली एक्सचेंज अनलेस इट इज फेवरिंग यू इन अ वेरी कॉन्क्रीट वे। तो knight D(f)(6 is what Grandmaster Sasikiran has played, but I would have played queen H4. Let me now check whether this is a correct move. Yes, queen H4 is a correct move, and the point is on G3 you just come back, just provoking whatever Sahil has just said, that we are giving this gift to our bishop, that this diagonal is opened. All right. Knight D(f)(6, F3, Knight D2, Bishop D, Queen takes D2. ठीक है। तो Beast Bhai and Sahil Bhai, is there any pawn that you don't like for black? F5 I guess. तो अगर चांस मिले तो हम F7 पे रख सकते थे, लेकिन यस प्रतीक भाई, मैं ये ओलंपियाड खत्म हो जाए तो मैं वो रिकॉर्ड भी तोड़ने की कोशिश करूंगा और ट्विच स्ट्रीम भी इनका देखूंगा। आपको 4 तारीख से पहले करना था भाई निरंजन भाई। हाँ भाई, कहाँ मिला मेरे को, समय ही नहीं मिला। क्या मिला भाई, इनसे टूट ही समय रहा तो भाई, एक विषय से रिकॉर्ड बासी भाई। है भाई, यू कैन गेट समय आल्सो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मतलब सोशल मीडिया करना होता है, सबको अपडेट्स देना पड़ता है, स्ट्रीम के लिए तैयार रहना पड़ता है। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड टाइम। Coming back, Queen takes D2. This position is, I think, level in my opinion, because I have a bias. That's why I'm saying level. I think white is slightly better. Sahil bhai, you agree? Beast bhai? I agree भाई, you have a bias. Yeah, that's true. I somehow want this position to be a draw or a win for black. The G3 god, I want him to win. All right. तो G3 god का स्टोरी तो साहिल भाई आपको पता होगा। नहीं, जीती का स्टोरी क्या है? बीस्ट भाई आपको? हाँ मेरे को तो पता है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। ऑलराइट, नेक्स्ट गेम है हरिकृष्णा का, ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णा पेंटला। सो इन दिस गेम ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णा पेंटला इज वाइट। हाँ, ऑलराइट, rook b8, this is the position, white to play. What would I do as white? अरे इसको डिसेबल करते हैं। Let's see. Okay, rook b8. Sahil, your turn as white. What would you do? I don't like the bishop on h5 honestly, so I want to move it. Bishop f3 makes logical sense. Bishop f3 Also पे bishop b7. So maybe knight e4, knight fc5, something like this then. Knight Bar e4, doesn't like it queen too much. g6, knight c5. Yeah, maybe. बहुत ही फास्ट मूव्स कैलकुलेट कर चुके हैं साहिल भाई। ये bishop बहुत awkward है, कर क्या रहा है वहाँ पे भाई बस। वेरी गुड। आप लोग सब देख सकते हैं कि साहिल भाई अपने पीसेस से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, कहीं और जगह ले चलते हैं। इसको बोलते हैं मैकागोनोस प्रिंसिपल, दैट यू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ योर वर्स्ट प्लेस पीस। बट बी स्टार्स क्या बात करते हैं अपने स्लीपी बिशप से, वो भी मुझे जानना है। भाई ये क्या है स्लीपी क्या बिशप भाई? दिस पोजीशन आई डोंट थिंक, आई मीन c8 बिशप तो आराम से डेवलप होगा, तो सब लोग जाग चुके हैं यहाँ पे, कोई स्लीपी बिशप तो है नहीं। कमिंग बैक, जाग चुके हैं। अच्छा ओके। रूक e1, रूक हार्ड e8, फैक्ट्स बाय निरंजन भाई। ओके, बिशप मैं पहले ही अटैक कर दूं ये खेल के, तो कहां है भाई वाइट क्यों नहीं मूव कर पाया ये? नाइट e4 पे, या दिस मेक सेंस। क्वीन h4 पे g3 भी है हमारे पास, वेरी गुड। तो क्वीन कहाँ पे जाएगी? क्वीन f5, आई थिंक क्वीन f5 इज अ मूव। यस, क्वीन f5, यस। एंड अब हम लोग सीधे आ जाए यहाँ पे। तो वहाँ पे किसी को आप अटैक ही नहीं कर रहे हो, किसको अटैक कर रहे हो? मेरे को अटैक करने जाने नहीं, मैं तो भाई बस जा रहा था। नाइट d6 अपने काम मतलब पे काम वॉक के लिए रखने जा में। रहे हैं आप, कुछ खरीदना नहीं है आपको। नाइट टू d6 बोला था। हाँ
तो मेरे को वापस यहाँ वो- पहुंचना था और मेरे को यहाँ जल्दी पहुंचना था, तो मैं बस वही जगह खोज रहा था कैसे जल्दी पहुंचूंगा, दैट्स इट। अच्छा, तो मैं तो वहाँ मेरे पे को जाने का एक एडवांटेज है कि D5 D6 D7 को आप एंड अब सपोर्ट कर देखो सकते वही हैं। पोजीशन है जो कि वो कह रहा था, बट यहाँ पे मेरा बिशप सोया हुआ नहीं है। नहीं 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 मतलब मेरे को उसका उसका बिशप इस डायगोनल पे नहीं आया, और मैं आराम से बाद में जहां भी चाहूँ इसको लेके जा सकता हूँ, तो आई थिंक ये दिस इज द फास्टर वे टू रीच हियर। मैं तो वही सोचा था फर्स्ट थॉट में। So that means white has pleasant options and many of them, which tells us I think अच्छा, your मैंने black is फाइंड good. कर दिया तो प्लेजेंट ऑप्शंस, ये क्या हाँ बेइज्जती है मतलब निरंजन भाई, नहीं नहीं कि वैसा कोई भी नहीं, खोज सकता है। नहीं ये कोई भी खुश ऐसा नहीं है कि मैंने भी एक मूव बताया, बीस्ट बाय भी बताया और साहिल भी बताया, और सब मूव्स अच्छे लग रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णा हैज़ अ लॉट ऑफ प्लेजेंट ऑप्शंस इन द पोजीशन, तो जिससे हमें पता चलता है कि ही इज इन अ वेरी गुड स्टेट राइट नाउ। तो यहाँ पे हमें चिंता करने की कोई एकदम बात इज्जत नहीं। ही नहीं यार मेरे मूव्स का भाई इधर। अरे नहीं नहीं, इज्जत दे रहा हूँ मैं आपको, मूव ये आपने कह रहे बताया हैं है। कि अरे ये तो इजी था खोजना, इनडायरेक्टली आपने यही बोला है नहीं निरंजन भाई, नहीं ठीक नहीं है ना? नहीं 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 सब सुन लिया मैंने भाई, देख नहीं लिया नहीं भाई। नहीं, मेरे इंटेंशन तो कभी भी ऐसा नहीं होता, डोंट वरी। कमिंग बैक, तो रुक B8 तो हो गया, दिस वी हैव सीन एंड दैट मींस वी हैव कंप्लीटेड द गेम्स ऑफ इंडिया ए एंड आई थिंक ऑल द फोर लेट्स गो क्विकली पोजीशंस। टू गुकेश देन। गुकेश का हमने देखा है, हमने वुमेन्स का गेम अभी तक मतलब अरे स्कोरिंग नहीं रुको देखा भैया, है। गुकेश गुकेश का के डेड यहाँ ड्रॉ बाय द 9 और वे, 9 हो रहा है डेड भाई ड्रॉ है अब। भाई। ठीक है दिस इज द भाई, ड्रॉ। एक मिनट। चैट, आज गुकेश का 9/9 स्पॉइल होने वाला है मुझे लग रहा है। आई डोंट थिंक दिस इज विनेबल या लुक्स डिफिकल्ट। वोट लेट मी चेक बाय। ही इज गुकेश गाइस, डोंट वरी। ठीक है भाई, आई थिंक गुकेश। बिकॉज बहुत सिंप्लीफाइड पोजीशन है, 1 मे वी 2 कैन 3 गो थ्रू 4 कैसे 5 पोजीशन आए एक बार, बट आई थिंक व्हाइट हैज मोर स्पेस इन द सेंटर बट ब्लैक हैज मोर स्पेस इन द क्वीन साइड, सो प्रीटी बैलेंस्ड। चले चलो, नाइट C6 रुक D6 सब ठीक है। Rook ओके D6, long ओके, castle, rook H1, king to C7, F4, rook captures, rook captures, king captures, and king to D2. Yeah, both. किंग D2। Yeah, अच्छा, यहाँ पे ब्लैक क्या खेलेगा? उसको भी किंग लाना होगा, कहाँ से लाएगा? हाँ, king C7, then I don't know, pushing the pawns the king side. Not sure exactly कहाँ रखने चाहिए pawns, but yeah, it's just मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब simplify हो चुकी है position। इस level पे कोई गलती करेगा इतनी खतरनाक कि Mamedyarov making a mistake in this position looks very unlikely. Gukesh in his 33-65 performance making a mistake, very unlikely. So this one should be a draw. Both have enough time on the clock too. And दोनों टीम इसलिए दोनों खेल रहे हैं because they also want to see कि बाकी बोर्ड पे क्या रहता है, कल को हमें पुश ना करना पड़े। If this was like a last round of a normal open tournament, तो ड्रॉ कर चुके होते हैं दोनों, I think. अच्छा, तो ये रहे साहिल जी के थॉट्स। आई थिंक यस, ऑन अ नॉर्मल डे दिस इज व्हाट वुड हैपन। मैं थोड़ा डिफर करूंगा अपने थॉट्स में कि आई एम सीइंग वेयर गुकेश कैन क्रिएट चांसेस, हाउ कैन द विन कम टू गुकेश। तो अगर हम ऐसा नजरिया से देखेंगे तो देर इज वन पॉसिबिलिटी वेयर Mamedyarov could overpush because of his majority on the queen side. That is one way in which Gukesh can get his chances. Number two, Gukesh could also get chances if he is able to play G4 and F5 and get his E pawn as a passer. This is one possibility. And Also, if he could basically, let's say, put the king like on E3 D4 तक लेके जाएं, and then have that tempo kind of thing जहाँ पे he puts all his pawns on dark squares, plays A3, and then sometimes even just takes on C6, Yes. has a good night against bad bishop. Like Very good black idea. black ने कोई pawn अपने commit नहीं कर रहे हैं, that's the main issue here. If he plays G6 H5, then suddenly that plan comes into fruition. So I think love this plan. Very good plan. But the only black ये pawn मुझे committed नहीं है अभी. If he plays G6 now, then I would start considering seriously कि हाँ G6 खेल दिया है, सारे pawn light square पे रहने वाले हैं. He's not going for S6 G5 या just H6. So I think that plan is kind of interesting. So we'll show this plan, so people will also know the power of the knight versus bishop endgame. So I will make some moves. Don't take these moves literally. These are just null moves, just to create that position. So this is an ideal position, which is my favorite concept. To take a look at the ideal position that you want.
Okay, so this is a position that white could be aiming for. This is like, of course, 1 out of 100% chance of actually happening. Less than that actually. But Yeah. it's a nice ending to check. So you think here there is a goal for white to create a passer. So knight should come here. I'm not sure. Like, exactly. It depends also. If the pawn endgame, what the valuation is, I will not risk it. So knight can come to d4. It can come to b4 in some cases. Even g5. Like, totally depends. So this knight is like, मतलब बहुत कूद रहा है, and it is good. This knight can hop to many vital squares, and I really like this plan. To play bishop into c6 and get the knight to d4. Overall अगर हमें summary देखने को मिले इस endgame का, this Sahil, what he calculated is that you stop the rolling of queenside pawns first, so that we can then think about our play. So stopping your opponent's play is important here. I have a feeling Gukesh has long-term chances. This is my feeling right now. B stats. हाँ भाई. Long-term chances or not good enough for win, equal, क्या है आपका मानना है इसमें? पता नहीं भाई. भाई इतना सारा हमने डिस्कस किया, अभी तो आपको थोड़ा तो आइडिया आना चाहिए था कि what exactly is happening. I think long-term chances हैं गुकेश के, and Smartly. I think कुछ ना कुछ पोजीशन में आएगा, drastically changes आएगा. Once we'll push g3 a3 and अगर उसने ओवर कमिट कर दिया by playing g6, तो फिर बिशप और नाइट एक्सचेंज करके अपना नाइट बहुत पावरफुल हो जाएगा. दिस नाइट क्या कॉपी पेस्ट मारा है. and then this knight can actually route from f3 to g5 and attacking both the pawns on f7 and s7, and it can be very difficult for Mamedyarov to defend, I think. अच्छा ठीक है भाई, ठीक है. Can we quickly go to the next game and see Nihal Sarin time pressure पे क्या कर रहा है? ठीक है, let's go to Nihal Sarin. He's clearly worse, chat. He's clearly worse. And he's also very low on the clock. So Nihal Sarin under huge pressure right now. He has 22 minutes. His opponent has 50 minutes. And the position also looks very awkward because he has some chances. It's not like a one-way street, yeah? So it is double-edged. But the main problem, according to me, seems to be the d4 pawn. Like, it's very difficult to defend. And it's likely to fall. And Niranjan bhai, तो I मैं have a question for you. हाँ बोलिए. नहीं, I have a question for you. I play a game called as Make a Wish. So as Nihal Sarin, what position would you wish for? ठीक है? And don't ask for ऐसे mate in one and ये सब, ठीक है? So, let's go Niranjan. Let's see what you have in your mind. Let's go. तो जब भी मैं एक नया पोजीशन देखता हूँ जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं पहला सवाल यही पूछता हूँ कि करना क्या है, मेरे गोल क्या होने चाहिए. तो द फर्स्ट मूव आई एक्चुअली वांट टू प्ले इज बिशप e6, लेकिन हनुमान जंप यहाँ पे वर्क नहीं होगा. नाइट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग दैट. सो आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस नाइट ऑल्सो. तो आई हैव मेनी थिंग्स टू डू एंड वेरी लेस टाइम. मुझे आप कितने मूव्स दे रहे हो? जितने आपको चाहिए. You are making a wish ना भाई? Then wish it. अच्छा ना आप गेम खेलना अगर भूल गए विश क्या? कर ही रहे हो तो भाई कोई और अच्छी विश करो भाई. पोजीशन तो वैसे भी आती जाती रहेगी. अच्छा, तो आई थिंक माइक्रोवेव में खाना पक चुका है किसी का. नहीं पावर कट है. आई मीन पावर कट 1 बजे से हुआ है, लेकिन आई डोंट नो नाउ इट्स बैटरी इज डाइंग. Oh, इन्वर्टर बंद होने वाला है guys. Thank you so much for joining everyone. Please like the stream. एक लास्ट क्वेश्चन क्या आप साहिल टिक्कू पूछ सकते हैं कि गिव क्वेश्चन तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई. Can you ask गिव अवे क्वेश्चन साहिल टिक्कू? Let me see what's happening. हाँ आप देखो तब तक साहिल टिक्कू आप पूछ दो भाई. हाँ मैं पूछता हूँ भाई. चैट ये हमारे कुछ अंतिम समय हो सकते हैं आपके साथ. We will miss you a lot. Please go ahead and ask the question साहिल टिक्कू. मैं पूछता हूँ. So I know the question. I'm checking the answer right now. Give me 1 second. So chat, the question is, तो chat, are you ready? Ready हो के नहीं हो भाई, मुझे ये बताओ यार. Are you ready chat? They are ready. I am ready. Let's go. ठीक है. The question is, okay, एक second. Let me confirm the answer first. I have a clue exact कितना है, but
It's important to confirm chat facts. हाँ. So इस ओलंपियाड में चैट तुम्हें पता है कि भाई बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, बहुत सारे कूल लोग खेल रहे हैं, बहुत सारे क्यूट लोग खेल रहे हैं. There's a 8-year-old girl also playing from Palestine. What is her rating right now? Ooh, what a question, Sahil. What is her rating? जो पहला बंदा बताएगा, he gets a diamond membership from the soon disconnecting stream chess.com India. Let's go. Let's go, guys. विशी आनंद हर चीज का आंसर नहीं होता, चाहे चाहे जो भी तुम्हें कोई बोले. हर चीज का नहीं होता यार, चाहे एटलीस्ट इधर तो नहीं होता है. क्या है उनकी रेटिंग, कौन बताएगा? 8 रेटिंग नहीं हो सकती है, 1000 तो मिनिमम होती है. 2684 1680. नहीं भाई, इतनी खतरनाक नहीं है. नहीं रुशिल भाई, बहुत क्लोज. यस, अनुज श्रीवास्तव भाई बिल्कुल सही. 1442 इज हर रेटिंग. कांग्रेचुलेशन अनुज श्रीवास्तव भाई. बहुत बढ़िया, इतनी छोटी उम्र में इतनी बढ़िया रेटिंग है उनकी. एंड अनुज भाई बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर उन्होंने बताया. 14,000 रेटिंग नहीं हो सकती अगर पूरी पैलेस्टाइन की टीम भी मिला दें. सो वेरी अनलाइकली. लाइट ही ऑफ कर दिया भाई. निरंजन भाई, आप अनुज श्रीवास्तव का नाम नोट कर ले प्लीज. अच्छा, आप क्या करेंगे भाई? मैं ही कर लेता हूँ भाई. हाँ, ट्विटर पे मुझे भेज देना आप. 1 मिनट. टू 2987 लिख रहे हैं जयराम जी. नाइस. ये अनु श्रीवास्तव विवेक देसाई को सब्सक्राइब किया हुआ है. ओके, कैंसिल कर दे क्या? और समय रहना और मेरे को नहीं. आई थिंक वी शुड नॉट गिव दिस गाय भाई अ डायमंड मेंबरशिप भाई. ओके, क्या सवाल क्या था भाई? चेस से सब्सक्राइब कर लो, मैं दे दूंगा मेंबरशिप भाई. भाई साहब, इसने नहीं, हमें विवेक actually- देसाई को सब्सक्राइब किया, हम लोग को नहीं भाई. चेस हमें असिस्ट को भी और नहीं किया भाई. मॉडरेटर्स प्लीज पुट द लिंक ऑफ चेस असिस्ट एज वेल एज बी स्टैट्स इन द चैट. उनका भी चैनल भाई डाल दो. नहीं जोकता भाई. नहीं ऐसे वो तो मैं आप समझे नहीं भाई. जोक है भाई वो. ओके, अनुज तो श्रीवास्तव भाई, आई नीड आंसर्स. ये नहीं भाई, कुछ नहीं मिलेगा आपको. नहीं हो गया आपका. तो इफ यू आर आस्किंग फॉर मूव्स, देन f6 is one move I would play. King h8 second move, rook g8 third move, knight b8 fourth move. So can you make arrows while doing it so that our audience can also understand what you are trying to say, Niranjan bhai? 2 3 4 5 6. अनुज भाई कह रहे हैं चेस असिस्ट को किया है भाई. अभी किया होगा यार. नहीं किया भाई, मैंने देख लिया भाई, देख लिया. हाँ, ऐसे नहीं भाई. विवेक देसाई को किया था भाई, और प्यूडीपाई और ये सब भाई समय को भी नहीं किया भाई. अपने को भाई तो बिल्कुल प्यूडीपाई क्या है भाई? क्या फायदा भाई? 100 मिलियन वाले को सपोर्ट करने वाले को भाई कैसे कैसे दे दे मेंबरशिप यार. तो चिराग भाई, स्ट्रीम तो खतरे में है. 1 बजे से इट्स 4 आवर्स का बैकअप रहता है यूजुअली. सो आई थिंक 1:30 से ऐसा कुछ पावर कट हुआ है. तो लेट्स सी, लेट्स प्रे दैट द पावर इज बैक. निरंजन भाई, वी विल मिस यू यार. भाई अगर वो गए तो स्ट्रीम भी बंद हो जाएगी भाई. हाँ, तो मिस नहीं कर सकता क्या ऐसे? मिस कर सकते हैं यार. ऑल राइट. तो अब आई मीन लेट्स गो टू अदर गेम्स. सो निहाल सरीन का गेम तो मुझे लगता है इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, अ लिटिल बियॉन्ड माय हेड आल्सो एट दिस मोमेंट. बट आई हैव जस्ट साहिल सर, बीच भाई, निरंजन भाई, मैच से पहले प्लेयर्स का चेकिंग क्यों होता है? व्हाई डू दे चेक ईयर्स आल्सो? क्योंकि हो सकता है कि ईयरफोन्स पहन के कोई बैठा हो, हाँ, छोटे से माइक्रो ईयरपीस हो, या पता है फिर बीस भाई, बहुत कुछ हो सकता है भाई. आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है. हाँ, अभी 1 सब्सक्राइबर बढ़ा है मेरा. ये अनुज भाई थे भाई. अरे क्या हुआ सब्सक्राइब? नाइस भाई. विवेक देसाई को किया भाई इसने सब्सक्राइब. आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू गेट बैक. कैन वी आस्क अनदर गिव अवे क्वेश्चन भाई? नहीं, आई थिंक इट्स फाइन. अभी के लिए जान देते हैं, ये गलती इंसान से ही होती है. थैंक यू रुशिल. होती है क्या? तो चेस असिस्ट और बी स्टैट्स के यूट्यूब चैनल्स आप चैट में देख सकते हो. अगर आप इन दोनों को नहीं जानते हो तो डेफिनेटली आप इनको जान पाएंगे व्हेन यू सब्सक्राइब टू देयर चैनल. सो कमिंग बैक, जान तो गए होंगे आई थिंक आज कि भाई कुछ नहीं आता मैं. अरे अगर नहीं जाने तभी करेंगे सब्सक्राइब भाई. तो वी आर ऑल लर्नर्स इन दिस जर्नी. द मोर वी नो, द मोर वी रियलाइज दैट वी नो लेस. इसी बात पे प्रज्ञानंदा का गेम खोल दिया भाई मैंने. ठीक है, तो इसका कैमरा हम लेके आते हैं. कैमरा लाइए, आप जो करना चाहते हैं सब करे भाई. टाइम पास आप, भाई क्योंकि थोड़े दिन की इस चीज में कितने डबल मीनिंग भाई एक दिन में.
ये क्या है भाई, डबल तो- मीनिंग क्या था भाई इसमें? तो ये कुछ है नहीं, anyways. प्रणनंदा's गेम. प्रणनंदा इज वाइट. तो बहुत कुछ हो गया है. तो आई थिंक इट्स ए गुड टाइम टू पता नहीं शो हंसी बहुत आ रही है आज. all that has happened. All that has happened. हाँ So, हाँ. तो my Shakku has also made an entry now. Shakku यो, is alive. और nice. शक्को का सोचो आते ही अभी स्ट्रीम बंद होती तो क्या मस्ती करता. इट्स ओके. Okay. So coming back. तो रुक C2 आ गया है. तो this is IQP and I like to play against IQP as well. So रुक C2 हो गया है. Then I think रुक B C1 भी आ जाएगा. Pawn E3 भी आ जाएगा. This is a position that Gukesh would, definitely like. So What do you mean? But I think somehow, in the past few moves, his pieces have. become passive. Yeah, I mean, he played knight e1, came back to f3, so it's like not sure about the last few moves. Maybe he's trying to play E3 next. Yeah, true, but I think now black will play rook f8. If he trades off the pieces, the main question is like, is knight takes a7 ever a real move or not? Also, because knight c3 आएगा तब. No, So it's knight like- A7. No. Knight उस C3. तरफ नहीं देखेंगे. Equal है position फिलहाल. But I like equally it agree, that equally agree. IQP है तो maybe some chance. Yep, looks equal. So then coming to the next game, we have लेट्स गो टू द Ronak नेक्स्ट गेम में. रौनक साधवानी क्या कर रहे हैं भाई? Ronak गुड Sadhwani. आफ्टरनून एवरीवन. हेलो चैट. हेलो सबको एक बार लाइक कर दे यार स्ट्रीम, क्योंकि आपको फिर मौका नहीं मिल पाएगा शायद लाइक करने का स्ट्रीम को. ठीक है, दिस माइट बी योर लास्ट चांस टू लाइक दिस स्ट्रीम. तो साहिल भाई, आपको दिन याद रहते हैं क्या? नहीं. महीने साल बस याद रहता है भाई. बताएं. मुझे भी नहीं याद रहते कुछ, मतलब especially on days like this when there are tournaments. तो today is Sunday. I think this is a very good opportunity to make your Sunday. अच्छा, संडे Fun. के लिए ये हाँ, पूछ रहे थे. हाँ, मेरे को तो संडे मंडे मेरा सारा हर दिन संडे ही है भाई आजकल. आज तो संडे है तो मैं बेरोजगार हूँ. all right. तो rook h4, pawn h7 is under attack. Plus भाई rook on इसमें e5. पॉन क्यों नहीं मार सकता हूँ? व्हाई कांट आई टेक द पॉन ऑन f5? सही सुना आपने, सही बताया आपने. rook into f5 ही अगला चाल होना चाहिए. I think that should be the move. बट कुछ तो होगा ना उसके पास. वो ऐसे पॉन क्यों दे रहा है मेरे को? तो देख लेते हैं. So rook into f5 is a check. So the king has to move. हाँ. तो रिकैप दे दो स्ट्रीम बंद होने से पहले. अच्छा ठीक है बाय. आ गया भाई नोटर का भाई. By the way, chat, I must Inverter is inform you. about to die. I love you, chat. I must inform you. As of now, Uzbekistan is winning on one board, winning on second board. and जल्दी बोल slight- भाई. मतलब they are winning on two boards and slightly better on two boards. So they are going to destroy Armenia most likely as of now. Abdusarov is already like +2, so it's already finished board one pace. So Armenia might just go down today. And with that, this stream will also go down, guys. We will miss you. Please एक बार like कर दो यार. 500 like पहुंचा दो भाई. दिल को संतुष्टि मिल जाए भाई. 443 हो चुके हैं guys. Bye निरंजन. Bye Sahil. Bye chat. Countdown starts now. Every night in my dreams I see you. भाई स्विगी से क्या ऑर्डर करूं खाने के लिए? मन कर रहा है कुछ खाने का. That is how I know you. Go on. Love was when I loved you. One true time. I hope. भाई बंद क्यों नहीं हो रहा है यार? पूरा गाना खत्म हो जाएगा. यार इतने देर में तो टाइटैनिक भी डूब गया था भाई. भाई क्या अगर बंदी नहीं है ना ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए, उसके बंदी तो एंटरटेनमेंट था. हाँ आई कैन भाई ऑफ कोर्स, बट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ना? अपने पास कैम्स होंगे ना, सीन्स हाँ, होंगे हाँ, ना, कर कुछ सकते होंगे हैं. भाई. We will हाँ have वो चक्कर तो nothing. है ना. और फुटेज कैसे? ये सब कुछ होगा ही नहीं. भाई इन्वर्टर भाई, इतनी आवाज तो लास्ट
मुश्किल रहेगा ना, बिकॉज मेरे पास निरंजन भाई आप कहाँ रहोगे वहां पे? आपका तो लाइट ही नहीं है, आप कहाँ से भेजोगे? वही तो, कुछ भी निरंजन भाई, कुछ भी भाई, मेरे ओपीएस में लिटरली मैंने भी चालू किया, उसमें लिटरली बोर्ड भी नहीं सेटअप। निरंजन भाई क्यों नहीं? भाई पहली बार टेंशन में गाइस। क्यों नहीं टेंशन? क्या हुआ? ये यूपीएस बंद हो गई क्या? आवाज क्यों नहीं कर रहा? आवाज बंद हो गई यार, maybe it survives। अच्छा म्यूट करके रखा है, अच्छा। चैट काउंटडाउन स्टार्ट्स इन 10 9 अरे रुको भाई, लेट मी चेक। 7 6 ओके ओके, एक सेकंड चैट, एक सेकंड। निरंजन भाई चले गए क्या? चले गए क्या? पता नहीं सीन यार। कैसे चल? आई थिंक ही माइट नहीं, हैव, नहीं। he's trying to figure out। हाँ करोगे All मिस the भाई, best। कर सकते हो? नहीं नहीं भाई मैं नहीं कर सकता। साइड टिक्कू करो भाई। भाई मुझे भी नहीं पता था कैसे करना है। ये क्या है भाई? मेरे को तो ये सब नहीं भाई। करो करो, ऑल द बेस्ट भाई टिक्कू। तू नहीं बोला भाई, तू कर रहा है भाई अब तक। नहीं मैं कर दूंगा, बट द मेन थिंग इज कि करना क्या, आई डोंट नो हाउ टू डू। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, वी डिडंट अंडरस्टैंड हिंदी। सतीश भाई देयर इज अनदर, इस पे हो रहा है इंग्लिश में सिर्फ, वो आप देख सकते हो। हाँ 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 हाँ। ओके हम्म। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हिच वन? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑल द बेस्ट साहिल। करता हूं भाई। On stream OBS setup learned, inspired by Anish Giri right now chat। Third world problems। Always भाई। रुको let me open everything। भाई भाई inverter is the hero of tonight। आई एम नॉट श्योर हम लोग कैसे करेंगे ये। ट्राई कर रहे हैं एक बार, लेट्स ट्राई, ट्राई करो। see if it works and बट थिंग इज कि निरंजन भाई तो चले जाएंगे। हाँ नहीं मतलब बेसिकली आई थिंक सारे लिंक बस होंगे, and then I can then we both will have to do। हाँ हाँ, एंड फिर वो भी तो नहीं है क्या चीज? वीडियो फुटेज। वीडियो होगी ना, क्योंकि देव से हमने स्ट्रीम किया, and I can add the video, तो लिंक होगा कोई आई थिंक। चैट थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स चैट ऑलवेज। और तू मेरे को वीडियो कैसे शेयर करेगा? वीडियो निंजा है तेरे पास? अरे हाँ वो कैसे होगा रे? वीडियो निंजा कैसे चलेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा भाई, लर्निंग एक्सपीरियंस आज सीखें कुछ। कुछ आया नहीं मेरे पास। अच्छा ओ जूम चैट, अरे यार दूसरी बार देख रहा हूँ लाइफ में आज जूम चैट। रुको रुको, ओके चैट काउंटडाउन किए जा रहे 0.5 0.4 0.3। ओके, इट इज डाउनलोडिंग आई थिंक, या इट इज डाउनलोड। रुको मैं ऐड करता हूँ। हाँ ये तो आ गया भाई, ये तो आसान था। मैं क्या स्ट्रीम बंद हो गई कि स्ट्रीम चालू पे ये सब कर रहा स्ट्रीम हूँ? चालू है, स्ट्रीम चालू पे कर रहे हैं। ओबीएस ट्यूटोरियल्स भाई, ओबीएस ट्यूटोरियल्स। हाँ ये हो गया, वो लगा दिया मैंने। इंडियन भाई का लाइट आ गया क्या? टू नहीं कर रहा अब पीछे से। ओके अब नेक्स्ट क्या है, लेट मी सी। ओके कुछ और भेजा है मुझे चैट, लेट मी सी भाई। ओके दो बड़े बड़े भेजे हैं निरंजन भाई मैं तो ने। मस्त खुश था यार, हाफ डे मिल रहा है आज तो आई मौज हो गई भिड़े। दो बड़े बड़े भेजे हैं निरंजन भाई ने, बॉक्सेस एक्चुअली, इंटरेस्टिंग। भाई एक सीन पहले भेजो, आई थिंक यू शुड हैव वन सीन फर्स्ट। हाँ वही चाहिए, वही सही है, वही सही है। आई थिंक वो वाला सीन इज द बेस्ट, जहाँ पे आई थिंक वी कैन हैव द लाइव फीड, आई थिंक दैट विल हेल्प द मोस्ट।
quality content, exactly. Okay, और क्या है? Okay, कुछ और भी है, I think. 3 बजे ना? हमने कौन सा वाला उठाया ये? Let's see. Let me see. Okay, ठीक है. Okay, इतने सारे आ गए, ठीक है, बढ़िया. आज हम OBS स्टाइल न्यू लाइव स्ट्रीमिंग करके स्ट्रीम सीख रहे हैं. अरे भाई, आज सीखेंगे ना. भाई स्ट्रीमर से, लेकिन विदाउट लॉगिंग यू कांट स्ट्रीम एज फार एज आई नो. ये तो मैं ध्यान में नहीं आया. कर सकते हो क्या? रियली? हाँ, बढ़िया. I have no idea भाई. You guys coordinate भाई. आइए भाई, ले लो भाई तुम, मजे ले लो भाई तुम, सो जाओ भाई तुम. चलो तुम लोग सेटअप करो, मैं आता थोड़ा खाने पीने का सामान. अबे चैट से बात करो ना रे. चैट भी वही कह रही है कि चलो बीच भाई आप जाओ, तब तक खा पी लो कुछ. जब तक चैट अपनी बात कर रही है, मैं खा पी के आता हूँ. नहीं भाई, क्या है उन्होंने यार, बीच भाई आप जाओ आराम से चिल करो. ये सब तो होते रहेगा. ओके, अब वो तीनों ऐड मैंने ऐड कर दिए, मैं कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे. वो तीनों सेपरेट सीन्स में ऐड करने क्या? माय गॉड. भाई ये तो मुझे लग रहा है मेरा ओबीएस का. ये मैं अटक कैसे गया हूँ अजीब सा. ये क्या हो गया है? दिस इज रियल बीस्ट. ये क्या है निरंजन भाई? दिस इज रियल बीस्ट चैट. मैं कहाँ बोल रहा भाई निरंजन, मैं तो कह रहा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप सो ना भाई. बीस्ट चैट्स का असली एक्सप्रेशन. बीस्ट चैट एक्सपोज भाई. रुको भाई, लेट मी. हाँ, 3 सीन ऐड कर दिए भाई. It is very low on time guys, very low on time. We are also. और ये क्या है? बिग लाइफ बिग. भाई सब चीजें बिग क्यों है यहाँ पे? समझ नहीं आ रहा है. Okay, let me add it. Oh, Sasikarun's opponent in advantage, very good position. Yeah, बहुत advantage है. ये 4th सीन है क्या? ओ भाई साहब. And Arjun is much better in his position, and his opponent just 1 minute. काउंटडाउन वाली क्लॉक टूट गई. Vidit is on time out. What? Time pressure. 8 मिनट बस. Looks difficult chat. Oh, F5 खेल दिया गया उसने. Okay, that is good for I think Gukesh, because now if King D4 happens, I think he'll be slightly better. निहाल सरीन गेम में एकदम ही इक्वलिश पोजीशन है. निहाल की कोई प्रक की? सॉरी, प्रक. निहाल की तो वर्स थी ना. I think he looks worse. I think. नहीं वो तो Knight D6 आ रहा है. Bishop C4 आ रहा है. He looks much worse. Yeah. But it is actually worse, भाई. But I think acting कर रहा है निहाल, अचानक से कुछ पुल ऑफ कर दे. ओके, अब तक 4 चीजें आई हैं, उसमें 3 मैंने ऐड कर दिया. चौथी मेरे को कहाँ डालूं? सोच रहा हूँ, रुको इसको भी डालता हूँ. अब क्या चल रहा है भाई? अब क्या ब्राजील से भी ड्रॉ करना पड़ेगा? ये दिन आ गए. नहीं भाई, if they draw against Brazil then they technically have no chance, so I think it would be fair to say कि they did not win the medal. I think so they have to win today. There's no chance. Oh, and how will they win भाई? बोर्ड पे तो they have to find a way, man. Like they have to find a way. There's no other choice. They have to win. If they cannot win today, they have no chance for a medal at least. I think ऐसा मुझे feeling आ रहा है. Okay. नहीं देखना साहिल, तू लीक ना कर दे भाई कुछ. क्या करूं? लीक मत कर देना कुछ. भाई मैं तो कह रहा हूँ ये सब छोड़ो यार. एक लाइव फीड का लिंक दो और नॉर्मल 2 शक्लें लगा दो और बोर्ड लगा दो. हाँ, इतना डिजाइन का फर्क ही नहीं पड़ता एक्चुअली. आई थिंक बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशंस कॉल फॉर इमरजेंसी डिमांड्स. I also feel I don't want कि तू कुछ ऐसा वो सब यूज करे जो फुटेज वगैरह. We might have a good news that हाँ, ओके ठीक. Yeah! We are back guys. We are back. We are back. वो
What are you saying, Niranjan bhai? Are you sure about that? Yeah, my father is going to confirm it very soon. Okay, let's see. We will have the official confirmation from the arbiter very soon, guys. Let's hope for the best. Arbiter? अरे पापा को arbiter बोल दिया यार. अच्छा. That's a joke कंफ्यूज हो भाई गया, यार. कुछ गेम सच में हो गया क्या? Very उन्होंने- soon, guys. We are back. Yeah! We are back. We have got an official बच गए भाई. confirmation from the arbiters. Bhai, thank you so बच much. गए भाई. Arbiter OP in the chat. Bhai, arbiter OP, India OP. Let's go. भाई ये फोटो तो अच्छे भेजे हैं, मैं यूज कर लूंगा क्या? Just kidding. Anyways, nice. ये वाला भी ओवरले मस्त है भाई, ये वाला ही था यार. Anyway, so chat, now we look at the games. Finally, bhai, crazy 9. This is actually, can we do Nihal's game quickly? क्या Yes, crazy bhai. push है भाई? We are on the Nihal's game only, bhai. Oh my bad. क्या हो गया मुझे? तो knight d6. I think he'll go knight d6. मैंने 4 सिंह बना लिए, मैं चारों हटा दिए. Done. So कहाँ थे हम? तो knight d6, knight e5. हम तो वही हैं जहाँ पे थे भाई, छोड़ के. Oh, this is looking bad, no? Maybe knight on e5 is a good piece, though. I like the knight on e5. So Nihal has some compensation, chat. Not But a this one-way knight street. on d6 is terrible. मतलब very good. Yeah, but I think knight on e5 is also strong, and I always have knight f7 ideas to exchange, and the pawn on e4 can be weak, so it's not a one-way street. I think it's like Nihal has some chances. Next कौन सा गेम देखे हुए भाई? I think let's go team B start से. I think देखना जरूरी है क्या चल रहा है यहाँ पे, बहुत crazy हो रहा है, and team B is the one जिनको जीतना compulsory है भाई. Team 1 के लिए और ठीक है. Let's go team B first start से. Okay. पहले Sorry, गुकेश. गुकेश. Okay, we have got some official messages from Rakesh bhai. He's saying, haha, epic. Okay, that's good. Official matches is epic. ये क्या है भाई? That's good. Like, क्या गेम देखने बताओ भाई? Okay. Gukesh looks a bit stressed. भाई you Chad, won't यहाँ पे, believe. yeah, This but is the Bishop is position. king d4. Yeah, that is what जो हमने visualize किया था वो हो रहा है. But why not bishop d4? This looks not so comfortable. Like, मतलब, is b4 from black? But that looks risky. Let me open the game. Chad, by the way, brief update on Abdul Saraf winning against Sargin. So that's 1 point for Uzbekistan. Second board पे equal है. Third board पे it is equal, and fourth board पे Uzbekistan is better. So 2 board पे जीत रहे हैं और 2 board पे draw. So Uzbekistan might just stop Armenia finally. Wow. That's important. Now we go to the Gukesh game. एक बार मैं खोल लेता हूँ भाई. And he played the move f5. That's kind of sus for me. I don't know why he played f5 just as anything else. And now bishop f3, king c7. So the thing is, after bishop c6, king c6, king d4, I'm just worried about b4. Like, if b4 happens, so I might not get that a3 formation. This is of course double edge also, because c4 can be weak. But अगर b4 ना हो, तो I would be very happy with this position. But knight e3 आ रहा है. True, that is not comfortable also. King b5 Yeah, maybe at some knight point. e3 आ रहा है. King b5 then. The thing is, जब भी कोई race होगी ना, शायद bishop will be stronger than knight. That's the issue. जब भी कोई race होगी ना, the bishop will be stronger than the knight. So that's why I'm a bit worried about playing king e5, king b5 in the c3 line. I'm a bit worried about this. तो इस रेस में क्यों पढ़ना भाई? If you want to win, तो race करनी पड़ेगी. So I wish I could also play a3. तो ये भी तो है ना कि इस रेस का सिकंदर तो मैं हूँ ना, तो मोस्ट प्रोबेबली. भाई मुझे पता है सलमान खान का डायलॉग है. इंजन भाई, आप ज्यादा खुश मत हो यार, आपके कारण हम लोग इतने स्ट्रेस में हुए अभी. What happened in Arjun's game? Arjun's game, guys, क्या हुआ है? देख लेते हैं. पहले एक बार सब एक गेम चलते हैं ना भाई. गुकेश का देख लिया भाई, निहाल का भी देख Gukesh looks लिया, ठीक equal है? right now, Chad. हाँ, and he can even get better in a few moves most probably. बीस भाई Let's go आपको to मैं निहाल game. एक पोजीशन दिखाता हूँ. ये किसका गेम है तुरंत बताओ 5 सेकंड में. कौन सा पोजीशन दिखा रहा है? Nihal. करेक्ट. Of course, knight d6 था ना भाई. Yeah, this is Nihal's game. बिशप कैसे आ गया e2 पे? अच्छा, अभी मूव किया होगा ना. तो Okay. ये 2 मूव्स हुए हैं, नाइट d6, नाइट e5, फिर बिशप e6 और भाई ये black जो का move. बोर्ड्स हैं और ये जो पीसेस हैं, ये कहाँ मिलते हैं? 50,000 का होता है कई बार यार. ये आपको ये सिर्फ स्ट्रीम के बाद pieces कहाँ शायद मिलते हैं? बता देंगे साहिल भाई बता देंगे. ये बहुत pieces महंगे होते कहाँ हैं यार. मिलते हैं?
पीसेस कहाँ मिलते हैं सर? पीसेस और ये बोर्ड दोनों साथ में आएंगे. अच्छा. DDT board, it will cost you 50k plus ऐसे कुछ cost आता है इनका. पर ऐसा ही दिखने वाला, पर DDT नहीं चाहिए मेरे को. हाँ, तो वो मे भी सस्ता मिल जाएगा, but still it will सेम be दिखे. like at least 20-30 के तो होगा यार. भाई कितना सुंदर दिखता है यार ये. हाँ, पता है जब Chad, when you play actual tournaments OTB and we're not like a top GM, अपना सपना ये था सारे गेम GT पे खेलना, because खाली ये टॉप बोर्ड्स पे होता है. So if you're playing on these boards, you're playing good chess usually. So और मजा मेरा खेलने में. You are earning a lot of money. Okay, that is absolutely a sham. यूरोप के टूर्नामेंट में खेलते हैं 300-500 एक टूर्नामेंट में, टॉप 10 प्राइज होते हैं और 10वां प्राइज लिटरली 5,000 रुपए होता है भाई. सिर्फ पहले 1 या 2 लोग जीतते हैं बस, जेन्युइन कैश मनी. सो मनी इज नॉट द बेनिफिट, बट वंस यू आर प्लेइंग आई वुड से कि इसमें फील आती है. इट्स स्मूथ एंड आल्सो लाइक पीसेस आर नाइस एंड ऑफ कोर्स यू दैट मींस यू आर प्लेइंग वेल बिकॉज़ यू आर ऑन द टॉप बोर्ड्स. इसका एक और एक पर्सपेक्टिव भी मैं देता हूँ कि you know there was a time where I also wanted to like really play on the top board, and then there came a time where I wanted to play on the top board but I wanted the game to not be live. हाँ also भाई गेम ऑनलाइन डेटा से ना जाए, बिकॉज एक बार गेम चली गई तो बाकी अगला हर ओपोनेंट प्ले करेगा आपके अगेंस्ट. सो ये लाइक कि काश इस पे खेलने को मिले लेकिन गेम जाए ना कहीं. ये क्या है सॉली भाई? चलो भाई नेक्स्ट. हाँ, इस पोजीशन में बताओ भाई क्या निहाल मेक अ विश भाई. हाँ, $1 million. रुक दी. विश करना था ना. विश करो भाई जल्दी, टाइम नहीं है. $1 million. अरे नहीं वो मूव बता रहे हैं बोर्ड पे. ओ आई डोंट नो विश क्या करना है. आई वांट टू अटैक द E4 pawn but knight on D6 is a pain in my brain. I don't really know what to do about that. And white D5 भी खेलने वाला है, and then he will also play rook A1 to attack the A7 pawn. So Nihal's position practically very difficult. नहीं, what about bishop? अच्छा कोई फायदा नहीं है. Bishop to B3 सोच रहा था मैं, पर क्या फायदा, रुक को A1 पे लाके सेव कर लेगा. Yep. Looks difficult. And Nihal 14 minutes. Yeah, by the way, looks difficult. Yep. Let's go to the third game also. Because I think somebody in Team B has to win. There's a clear sign that somebody can possibly lose. Like Nihal looks worse. So right now we have Prag against his opponent, and if we can have a look at the position, he has the white pieces. He is supposed to strike for Team India today. He played really well against Wesley yesterday. Kind of drew in the end, but had a great position throughout. And right now he's playing against the isolated pawn. That's usually a very favorable deal in the end game, especially when there's no attack. The bishop on G2 ensures कि कोई king से attack crazy नहीं होगा. But then also black's pieces are active ना, मतलब knight C5, knight E4, सारे piece active है. Queen F6 putting pressure on F2, B3 pressure है, knight D4 नहीं हिल सकते. So black's pieces kind of compensate. So what basically white wants is कुछ piece exchange हो जाए भाई, and that would really help white remove these active pieces जो knights हैं. And then he can heavily pressure the pawn on D5. That's the weakness he wants to get to. But right now he can't attack it. So I think can't attack it. He can play knight to C3 and exchange the knight. हाँ, but the thing is कि knight इसे खेलते ही I'm not really sure about that move actually. Knight C3. Black will not even take. Maybe he's not forced to take. That's one of the issues. Like he can simply avoid it. And if you take, I can even take with the pawn and put the knight on D3 then. So there are many possibilities. How will you avoid it? You cannot avoid it, na. If you avoid it, then I will capture in the next move. Yeah, karoge, but I think you will capture on E4 then, and that's in I think black's favor somehow. I will not take on C3 most likely. One moment. You can play it. It's possible. It's possible. I think it's totally possible. So फिलहाल he's played knight of D4, and I think black abhi kuch maybe he will bring the last rook into the game. Maybe bishop A6 to put pressure on the bishop B7 to कुछ कर नहीं रहा है. So bishop A6 will be slightly better diagonal to be on. I think many moves possible, but white will be slightly better throughout. Like हल्का सा better रहेंगे. So Prag looks decent. I think he has chances here. I love the summary. I mean दोनों साइड से उन्होंने कवर कर लिया कि ब्लैक के पास एक्टिव पीसेस है फिलहाल और व्हाइट के पास IQP को अटैक करने की चांसेस है, लेकिन फिलहाल तो व्हाइट नहीं कर पा रहा है. मैं ये भी सोच रहा था कि नाइट को F4 पे लाते तो अच्छा रहता, लेकिन नाइट F4 नहीं आ सकता अभी. और कुछ भी कवर करो दोनों साइड से ही करना चाहिए चैट, ऑलवेज ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से. आई थिंक दैट्स यूजुअली गुड. सो मे बी वी कैन गो टू द फोर्थ बोर्ड नाउ एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. ओके, तो फोर्थ बोर्ड में हम चलते हैं टू द गेम ऑफ रौनक साधवानी.
Ronak looks a bit tensed at least ऐसे शक्ल से. बाकी पोजीशन अभी देखेंगे हम. Yes, so this is the position. Oh, so h7 is falling now, and you can see जितने pawn exchange हुए, right के bishop खुल गए, लेकिन यहाँ पे it's not the same as Hari Krishna, I think. First of all, you got rid of the f5 pawn, जो बहुत ज़्यादा black को cramp कर रहा था, and the black bishop on d5 is good as any piece on the board. Like it's very active, and also the d3 pawn is rather a bit awkward. Yeah, मतलब it's like अकेला पड़ गया life में. So I think this should be holdable. This should be holdable. Holdable? Why not winnable? नहीं. I think two bishops साथ white has no clear एक pawn भी weaknesses. तो extra है ना यार. नहीं मर रहा है ना h7. S7 कैसे मर रहा है? S7 I can defend ना. अरे white to play है ना भाई. White to play है ना. अच्छा white to play क्या? नहीं, नहीं black to play है ना. White to play है. नहीं यार black to play. भाई rook g5 खेल. King e1 rook g5 played no. अच्छा किंग इवन तक He ही had मुझे not पता played है. rook rook g5. g5 rook g5 sorry there. अच्छा But तो king e1 के बाद rook g5 क्यों खेला उन्होंने? He can और play na h5 क्यों and नहीं protect. खेला? हाँ वही तो. हाँ h5 protecting it then. इसमें क्या था? In fact, why not bishop f3 to exchange bishops? हाँ ये भी अच्छा है move. है ना? To exchange bishops, there's nothing to do. Like you Draw. draw immediately. Draw. Bishop d5. Draw. It's a repetition immediately. Draw. But he doesn't want na draw. Yeah, I think draw would be अरे fine. draw You should is not- good result. Draw is absolutely fine. Black pieces, two bishops, definitely a good result. नहीं पता मुझे rook g5 क्या है? ये पता क्या mouse है? slip है क्या? Yeah, chat basically look at the bishop on g3 and look at the pawns on the queen side. अगर वो गलती से c7 आ गया ना, ये टक तीनों pawn मर जाएंगे, and that's what I'm worried about basically endgame में. So that's why I'm worried कि draw would have been a good result for Ronak, and he I think missed it. I think he might have missed it. अभी ये है पोजीशन. किंग e5 rook h7 मार दिया इन्होंने. किंग g6 फिर नाइट f5 बिशप f2 तो कोई पीस एक्सचेंज ही नहीं कर पाई. तो दिस इज आई थिंक अ ह्यूज मोमेंट इन द मैच जो मिस कर चुके हैं रौनक. Do you think he's banking on his time advantage to put something here? I think black's pieces do look active though, है ना? Don't do that. सारे पीस active तो मेरे हैं. को तो ये h pawn से बहुत घबराहट महसूस हो रही है. h4 h5 h6 How about rook to g2? करो रुक नहीं, g2 फिर भी h4. Set नहीं है कोई खास ऐसा मुझे दिख नहीं रहा कुछ. g2 what's the idea? I'm not sure. Like I want to play knight d4. Like that's the move I want to play honestly. Like I really want to play it, but हाँ, I'm not I sure. want to play but वो मार देगा ना सीधे. अब मारना मुझे stress नहीं है actually. I'm not worried about taking. I think. No, Maybe I but should be want rook to d8 के stay बाद. there maybe. Maybe I should be. Rook d knight d4 उसके बाद rook to g2 push किया अगर h4 उसने तो rook to h2 threatening mate नहीं है. mate भी तो नहीं है. क्या बोल इस बार मैं कुछ मंगा रहा हूँ. क्या मंगाऊँ यार? कुछ और खाने के लिए इंटरेस्टिंग. जिंगी पार्सल. इनकी पास क्या होता आप फरीदाबाद में रहते हो ना? है? हाँ. इवनिंग स्नैक के लिए. हाँ. डिनर के लिए बोल दो जो भी स्नैक डिनर व्हाटएवर. अच्छा तो अगर सरवड़ा भवन वहाँ पे है तो आप साउथ इंडियन डोसा सरवड़ा मंगा भवन सकते क्या हो. है? अच्छा सरवड़ा भवन नहीं जानते. यहाँ नहीं होगा भाई. मुश्किल है. यहाँ फिर वही है भाई KFC, मैकडी और बाकी फिर दाल normal खिचड़ी. restaurants. दाल खिचड़ी इज बेस्ट. दाल खिचड़ी तो घर पे भी खा लेंगे ना यार. कुछ क्रेजी होना चाहिए. Anyways. चार बताइए कुछ. By the way, I think Ronak has more time. That's a clear plus. I think he will hold at least. I think he will hold. Especially because this is not the same. I think Black's king is not having any issues here. Hari Krishna में he was constantly defending. बस ये bishop यहाँ c7 ना पहुंच जाए and I'm happy. तब तक के लिए मैं खुश हूँ. So I think this should be okay. Can we quickly go to the A round games because मुझे पता लग रहा है बहुत games वहाँ पे हमारे worst चल रहे हैं. Can we quickly go through all the 4 boards in team A because if they lose they are completely out. Okay, so let's start with Grandmaster Hari Krishna Pentala जो यहाँ पे white side से खेल रहे हैं. So if we start with this game, Hari Krishna. I like the knight on c5 clearly. I don't like the bishop on c8. It reminds me of वो Gukesh की position in a good way. मतलब slightly better version. But the issue is कि if Black can somehow play a5 b4 that might really remove all advantages because d4 pawn will be weak then. तो उन्होंने So खेला it's- knight c5 खेला उन्होंने.
Yeah, I mean, नाइट्स पे तो खेलने था और कहाँ yeah, at some point black can play a5 b4. That's what I'm worried A5 about. B4 के लिए तो मैं रुक ला सकता हूँ ना पहले B1 पे। तो वहाँ पे हाँ, एक but the आपका रुक वहाँ पे फंस जाएगा ना डिफेंस करते हैं। हाँ, and the issue is कि एक बार वो pawn गया ना तो d4 pawn भी जाएगा and suddenly knight on c5 is not stable. So वो stress है, but I do feel Hari Krishna is better clearly, right? I think एक he's मेरे clearly पास better. आइडिया है बेटर, मतलब मे बी दिस इज द रीजन व्हाई इज प्रोबेबली बेटर। रुक ई b1, a5 खेले तो रुक b2, b4 खेले तो ab नहीं, ab नहीं मारेगा, अरे b3 भी आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, आई एम रॉन्ग। सो आई विल जस्ट शो द चैट व्हाट आई वाज थिंकिंग। आई थॉट रुक ई b1 ताकि हम a4 खेल के ये रुक को a7 पहुंचा सकें। Okay. पर ब्लैक के पास a5 है, अगर रुक b2 खेलेंगे तो ये b4 खेलेंगे, तो ab अगर मारे और रुक b1 आएंगे तो b3 आएगा, तो इसीलिए आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग। फिर हम हारने लग जाएंगे तो वेरी बैड, वेरी बैड। बट आई कैन डू भाई दिस। भाई फिर भी फॉल तो कर रही है ना, d4 1 मरेगा। Oh, yeah, this is one reason. maybe why can't we just simple ऐसे double up करूँ मैं e file पे and then try to get on the 7th rank somehow। 7th rank कैसे पहुंचाओगे आप? डबल अप करूंगा पहले मैं। कैसे? पहले खेलूंगा रुक टू e3 ओके, तो मैं करूंगा अपना प्लान a5 एंड देन रुक टू e1। वेरी गुड, तो मैं खेलूंगा b4 एंड यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को मारना तो पड़ेगा ही ना मेरे को। सब मारोगे फिर 2 पॉन खा जाएगा, मतलब c3 भी जाएगा d4 भी जाएगा। Oh yeah, so this looks rather better for Hari, I think, but it's not an easy plan, right? I think क्या so खेले complicated. तो खेले क्या? I think I would probably just leave the queen side for now. Maybe just bring the king. I don't know, like maybe f3, king f2, and then I just play rook b1 whenever he plays a5. And but I still don't have an answer to a5 b4. That's a problem. तो साहिल भाई आपको ये स्टैटिक और डायनामिक का कॉन्सेप्ट पता होगा ना? तो ये डॉर्फमैन का जो सिस्टम है, तो ये अगर उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, ही विल कंसीडर दिस एज ए क्रिटिकल पोजीशन, बिकॉज इफ यू डोंट प्ले द करेक्ट मूव हियर, योर चांसेस ऑफ लूजिंग वॉट एवर एडवांटेज यू हैव आर हाई। तो इफ यू प्ले मूव लाइक किंग f1, a5 b4 इज कमिंग, इसका कोई सुझाव है तो ही वाइट इज बेटर आई थिंक। तो देख लेते हैं क्या है सुझाव। बोल रहे हैं वाह व्हाट ए मूव, ये क्या मूव है भाई, ये क्या मूव क्या है ये है क्या पता नहीं भाई। f3 ये बोल रहा है साहिल का ही आइडिया है भाई। कौन सा? f3 आपका आइडिया, किंग को एक्टिवेट करना। नहीं, but that is obvious. But b4 का solution क्या है? हाँ, वो तो उठाई देखो। f3 खेला, bishop block king f2. That is okay. But what's the? I don't know what to do against b4. अब बताएगा डिश क्या ये प्रैक्टिकल नहीं लगता मुझे कि b3 अलाउ करे पर रूक a4 खेल के पॉन को मार दें। Okay, that is out of my pay grade. Way above my pay grade, भाई। ये देखो भाई वेरिएशन क्या बोल रहा है। अरे भाई ये क्या है भाई? hell? ये अगर हम खेलेंगे तो व्हाइट अंत में पॉन अप रहेगा। ऑन अप रहेगा। वाओ भाई साहब, this is इंडियन ओपी गाइस, इंडियन ओपी, इंडियन भाई। कैन डू एनीथिंग भाई। Yeah, Harika made a mistake भाई, देखा हमने। Harika was +4, now she's +0.8. She made a mistake. All right. This is so Hari Krishna. I think, yeah. So I think Hari is better, has winning chances. Can we go to? He played Rook b1 by the way. उन्होंने वो नहीं खेला, उन्होंने obvious move खेली. So now we go to Vidit's game, Draw. and it is Draw. dead draw. Yeah? Draw. It's already drawn. Draw. ड्रॉ बोल रहे हैं क्या? मेरे को क्या हो गया इनको, तबीयत खराब हो गया इनका क्या? साहिल भाई आप इसका भी स्केच कर चुके क्या? टाइप्स ऑफ ड्रॉ मतलब? ऑफर्स। स्केच मतलब जो आपने वीडियो डाला अच्छा है। वो हाँ, टाइप्स ऑफ ड्रॉ ऑफर्स नहीं, मैंने कुछ ड्रॉ किया था बहुत पहले कि भाई इरिटेटिंग प्लेयर्स जो बार-बार ड्रॉ पूछते हैं हर मूव के बाद, बट ऐसा तो नहीं किया कि टाइप्स ऑफ ड्रॉ तो नहीं किए। एंड गाइस मेरियन गोम्स हैव वन ऑलरेडी। नाइस। हाँ तो बस नाइस। ये कैसा रिएक्शन है भाई? कुछ हैप्पीनेस ही नहीं तुम लोग के शक्लों पे भाई, ये कैसे Yeah, है भाई? मतलब it's not that very happy, but I think इसकी मेडल के chances नहीं है ना, so that's the only. I think they may have a board prize chance, you never know. हाँ, true. तो I had actually closed off that result का लैपटॉप। मेरा एक लैपटॉप है जो सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, वो बंद किया था तो मैंने देखा नहीं।
भाई नीचे में देखो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं भाई, एक लैपटॉप पे रिजल्ट्स है, OBS है, कमेंट्री है, ट्विटर है, 3 भाई स्क्रीन है। मतलब 20 भाई को क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे क्वेश्चन पूछने हैं भाई, क्रेजी है भाई। निरंजन भाई ओपी चैट एक बार भाई एकदम क्यूटी के लिए एक लाइक भी ठोक दे भाई स्ट्रीम पे भाई। Thank you. So coming back to the game, I think this is opposite color bishop, so that is the reason this is a draw, I think. What do you think? You agree or you disagree? Yeah, I it's a agree. dead draw. And even though white is up a pawn, but it is a double F pawn, so very unlikely that he can make any kind of progress. And you can just go for and serve a couple of exchanges, and quickly it should be a draw. What do you think? I think white सिर्फ अभी draw नहीं किया है because he just feels कि time कम है, so he will play on for like yeah, he will play on for like one one more move because the 40th move will reach, and then I think they will reach. In fact, he might even repeat bishop E5, rook C2, bishop F4, rook B2, maybe something like this. Yes, correct. Possible. So VD draw confirm a chat. So VD tried today. I think he did make some complications, but it was not enough, unfortunately. So this game will end in a draw. Can we go to board 3? That is Arjun. क्या हुआ भाई ये पोजीशन? Wow, that is a okay, very interesting position, right? Because this is technically, objectively should be a draw. Why? क्यों draw? Yeah, no, of course, because draw? it's pawns on same side of the board. अरे रुक up में भाई exchange up है। हाँ, but king देखो E2 पे, pawn देखो, black का structure देखो, pawn chain. I think I just don't see how white needs something more mistakes from black. I think this is not easy to convert. King E2 पे है ना open, पूरा open है भाई। नहीं गलत बात कर रहा है भाई टिक्कू अब तो। नहीं, I personally have seen, मतलब I have seen many end games जहाँ पे black just has one pawn for the exchange, लेकिन pawn same side पे है. It becomes very difficult to convert. मतलब यार उल्टी बात। Even if you have like rook and 2 pawns with bishop against bishop and 2 pawns, sometimes it's a dead draw, right? G6 bishop घुमाते रहो. Like there's no way you can win this. तो यहाँ पे king rook and 2 pawns against king bishop and 2 pawns. I mean, just adding to what Sahil bhai is saying, एक additional चीज ये है कि ये E3 pawn भी exchange हो जाएगा with D4 break very soon. और हमारे पास pawns कम बचेंगे और जितना pawns कम है, ये रूल तो आपको अगर नहीं पता है तो मेरे से जान लीजिए, अगर पता है इट इज़ वेरी गुड. ऑल द चैट ऑल्सो विल नो दैट इफ़ यू आर हैविंग मटेरियल एडवांटेज यू शुड एक्सचेंज पीसेस. इफ यू आर लो ऑन मटेरियल यू शुड एक्सचेंज पॉन्स. इट्स अ गाइडलाइन. यू नो ऑन मूव 27 उन्होंने वॉलंटरीली F4 खेला है. अरे दैट्स अ बिग सरप्राइज, राइट? बिकॉज बिफोर दैट द किंग लुक्ड वेरी सेफ. He can go to F1, G2, and now I think white had chances. F4 did not feel like a nice move at all. Chess.com's game review also tells us that this is a move that he's not happy with. Yeah, I mean, it opens up your king, it allows more exchange of pawns, and not a big fan of that move, I think, overall. And the opponent has 3 minutes, but guys, 11 moves has to play, which is under time pressure, he can actually crack also. Yeah. That's true. So at least a draw here, and I think this will be a long grind if he has to win. Like he has to play a very, very long game and hope that black somehow crumbles. By the way, do you think queen trade you have black ke favor mein, white ke favor mein bhai in that game, Arjun game? It's in black's favor, I think. Black. I mean, for a draw. Yeah, I mean, let's say if queens are traded off, white की probability बढ़ती है जीतने की कि black की draw करने की probability? I think white की जीतने की बढ़ती है. White exchange. मेरे को प्लान नहीं दिख रहा है विनिंग प्लान व्हाइट के लिए. Even if the queens are off the board, क्या है विनिंग प्लान? देखो विनिंग प्लान मैं बताता हूँ. हाँ बताओ भाई. एक ही पॉन पे 3 बार अटैक करेंगे और ले लेंगे, ठीक है? 3 बार अटैक के 3 तो पीस ही नहीं है. 2 पीस 2 रुक से करेंगे और 1 किंग से भाई. किंग इज अ पीस इन द एंड गेम. किसको अटैक करोगे किंग से? किस चीज को अटैक करोगे किंग से? अभी दिखाएगा अर्जुन, दिखाएगा खेल के. दिखेगा. ठीक है आगे नेक्स्ट गेम. नेक्स्ट गेम इज द गेम ऑफ ग्रैंड मास्टर शशि किरण अगेंस्ट. क्या वहाँ पे कुछ अपनी पोजीशन बेटर हुई क्योंकि अपन मच वर्स थे उसमें? Yeah, Shashir Kiran analyzing the games of his teammates. Anshika is saying yes, we can see him in the camera there. He knows he's worse maybe, and that's why he's checking out कि क्या करना है मेरे को. But this is like, you know, classic example of what to not do when you don't have the bishop pair, because now
A file white के पास है, bishop on b2 is looking at your king, bishop on d3 is also like preparing e4 and so on, and there's not a single plus for white. And like he's trying to play h4, h3 and create some threats. That's okay, but it will probably not work. And if you had the dark squared bishop, I think they're giving a lot of counterplay because h4, if h3, then queen g3 and suddenly is mate. But you don't have the dark square bishop, and that's what you're missing. Imagine a bishop on b8, yeah, controls the a file entry squares, puts pressure on h2, and suddenly the game is absolutely fine. But with this, it's not looking comfortable at all. तो ऐसा गेम में है क्या कि हम अपना एक रुक देके एक बिशप मांग ले अगर तो दे दे ओपोनेंट? हाँ, but it will still be worse, no? And it's like you don't have a target to attack, no? हम attack करेंगे क्या? That's the issue for me at least. Like ऐसे ऐसा कर दोगे, but then this is not like a close position जहाँ पे you can just hold off the pieces. A file पे रुक आ ही रहा है. That's the issue. पर अगर हम ऐसा देखेंगे कि चांसेस हो तो कहाँ पे होंगे? How can he outfox his opponent in your opinion? I think yeah, h pawn, yeah, and if h3 then knight h5, knight e3, something you can create at least. But the issue is even with that, it's not enough pieces somehow. I can just play queen f2, and it all evaporates like whatever you had. So looking difficult. Chat कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कह रही है. इंडिया में B should have played on the long board. वो उस पे हमेशा जीतते हैं. Yeah, that's possible. Chat. मतलब. I'm a big fan of superstitions. I think everybody here is so. Yeah, but you know, ultimately हमें beyond superstition जाना पड़ेगा भाई. हाँ. कितना beyond? Beyond इतना beyond कि हम superstition पे rely ना करें. नहीं इतना नहीं. एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अर्जुन रेगिसी का देखता हूँ कि अर्जुन रेगिसी हमेशा टाटा स्टील में क्या करते थे कि ही वॉज गोइंग अलॉन्ग विद श्रीनाथ. ओके, तो लास्ट डे पे क्या हुआ कि श्रीनाथ हैड ऑलरेडी वन द टूर्नामेंट. फिर श्रीनाथ ने मतलब अर्जुन हैड ऑलरेडी वन द टूर्नामेंट एंड श्रीनाथ आस्क्ड, डू यू वांट मी टू लाइक अकम्पनी यू टुडे आल्सो, कैन आई टेक अ रेस्ट बिकॉज आई हैव डन माय जॉब. ऐसा श्रीनाथ ने पूछा. अर्जुन ने बोला हाँ, आई डोंट माइंड ऑल दैट, आई एम नॉट सुपरस्टिशियस. एंड वो जाके खेल के जीत के आ गए. तो अर्जुन रेगिसी इज नॉट सुपरस्टिशियस एंड ही इज शोन दैट. But I think we know many top. And Gukesh is winning. Gukesh is winning. What? How? Gukesh is winning. I don't know. Let's see. क्या बात कर रहे हो? भाई चैट ने बोला है भाई, मैं तो एक्साइट हो गया भाई. यार चैट गलत हुआ ना, मन से भाई फिर देख लो. अबे कहाँ से विनिंग यार? अबे यार चैट really कहाँ से winning? No, the position on the board is not the position I have actually. Oh, let me refresh. What is the position you have? The position I have is draw, but position board पे कुछ और है. ये प्रसाद भाई क्या करते हो यार आप हर बार ऐसे आके भाई? प्रसाद भाई? प्रसाद नहीं लिखा चैट में. कहाँ है? Gukesh is winning. कौन है वो आदमी? कौन है भाई? I कुछ भी मतलब. I think he just played g4. I think that's pretty much it. King is on d6 and then he played g4. That's the basic difference. So yeah, this is yeah, I mean g4 के बाद वो f5 pawn चला गया ना, so वो bishop against knight against bishop endgame तो नहीं चलेगी अब. I think it's kind of drawish now. Now it is Gukesh का move क्या? No, it's yeah, Gukesh का move है. I think he played king d6 and bishop. No, he played h3. हाँ, he played h3. उसके बाद ये बहुत सारे मूव्स हो चुके हैं. yes, we should show that. डिक्टेशन से we should show. Okay. Yeah, h3 के बाद he played I think king d6 or something. King to d6. Black का king d6. Sorry, king to d6, yes. g4. g4. He took. And then tuka. Bishop d5 he played I think. And as you can see, this makes a lot of sense, right? Because he's exchanging the bishop and the king will come to d5 now. So maybe my Gukesh is better here. I think because he connected pawns. H7 pawn can be a target, but I still don't think it's enough to win the game. And probably now not. Gukesh is thinking, right? Yeah. The bar does like Gukesh a little bit. I think plus 0.4 कह रहा है, but it's probably not enough to win. Chat material बहुत कम है यार, बहुत कम material है. Okay, I think if Gukesh wins, that's a great plus. But team A का हमारा net result क्या निकला यार? So SL is worse, है ना? And then you have VD who is completely drawing. Hare Krishna is better. And then Arjun
is slightly better, but most likely a draw, right? But if that happens, the team A draws against the weaker team Brazil. So that is not really what India wants, because if they draw, I think their medal chances take a huge hit, and I don't think they can win a medal then, even with 2 wins, because बहुत team आगे निकल जाएंगी उसके बाद. Yeah, I mean, I didn't get the count though. Sasikiran, we are having a minus position. Yeah, and Gukesh looks better, but वो endgame है तो king weak है तो draw की maximum Gukesh chance. is in India B. Sorry, Arjun, my bad. Arjun, I confuse Arjun and Gukesh honestly. So Arjun, I think there he's slightly better. Okay. And then you have Vidit, who's literally drawn already almost. And then Harikrishna is slightly better. So assuming Harikrishna wins, that's assuming he wins, because as the bound towards Sasikiran is much worse than Harikrishna is better, right? So there's more probability of him losing than Harikrishna winning. So even assuming Harikrishna wins, it's still, I think, 2 each, right? So a draw would basically be really bad for Team A, I think. यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? I mean, I agree with what Sahil is saying. I think the 2-2 is more likely. But यहाँ पे बोर्ड पे कोई और कौन मूव कर रहा है? साहिल भाई, बीस्ट भाई, आप मूव कर रहे हो क्या? आपने आप? यस भाई. अच्छा, मजे ले रहे हैं बीस्ट भाई. मेरे को गेम चल रही है यार. मुझे यार गेम आगे हो गई, कौन जीत रहा है यार? तो का मजे ले रहे हैं बीस्ट भाई. क्या रेस चालू है यहाँ पे? हाँ. King D6, G4, F capture, G capture, H captures, Bishop to D5 captures, Knight capture on D5 check, and King to D4. This is played. Oh, he let his king come to D4. तो बीस्ट भाई, यहाँ पे कुछ दिन पहले साहिल भाई ने एक कोट बताया था, जो बॉटविनिक ने पहले बार कहा था, किंग एंड पॉन एंड गेम और नाइट एंड गेम के बारे में. क्या आपको याद है? Knight end games are like king and pawn end games only. करेक्ट. तो इवैल्यूएट करो कि ये किसके लिए बेटर है, व्हाइट या ब्लैक? It has to be equal. अच्छा, मुझे लगता है white is better. By साहिल भाई, आप? Tiny better, I would say, because white के पास already pass pawn है. And his king is on D4 and black's king is on D6. So 4th rank versus 3rd rank. अगर यही black का king D5 पे होता, white का होता मान लो C3, E3, whatever, then suddenly black is better, I think, because he will push B4, A5 and create a pass pawn. So I think as of now, white is tiny bit better. And Gukesh, in the form he is, I don't think he will agree to a draw quickly. I think he will play on till the end. है ना? Yes, Gukesh will play on till the end, and he has 9 moves to make, and he has 15 minutes. We have 500 likes. It's a good moment to ask a question, right? Yes, ask a question and I will be back in 5 minutes. Chat, by the way, यार, I think the games are heating up. आज हमें काफी कुछ पता लग जाएगा regarding the medals. I think it's very obvious. Team A struggling right now. Team B trying to fight. I think हमें एक बार can we go through all the 4 boards of Team B? बार-बार मन कर रहा है, because I really want to check the evaluations क्या चल रहा है. Gukesh clearly slightly better, but most likely a draw. Okay, let's go to Nihal. Nihal की position बहुत complicated, Chad, and he was worse. And if we check his game right now, the knight on D6 making a very good impression for white. And the knight on E5 has some counterplay, but right now white is telling black कि तू मार भाई, तू B5 पे मार, मुझे C pass pawn दे दे. Nihal is not ticking. Luckily, the knight on E5 cannot be attacked. So whenever white takes on C6, I'll take with the knight. That's a very important detail in Nihal's favor. But the issue is white can anyway, play rook B1, play B6 on a good day, someday later on. Right now, knight is hanging, of course. And also white can, try to break this formation with a move like H4, I think. So that's also one more thing. We can play H6, luckily for that, to save it. वो हरिकृष्णा का गेम जैसा नहीं लग रहा है ये गेम. हाँ, it looks similar. I think characteristics काफी similar है, although position similar. He plays rook B1. So clearly white is going for it. He wants to get a pass pawn. Chat. Nihal needs to. I don't know. I don't know if it's a draw or win actually with perfect play. Indian कह रहे हैं कि it's kind of +1 something, but it might even be winning because knight on D6 कहते हैं knight on the 6th rank is worth a rook basically sometimes. And now white has put the rook on the B file. The second rook will come to D1 now, and then he will prepare a move like B6 slowly. And एक बार B6 आ गया, then the A pawn and the B pawn will be connected pass pawns. That resigns. If that happens, अगर pawn B6 पे pawn A5 पे है, black will resign. So Nihal clearly struggling. Maybe he will hold this. He looks under pressure. He's looking up at the air. Time pressure काफी बराबर हो चुकी है. 15 versus 9. At least that's one good thing. But looks very difficult, yeah. Yeah, so that is the situation of Nihal Sarin playing on the second board. On the third board, we have
Pragnananda playing against Durabel versus. So here is the game. And so Prag definitely improved his position. He pushed back the black queen. He's brought his queen on a dark square, played h4. So now it cannot be attacked by any black piece. Knight e6 is definitely not what you want to play, because I'll just play queen e5 and maintain the pressure. I will not open up your f file. And now my plan can be, to even just develop, maybe even on a good day later play h5, rook h1 on a good day, who knows. And I think Prag can put pressure here. It's still kind of, black is still having those active pieces, yeah, knight sare udhar hi hai. But if I had to choose a side, I would choose white, I think. And still, isolated pawn is the main issue. White d5 pawn kahin aur hota, I would say it's dead equal. I mean, this is great position, I think, compared to some moves earlier. Yes. So good Time pressure improvement. hai. Then it's a good time to check the fourth board, that is Ronak Sadhwani. So let me bring his camera. You can see. Oh, Ronak is it's not looking so comfortable now. h4, Yeah, what you said, yeah, the h pawn running. And in fact, he played my move, knight to d4. Instead, apparently, rook to g2. B-Stat's move was the best. I really don't know why, but it is the best move. Knight d4 now. भाई 20 भाई सब सुनते रहते हैं वो I know सुनते हैं, but मुझे समझाएंगे 20 भाई I think आके क्यों है. And now h4 played by white. He plays Niranjan bhai's move. भाई And यहाँ पे that move is really hard. The move that computer is suggesting, I find it really hard to play. Guess कर सकते हो आप क्या है मूव? हाँ, I think वो knight f3 कह रहे हैं, very difficult. तो वो नहीं खेला. He played rook f5. He played rook f5. And now white plays the best move. He takes on d4 immediately. b6 पे कोई नहीं है. b6 को बचाने वाला कोई नहीं है. हेलो लक्ष्य, नमस्ते. cd4 के बाद आएगा rook And b6. Rook b8. Chat, the issue is जो d4 pawn है ना, it cuts the access of the rook to the queen side also kind of. So now it's kind of difficult for the black rook to put pressure on b2 and a4 pawns. But white can easily do it. And he can also save the pass pawn with a simple h5 check. Yeah, so that's the उनका whole minimum point. maintenance लग रहा है उसमें. Yeah, this is going down for India. I think this board is very, very much in Azerbaijan's favor. So we are having 2 equal and 2 worse. This is not looking good for either team. हाँ भाई क्या हो गया क्या मेरा. As of now, Team B is, if the games ended right now, Evaluations TV would lose and Team A would draw, and दोनों के medal chances would take a huge hit. ओ भाई हाँ मैं पूछ रहा था कि क्या मैंने कौन सा मूव बोला था जो बेस्ट था. सब सुन के आ गए हैं. रुक जीतू भाई. भाई बोला था मैं खेलो रुक जीतू भाई. पर क्यों भाई मुझे समझ नहीं आ रहा जीतू. I don't understand रुक जीतू. मैं अच्छा लग रहा था रुक जीतू भाई. पास पॉन के पीछे जा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ थ्रेट्स क्रिएट कर सकते हैं किंग के ऊपर चेक वेक करके. अच्छा लगता है इसीलिए खेलना पड़ता है. अच्छा मुझे मैसेज आ रहा है, योर बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर, कांट वेट टू सेलिब्रेट यू. थैंक यू भाई यार. गूगल असिस्टेंट मैसेज करता है भाई. सही है यार. तो कब है आपका बर्थडे? इस पोजीशन में आपको ऐसे डर नहीं लगेगा मेरा रुक इधर है, रुक h2 पे आ रहा है? नहीं, the thing is I will simply play h5 check. आपका रुक सिर्फ शो पीस है वहां पे. That's the issue. तो ये है करंट पोजीशन और रुक b8 खेलने के चांसेस 101% है. तो दिस इज नॉट लुकिंग गुड. आई मीन पॉन चला जाएगा, फिर a5 भी चला जाएगा. मतलब वो b6 चला गया तो a5 चला जाएगा वेरी सून. फिर h5 पासर है, a4 पासर है, b2 भी जाएगा पासर. तो या इट्स नॉट लुकिंग गुड. आई बेटर नॉट सी दिस गेम for now. I think we must take one quick look at the women's section. Let's take a look at the women's section. In the women's section, we have Koniro Hampi playing on the first table, and we will come to Harika's game where we know that we have a great chance. For now, here is the game of Grandmaster Koniro Hampi. By the way, chat, ये तो draw, this will be a draw, right? Easy draw, right? एक मिनट साहिल भाई, आप मत बता इसका जवाब. आप मत बता साहिल भाई. रुक इनटू d2 मारे या ना मारे? साहिल भाई बताओ भाई. नहीं सॉरी, बीस्ट भाई सॉरी. By the update chat, USK one board is drawing right now. Caruana is completely winning. Armenia is completely lost. And fourth board पे जीत रहे हैं. So US will win 2.5, 1.5 right now. अच्छा.
most likely. And I will also update you on Uzbekistan versus Armenia. So unki team mein board 4 पे Uzbekistan is winning, completely winning. Board 3 पे it is still looking, it is completely winning for Uzbekistan on 2 boards. Then we go to the third board. It's equal, so 2.5. Oh my God, Uzbekistan will destroy Armenia 3.5. Huh? Really? Yeah, they are completely winning on 3 boards. Wow. Wow. तो आपने ये सब सूत्रों से पता करा क्या? नहीं आप चेसकॉम पे देखा मैंने. अच्छा. भाई साहब, chat is insane. भाई Uzbekistan. यहाँ पे रुक नहीं लेंगे भाई हम. नहीं लेंगे? अरे मेरे को पता नहीं कि उसका किंग ज्यादा ऐसे एक्टिव लगा. मैं सोचा अपना रुक पीछे ले आओ, पहले अपना किंग एक्टिव कर लो, उसके बाद एक्सचेंज करेंगे अगर मन किया तो. अच्छा. और अगर वो कभी भी अपना रुक हटाएगा तो फिर से रुक C2 चेक एंड उसको वापस रुक से पीछे आना पड़ेगा. सही जवाब दिया आपने. यहाँ पे ऐसे पोजीशंस में रुक को एक्सचेंज नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो पॉन स्ट्रक्चर है बिगड़ गया है, तो दैट इज द रीजन वी डोंट डू इट. इसका डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आपको पढ़ना होगा डेम, डोरेट्स्कीज एंड गेम मैनुअल. वो बिना पढ़े भी आपको आ सकता है अगर आप स्टार्ट हो तो. लेट्स गो गाइस. क्या फ्लेक्स है. वाह. ओके, रुक D2. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट गेम पे. दैट आई थिंक दिस इज अ ड्रॉ, वेरी लाइकली रुक C7 एंड ड्रॉस. लेट्स गो टू द गेम ऑफ ग्रैंड मास्टर हरिका दोनोवल्ली. As an update, chat with this game has ended in a draw already. It's already over. Already over. It's over. Oh. Okay. So here we have the game of हरिका यहाँ पे दोनोवल्ली. हम रुक क्यों नहीं मार सकते हैं? रुक को कौन सा रुक? अच्छा ये ड्रॉ मर तो रहा है ना यार E8 पे. अच्छा, मार के C6 मारेंगे, फिर E5 वो मारेंगे. हाँ. और फिर हम लोग D6 ला के By the way, हाँ. Sasikiran is drawing. Oh. It's equal. Can we go to the game quickly? He played that plan. It worked. It perfectly worked. Can we go to Sasikiran's game? एक बार please. Please. भाई साहब. Or we can have a look at this also first, but I think Sasikiran's complete drawing. So maybe Team India will still win. VD drew, chat. VD drew. VD has already drawn. Sashi can draw and he might win this. He might win this. Time देखो. Oh, भाई, do we have the cams? Niranjan bhai is like, क्या करेगा ये? दो ही हाथ है मेरे. ठीक है भाई, कैमरा भी लगा लेते. Now he's better. I think Sasikiran is going to cause an upset and he will win. Like he's come back spectacularly. उनका plan पूरा काम कर गया. And देखो ना, white का rook A7 पे आया नहीं, rook D1 में बैठा हुआ है. I'm just thinking कि इसको finish off कैसे करेंगे. I want to bring somehow my rook to the H file. ठीक है. And what else I want to do? I think यहाँ पे you just have to kind of hold, like you just maintain the pressure. I think as black. Is it? Just I think कोई clear blow नहीं दिख रहा. How did the evaluation change भाई? तो नहीं समझ में आ रहा है. Hard to see. देखना पड़ेगा कैसे हुआ game में. But I just saw the evaluation. Like it's crazy. It's better for black now. Wow, this is great. I mean, I am feeling that ऐसा हमारा जो evaluation change कल भी हुआ था B टीम के साथ. और B and भाई opponent के पास 39 seconds है and still there are like 12 moves to be played. So likely there are a lot of chances कि Sasikiran can put them in pressure. Nihal Sareen is fine. Nihal Sareen is absolutely fine. उसके opponent ने blunder मार दिया है. He blundered. He blundered. Nihal Sareen is back. लो भाई. क्या ब्लंडर हुआ? मैं भी देखना चाहता हूँ. क्या? ओ मेरी बात सुन ली, उसने B6 खेल दिया भाई. Did he play B6? ब्लंडर ये था कि even I was, उन्होंने पहले rook f d1 ही नहीं खेला. ये क्या था भाई? He directly played B6. He had to first play rook f d1, defend the knight, and then at some point play B6. उन्होंने पहले ही खेल दिया. He took the pawn and now pawn takes possible नहीं है. He took with the rook and Nihal cleverly does not take. He simply plays rook 8 and now the game is equal. Of course there's still some pressure. एक ट्रैप है. But ट्रैप ये है कि rook C7 खेल के knight D7 खेल सकते हैं. देखिए एरो तो दिखा दो. Nice. Chat, Nihal Sareen is back in the game. Let's go. तो एक बार Chat, time pressure में ना
this is where Team B has played really well, and I really hope they can come back. It's totally possible. And अगर ये A4 और C5 में से एक भी मरा ना, then I'm not sure he'll get the draw. I think Nihal will win. So ये pawn बचा के रखने पड़ेंगे white को. तो rook 8 is, I mean अभी कंप्यूटर तो ये बोल रहा है कि इंजन, I mean black is better. नहीं, clearly black is out of woods, no, because वो pass pawn ही नहीं रहे. C5 pawn, C6 pawn बराबर है. You cannot ever remove the knight on E5. That's the main important detail. Yes, and A pawn रोकना is much easier than A and B pawns. So I think this is definitely, of course, there's some pressure because A6 आएगा तो pawn pass pawn है. You have to be careful. But I feel somehow rook C7 जब आपने plan बोला is very strong. C5 pawn गया तो suddenly black is on top. तो एक बात हमें बताना चाहिए, वीडी का गेम ड्रॉ हुआ है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि वीडी is playing a team event, so he is also playing like a team player and is taking his time, and is black. I think it's a decent result. Draw is a decent result with black pieces in a team event. And he tried a lot today. He played some complicated variations. Your opponent अच्छा खेला. He just played a good game. You cannot force a win, no, if your opponent plays well. So and can we go to Parag's game quickly? भाई, now I really want to go to the women's section. हमें complete करना चाहिए. ठीक है. Just an update. Parag is plus 0.8. Update chat. So we'll come to it. भाई We'll तो come to प्रग it. देखते हैं ना एक बार यार, +0.8 है भाई वो. भाई मुझे एक काम करते हैं, सुनो सही काम करते हैं. Let's go to women's section once, see what's happening, and then we'll come back again. Okay. ठीक है. हमने कवर ही नहीं किया है, तो जरूर हमें करना चाहिए कि क्या हुआ है इनके गेम में. ये तो जीत रहे हैं. भाई So, देखो first chat में game क्या we चल have- रहा है, रौनक का गेम दिखाओ, गुकेश का गेम दिखाओ. We'll come there. आएंगे. But guys, Wait, it's chat. okay. 1 minute we'll come there. First of all, we have Harika's game right on the screen. Yes. And Harika happened, it spoiled happened. her edge, yeah? Completely spoiled her edge, I think. Why she spoiled her edge? Because now it's similar to what we saw for Arjun, right? Because it's like an endgame जहाँ पे बहुत weak pawns है white के, and they will be lost, I think, 1 by 1. And it's And better. even black के weak pawns है ना. हाँ, but the thing is, ये सारे pawn exchange हो गए तो it will be a draw, I think. Somehow it's difficult to win for white somehow. ये सारे pawn weak है. Rook E5 मर रहा है, knight D6, knight G5 मर रहा है. You don't have a clear target to attack, and black has a pass pawn on D5. Okay, I see one hope. The hope is that if white picks up A5 pawn, then we will have our own passer. हाँ, true. So that is one I think- hope. And white Harika will was- pick ना. अगर अभी black क्या E5 का pawn मारेगा तो I can play simply ना rook to C5 attacking both the pawns. You cannot push and defend D4, so A5 will be following. There's no way to defend. True. The thing is, Harika was +4 at one point. हाँ, So, the advantage has come Understandable, down. but हाँ, she lost one. Understandable. अच्छा. Okay, yes. हाँ भाई, और Mr. क्या भाई, ये क्या है भाई यार, मेरे को भी आता है चेस खेलने यार, ये क्या बेइज्जती डेली बेसिस. So let's go with the worst case scenario because most likely draw ही होगा. Yeah, whatever. So Okay. at least a draw here. Can we go to the game of Humpy now? हम्पी का हमने That's- देख लिया. था. आपको That's a निरंजन draw. में पता नहीं है, पर मैंने साहिल को भी बुलेट में हराया हुआ है, ऑलमोस्ट हराया हुआ है. Draw हुआ था भाई. अच्छा. ड्रॉ, बट योर पोजीशन वाज वर्स साहिल. एंड भाई ऐसा कोई बुलेट order में नहीं तुम था उसमें. पोजीशन एनालिसिस करोगे आप भाई हाँ लिटरली भाई, ये बुलेट मत में बोलो भाई, तेरे को बुलेट पता है, में पोजीशन अच्छा एनालिसिस खेला करोगे था या भाई. नहीं, ये हाँ या ना बस बता दे भाई. भाई ड्रॉ हुआ था ना एक बार उसके 50 तेरे भी तो नेशनल है मास्टर है भाई, नेशनल मास्टर है भाई. भाई नेशनल मैच इंडिया में कुछ नहीं हुआ है. ये क्या है भाई यार. Anyway, Okay. लगा कि लेवल पे Humpy मेरी is a बेइज्जती dead draw. चल रही है यहाँ पे भाई. Chat Humpy is a dead draw. I think Okay. there's no chance for any side. So Tanya has one each for drawn. now. So Tanya has drawn. Yes. Okay, that's 1.5 each roughly. So it all boils down to Vaishali against Olivia, yeah? Yeah, so let me quickly get that game. Vaishali against Olivia. Here is the game, and here is the camera. Black to play. नहीं, black ने खेला रुक दी. Time बराबर है and so far bishop against knight favor in white, but I think Yes. It symmetrical favors pawn white. structure kind of to some extent. Maybe tiny bit better for white, yeah. Tiny A3 bit, I pawn think. को बचाना चाहिए ना. हाँ रुक K1 खेलना पड़ेगा I think अगर जीतना है तो. तो And Humpy's then game has also ended in a draw, as you can see. Okay. I think white is slightly better. I think A6 pawn को attack करना is quite easy for white. For that reason, I think अगर rook A8 खेलना पड़ेगा मुझे, that's very passive. I know white ने भी rook A1 खेला है, but somehow rook A1 feels less passive than rook A8. Why is that the case, भाई? है ना? ऐसा लग रहा है देखने में rook A8 looks more passive than rook I A1 think it's somehow. I because don't know the why. bishop on b6. I think that is the Ah, reason. exactly. And it just looks a bit slightly weird. I think she will draw this. So most likely, if she draws this, उनका record रुक जाएगा 8/8 के बाद. And also I think as we saw on Harika's board, only she can win.
So India will get at least a draw. So women's section mein things are not looking so bad. All depends on Harika's game. Yeah, and Harika cannot lose this. So I think it looks really good for Team India as long as Vaishali draws. So with this, we can go back to the open section now. Maybe. Yes, now we can go to the Beast by and we'll go to the B group. Let's go भाई. मैं चैट में पूछ रहा निरंजन भाई बी स्टार्स का रिकॉर्ड तोड़ने का चैलेंज क्या हुआ, उसका क्या हुआ भाई? हाँ, मुझे थोड़ा और समय चाहिए क्योंकि मैंने आप टाइम लीजिए, नहीं हो पा रहा आपसे बता दीजिए ना सीधे. मैं ट्वीट कौन सा रिकॉर्ड? नहीं मैं ट्वीट करूंगा, जब मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा तब मैं ट्वीट करूंगा. इन एंड गेम भाई. कितना रिकॉर्ड है भाई? मैंने तोड़ा था ना, याद है मुझे. But I broke yours again. What is your record? Next hour 33.1 second I think. 33.1 मैं कर दूंगा यार. I broke your last time. इस बार भी broke कर देंगे भाई, कोई बात नहीं. वैसे ही broke ही हूँ. It's very easy. तोड़ दूंगा भाई. It's okay भाई. वैसे ही broke ही हूँ यार, कर दूंगा, कोई बात नहीं. Okay, I have not attempted yet, but when I do and I will update it. Definitely. हमारा ग्रुप भी है तो मैं ट्वीट में साहिल टिक्कू ने 1 सेकंड से ब्रेक किया था भाई. फिर मैंने उसको और इंप्रूव कर दिया 5 सेकंड. अब भाई वर्ल्ड अब उसेन बोल्ट 0.12 सेकंड से ब्रेक करता है. लोग उसके बाद क्या रे उसेन बोल्ट कर दिया था. उसेन बोल्ट क्या रे 0.1 सेकंड से ब्रेक किया रे तू. क्या यार, क्या बनेगा रे तू रनर? मैं तेरा 0.5 से ब्रेक किया भाई बाद में. अरे वो फर्क नहीं पड़ता यार. वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका है. नोबडी नोस द गाय. वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मेरा है, तेरा बाद में. तू सेकंड आया भाई उसमें. नोबडी नोस द गाय हु कम्स सेकंड. तू ही सेकंड है उसमें. But a guy should come second. Anyways, let's go. तू ही सेकंड है. Okay, all right, bye. Coming back, we are showing Gukesh by White Tiger Valorant. Okay, ठीक है. So we are showing Gukesh's game and knight has come to D3 and यहाँ पे होगा pure calculation का चक्कर. तो हमें मूव खेल के बताना होगा लोगों को क्या क्या हो रहा है. Honestly, I think B3 is an immediate draw, right? गुकेश के कैंप को बड़ा करके देखते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज. क्या वो खेलेंगे, क्या वो मूव खेलेंगे? लेट्स सी क्या सोच रहे हैं. Yeah, he'll play B3. I think B3 is very safe. Now it's getting a bit serious. No, हारना नहीं है. So B3 is an immediate draw chart. I think Gukesh will draw today. Why not keep your F pawn alive भाई? नहीं, B2 hanging है ना actually. Fork है वो. He's taking 2 pawns, so you have to save one. Fork है, but I want to save F5 pawn. Draw हो गया. हाँ, if he could. So finally 8.5 होंगे गुकेश. Yes, I think आज दोनों के 8/8 का रिकॉर्ड रुक जाएगा. It will go to 8.5. And but still, man, pretty impressive. Like he's playing the world number 9 in the world, and Karuna is not in great form by the way, but Mamedyarov is. So great performance, yeah. Still. एक और अपडेट ये है कि वुमेन ग्रैंड मास्टर फ्रॉम जर्मनी Jana Schneider also is on 8.5. He already played by B3, knight capture F4 and knight E4 check. And now knight E4 he played क्या? नहीं, not yet. Not yet. He played knight E4 check. Yeah, knight E4 check basically ensures कि king के पास रास्ता होगा, like to kind of advance forward. So knight E6 check there, I think it makes a bit more like there's no knight E6 check for black. I think that's the idea basically. Because otherwise BC4 knight E6 check is a bit uncomfortable. तो ड्रॉ तो होगा ये. दिस इज हाफ पॉइंट. लेट्स क्विकली Gukesh will draw, so chat, this is confirmed. I think pretty much there are not enough pawns on the board now, so half each. Can we go to board 2 or do you want to see the entire game finish? I think we can also see if you want. I don't know. निहाल में bishop A6 rook to C7 ये खेल दिया है भाई. या निहाल ने खेल दिया क्या? हाँ. तो you decide where do you want to go. Okay, let's go to Nihal's game. मैं तो draw हो गया. Let's go to Nihal's game. All right, here you go. You have Nihal's game. So Beast by and Sahil by. Is this a good time for both of you to continue? श्योर भाई, बिल्कुल कर सकते हैं. मैं मारपीट कर लूंगा. साहिल से बता रहा, आप रुक जाओ भाई. अरे डोंट वरी भाई, डोंट वरी. तो 1 मिनट हम लगा लेते हैं कैमरा ऑफ निहाल एंड ऑल द बेस्ट बाय. निहाल के पास 3 मिनट, ओपोनेंट के पास भी 3 मिनट एंड निहाल सीम्स टू बी बेटर. व्हाट डू यू डू आफ्टर rook C2 A7? Isn't Nihal just winning the A4 pawn? Chat, is Nihal going to come back and win the game for team B? रुक A1 खेला भाई बंदे ने. हाँ, तो रुक C A7. Gukesh has drawn, chat. Gukesh has drawn. So that's half each. Chat, what about rook A7? है ना? Yeah, उसको हटाना पड़ेगा ना. If you हटाया तो मार देंगे ना. हाँ, Bishop B7. You will take on C6, but that's not the same. A4 and C6 are not similar pawns. ये खेल सकता है. Once I take on A4, I get into your king basically, and that's very dangerous. Because याद रखो G4 move आ रही है, and if you take knight G4, king H3, rook H1 is mate. So वो भी बैक रैंक के चक्कर है यहाँ पे. या इसके बाद क्या खेलेगा? एक बार पॉन मार दो तो विल ही एक्सचेंज और कुछ और खेलेगा या नहीं? He has to play bishop B7. There's the free का pawn है. I just capture on A4 anyways.
नहीं ये रुक से मारेगा ना पहले. हाँ, but this looks dangerous as hell. I mean, this is very risky. You might take c6, but I'll play check and g4, and I think this should be over. Just rook a1 check, right? Rook a1 check. Looks strong. बाकी पता नहीं इंजन से मुझे बेवकूफ बोल इसके बाद क्या? Now g3, g4. Oh. Threat is g3 mate, and if you take knight g4, king h3, rook h1 is mate. So it's over, right? And तुम्हारे वो बिशप रुक वहां कोने में वहां डिज्नीलैंड में पार्टी कर रहे हैं. नीचे किंग की मेट हो गई. So can we go back? Ronak, Nihal position. Can we go live position now? Chat. Yes. Come on, Nihal, you can do this, man. You can do this. If you find this move, you're Gukesh का definitely... draw हो गया already. अरे यार, he played knight to d7. He missed that move, chat. He played knight to d7. He missed the critical move, and now suddenly it's still okay for him. But he had a crazy winning chance there. I think it was kind of, I don't know how he missed this. That was the first one that came to my mind at least. But अब क्या करेगा पर ये दोनों अटैक दे तो? Yeah, knight d7. Maybe he will have to sacrifice an exchange at some point. Maybe bishop b7 anyway. What's bishop b7? Attacking the chat time पे दोनों के पास है. दोनों have very limited time, so you will see a lot of mistakes. No wonder Nihal did not find the best move. If he had more time, he would have easily found it. But then I will capture here too. Yeah, but then I will take the pawn, and it's like connected pass pawns again, and this looks lost. A8 भी hanging है, c7 hanging है, it looks completely lost. Anisha can देखो group sack. I don't know if we have time. Let me quickly check if it's crazy or not. I don't see the rook sack. अच्छा, mistake था रे rook sack. Unfortunately, blunder बोल रहा है chess.com उसको लाल कलर में है भाई. Okay, I wish we not have a look then. Okay. ये वाला ऐसा तो rook sack और queen sack तो daily करता हूँ यार मैं. देखने आ जाया करो यार. By the way, black has in Plug's position has also improved his position. So not looking clear now, chat. Plug advantage, I think he has lost a little bit. जो Plug का game पे चलता ना फिर. I think somehow black took on b5, and the knight on d4 has too many jobs to do. b3 defend करना है, b5 defend करना है, and d5 pawn को भी रोकना है बढ़ने से. It looks a bit. It's not looking that comfortable. Like it's not better now at least. ऐसा लग नहीं रहा देखने में, मजा नहीं आ रहा देखने में. He played g5 his opponent. Chess.com को कुछ मत बोलो. हमने क्या बोला Chess.com को? बोला क्या Chess.com को? पता नहीं. Okay. So also Ronak game क्या चल रहा है यार? Is Ronak holding or not? Ronak, let's see. Ronak is still worse, chat still worse. It looks difficult for now. ये pawn कैसे बचाया उसने? उसने bishop defend कर लिया ना basically. अच्छा b6 से बचाया. Oh, that's an interesting detail. He played rook e5 check, king d2 and rook f5. He threatened rook f2 check, I think. Check. And if rook takes b6, I think rook f2 check, like you basically activate your pieces. I think that's how he. White को थोड़ा लगा कि maybe it's a bit risky. He played rook d8 instead, and now I think he will slowly push the h pawn at some point. And then I'm still not sure about the winning plan here because king is kind of cut off. You can't go to b3, bishop controls. You can't come to f5, rook controls. अच्छा एक बार बताओ ये check दिया किधर जाएगा? I think king c1 would be the most obvious move. King c1 यहाँ जाऊँ मैं? अच्छा नहीं ये तो अपना bishop ही मर रहा पहले. हाँ exactly. मैं सोच रहा था पिन करके इसको. हाँ bishop b3 but maybe not possible. I think वो f pawn के लिए खेलेंगे हम फिर. The king इतना दूर चला गया f pawn push कर सकते हैं. Chat क्या लग रहा है यार? I'm not so sure today. It's not looking that great for both teams, right? अब तक के लिए it's very confusing if they will actually win. We cannot afford to lose because Uzbekistan will defeat Armenia, so they will go to 16 points and Armenia will be on 15. So वो दोनों टीमें तो आगे होंगी और उनके अलावा कितनी आ जाएंगी ऊपर कुछ पता नहीं है. So I think we really need at least a draw today to maintain our chances. And team B की बात करो. Team 1 को तो जीतना है. They cannot afford a draw actually. They cannot afford a draw. Update please. Yes. Guki drew, chat. Guki drew. Gukesh drew. Vidit drew.
Nihal Nihal also draw drew. नहीं होना चाहिए यार. Nihal Yes, yes. drew what? Nihal drew, yes. Oh, okay. This is not looking good, Chad. Nihal had a great opportunity. Like this is the final position is drawn, yes, but he had rook c a7. He missed it completely. हाँ, पर रुके ऐसा ना क्यों नहीं खेला होगा यार उसने? Yeah, it's weird, no, because it's the most obvious. You get the a4 pawn, and like I saw this g4 idea, like it's in a second. So once you see this, rook c a7 becomes obvious. Maybe I'm not seeing something he saw, some complicated version where maybe white was having some chances. But yeah, man, I think rook c7 was a very challenging move for white to face. So Nihal has drawn. It's 1 each now. So that means Prag ke haath mein sab kuch hai because Ronak is still worse. India 2 can lose this. Prag is also worse now. What? How come? अब प्रग और रौनक पे है ना सबका. Oh no, this is sad. Chad, this is not looking good for team 2, unfortunately. This is not looking good. Prag is also worse because I think he's basically lacking a plan now. Why black ने अपने king side pawn फेंक दिए आगे. And ये h pawn अकेला पता नहीं वहां कर क्या रहा है अब. Like it makes no sense for the h pawn to be there because it cannot be used in any way. And yeah, as you can see, chat, team A may we have 1 draw so far. Team B may it's 1/2, 2 draws. Team C has won 1 game, but they have no chance for a medal. Women's team we have had 2 draws. B section, C section, we again have a couple of results, but we don't have any chance for a medal. So we cannot have team B losing and team A drawing. That would be really sad for both team Indias. Women's team going strong, by the way, still. But if the open team has to win, Prag needs to do something. The position is complicated enough for him to come up with something, but as of now, it doesn't look that great. Yeah, and both are very low on time. Still 5 more moves to be played. Yeah, if they both draw, it's not so bad. If they both draw will be acceptable. But will they both draw? I'm not so sure, chat. रौनक तो already ऐसे worse दिखा रहा है. Ronak is worse, Prag is worse. But एक ही मूव का बात होता है चैट. एक मूव गलत खेल दो and draw हो जाता है या लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है. True. And he has played b4, and apparently the move knight to a4 is giving black a huge edge in this position. Attacking the rook on b2. Knight to a4. Yes, it's -2 for black if he plays knight to a4. Oh, bhai. The idea being after rook to b3, there's knight a to c3, attacking the b5 pawn and the rook on d1. b4 from Prag is a blunder. That's a big oops from Prag, and but it looks like a human move, chat. Looks very obvious. I really hope Durbaili ji nahi nikalenge time. He does not find it. Thank God, by Nikala nahi unhone. What did he play? He took on b4. He took on b4, but still better for him. Still better for him, chat. Still really better. He can play the move knight c3 now, attacking the rook on d1, and this looks difficult. Still looks difficult, chat. I hope he falters. Durbaili ji na khele अच्छी moves यहाँ पे, कुछ blunder कर दे. It's a normal खेले, कुछ something specific. Yeah, chat. Ronak's position is in the endgame, so somehow holding chances ज़्यादा है because Prag में it can go from he's touching the knight, doesn't look great. He plays the move knight to c3. Chat played by black. This looks really risky now. This looks really risky. Rook d2 दिखा रहा है इंडियन, तो भाई मैं सोच रहा rook c1. And the problem is, chat, after rook d2, black will play rook to a8. That is the issue. And the black rook is coming to the first rank. Our king is not safe either. Black has 2 knights. If the knight comes to g4, it will be curtains. So, Prag had a great position and somehow he spoiled it in this game. And let's see what he plays though. Rook d2 played. 38 moves have been passed, chat. They need to play 2 more moves. Black has to play 3, of course. Chat, I'll be back in 1 second. Yes. And chat में क्या कितने moves हुए? Can we go to full screen? एक second camera off करना पड़ेगा. हाँ. Looks difficult, man. Okay. वापस आ गया. हाँ, मैं तो रहता ही हूँ. नहीं आपने भाई ये नाइट वापस आ गया भाई पीछे. अच्छा.
and he took the rook back, rook to d1. फिर से क्या रिपीटेशन हो repeat गया तो करेंगे ये बहुत अच्छा रहेगा. लोग? Repetition is good chat for us. Actually इसका अभी कंसीडर करते हुए अभी करंट पोजीशन को. Will he repeat the moves? Will he repeat the moves? If he couldn't find anything else, he will play knight to c3. Looks difficult, man. And rook to d2 will be incoming. वापस आ गए क्या भाई? Knight to वापस आ गया. I think उसको कुछ मिलेगा नहीं 1.5 मिनट में. He repeated it one more time. नहीं भाई ये 2 बार हो गया, बट दिक्कत है कि 40 मूव तक वो हो सकता है पहुंचने के लिए सिर्फ ये कर रहा हो. क्या? 40 मूव के बाद बैठ के मैं सोचूं आराम से. Yeah, this is a common strategy used by the grandmasters. रिपीटेशन रुशिल पूछ रहा है और उसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं. 2 मिनट ऐसा चल रहा है दोनों के पास. 2 मिनट है. रौनक देख रहे हैं. 39 30 40 मूव हो गया है ना. ही कैन जस्ट एक्चुअली एक और रिपीट कर सकते हैं वो, है ना. करेक्ट. एंड उसके बाद ही आराम से 40th मूव पे बैठ के सोच सकते हैं भाई. ये प्रॉब्लम आ रहा है आपको अपने को. तो 20 पे आज थोड़ा टेंशन में चल रहा है ना सब कुछ. हाँ यार कुछ ये जब भी ये वाला बोर्ड पे खेलते हैं हारते ही है भाई. वो 4 वाले पे लगाओ भाई अपना गेम से यार. तो यहाँ पे हाँ. ओके सो एक बार हम अपडेट दे देते हैं कि सी ग्रुप में वी आर 1-on-1, बट अभी 1/2 हो गया. पराग्वे में ग्रैंड मास्टर गंगुली हार गए हैं उनके अगेंस्ट, पराग्वे के अगेंस्ट. तो पुरानी अभिमन्यु जीत गए हैं. और इंडिया बी आप देख रहे हैं खेल रहे हैं अजरबैजान से. 2 ड्रॉज हो चुके हैं और इंडिया वर्सेस ब्राज़ील में 1 ड्रॉ विदित ने किया है. और वुमेन सेक्शन में हमने 2 ड्रॉज किए हैं ए कैटेगरी में. और इंडिया नंबर 2 में हमें एक विन मिला है थैंक्स टू द विन ऑफ मैरी एंड गोम्स. एंड इंडिया 3 में वी हैव 2 ड्रॉज बाय ईशा करवड़े एंड विश्वा वासनावाला. सो दैट्स द रीजन वी हैव 1/2. एंड इट्स टाइम टू स्विच. Enable disable. क्या चल रहा है? This is already move 40 यार chat. So he can even go back to knight to e4 and एक बार और भी रिपीट कर सकता है. and then he will be 40 मूव हो जाएगा. नहीं तीसरा बार नहीं कर सकते भाई. तीसरा थोड़ी है वो, सेकंड टाइम ही होगा उसका. एक मैं दिखाता हूँ देखो. तो ये हो गया फर्स्ट टाइम. हाँ ये हो गया सेकंड टाइम. He plays second knight to e4. He plays second knight to e4. Knight c5 e4. अच्छा अभी बदल गया. सब बदल रहा है. But this is not the best move apparently. Rook c2 now gives Plug some chance to hold. Now 40th move is reached, guys. Yes, that is a great change in the evaluation. Really helping Pragnananda. And I think enable disable Sahil bhai. Now you can play rook to c2 chat. इक्वल हो गई पोजीशन. यस सॉरी इक्वल हो गई चैट. बीस्ट बाय. हाँ भाई हाँ. अच्छा मेरे को करना है क्या? तो ही हैज ऑर्डर्ड आलू टिक्की आई थिंक. या ओ बर्गर. ओके ऑलराइट कमिंग बैक टू द गेम्स. हाँ मतलब मैं बर्गर मतलब मैं कालू टिक्किया मंगाया और कुछ नहीं. कुछ सेम ही है. मैं KFC का मंगाया. Rook c2. I mean, I want to understand why there is such a big difference in that move. For example, ये अगर हम knight वापस ले लेते तो एडवांटेज बहुत बढ़ रहे हैं. क्यों? Rook d1 पे क्या है? Rook 8. अच्छा ये मूव मैं समझ सकता हूँ. ठीक है. ओपन फाइल. हाँ क्यों? हाँ ओपन फाइल तो है पर अभी भी तो आ सकता है. इस मूव के बाद भी आ सकता था. तो उसको हम कंपेयर करेंगे. यही मैं करता हूँ हमेशा अगर मुझे समझ में नहीं है. I think Rook b3 आ रहा है. And you can basically threaten to take both the knights for the rooks, I think. Rook b3. ये नाइट अभिमन्यु है क्या? नहीं, नाइट वापस तो जा सकता है अगर चाहिए तो. अरे जाने का जरूरत भी नहीं है. मैं दूसरा रोक ले आऊंगा सी फाइल पे. नहीं वो गलत हो जाएगा. F5 is hanging. F5 is hanging. F5 गया तो Plug will start winning the game. तो यहाँ पे मतलब ये मूव हम पूछ सकते हैं. बीस्ट बाय साहिल को पूछ सकते हैं. भाई साहिल भाई यहाँ पे एक ऐसा मूव है जिससे व्हाइट को इमीडिएट एडवांटेज मिल रहा है. ढूंढो भाई, ये आपके लिए टेस्ट है.
मतलब डिफिकल्ट है मूव में, पहले ही बता रहा हूँ। यो बीस्ट ऑफ स्क्वाड इक्वल होगी पोजीशन गाइस। वैभव दुबे अप्रिशिएट द अपडेट, थैंक यू वेरी मच। Prag should win. He's tricky in these positions. I also want him to win. Let's see. Prag equal now. Yes, very good. Draw करो guys. हमारे हाथ में नहीं है भाई। भाई ऑलरेडी इंडिया में 3 ड्रॉ हो गए। क्या तानिया हम पे हरिका तीनों के? हाँ हरिका कब भी हो गया ड्रॉ? हो गया खाली वैशाली का बच्चा है। ओह And chat, You can Vaishali upgrade the Kabi, I scores think then. will be a draw. I think, in fact, she's worse actually, but she'll be a draw. So women's का I think tie होगा chat, 2 each. That's good for us. That's really good. It's really good. गेम क्या बहुत टेंशन है भाई आज। भाई ये गेम में क्या हुआ है? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। ये हुआ है बस रुक D2, बस यहाँ तक हुआ है सब। उज्बेकिस्तान वर्सेस आर्मेनिया में क्या अभी कुछ अपडेट है क्या? I'll let you know. Uzbekistan are completely winning at one point, I think. Uzbekistan जीत रही है यार. The positions they had, they're completely winning. I think they will win. US will also win today. यूएस के किसके साथ था? Against Greece. They will win 2.5, 1.5, barely. Okay. Ronak, what's happening? I'll check. It's the same position. Huh? Nothing happened in Ronak's game. Okay. Interesting. रौनक एंड प्रग। अपना हरी का क्या चल रहा है? हरी इज ही डूइंग लाइक समथिंग? आपको देखना है? हाँ बिल्कुल लगा दिया मैंने यार। Okay, this is the dead draw. I mean, this is the dead draw, right? I mean, कुछ भी नहीं है. This is a dead draw. So Hari Krishna will draw. So he is not winning. Then second board VD has already drawn. हाँ शशि किरण। अर्जुन पहले, I think अर्जुन है ना? अब तो लगा दिया शशि किरण का। शशि किरण देख लो. Somehow White survived. So and they have reached 40th move also. Yeah, now it looks more like equal to me. Okay. No, because the thing is, Black's piece is all piece. Like Bistrock is very active, and because pawns come बच्चे हैं, I think a move like G4 might also happen someday, and this should be equal. I think if G4 happens, ब्लैक का मूव नहीं है ना? मैं सोच रहा ब्लैक ये खेल के ये खेल सकता है। हाँ, so basically once I play G4, Knight F6 ऐसे करके Knight E4 आके बैठ जाएगा. That's a dead draw immediately. So I think it should be equal. Yeah, but yeah, exactly. Yeah, I think Black is not risking anything. That I think most likely draw ही होगा because pawns बहुत कम है. अगर ये F pawn हट जाए ना somehow, then suddenly Black can start pushing. I think. And अर्जुन की गेम में क्या चल रहा है? Yeah, Armenia lost. We saw it. Not in great form as well. ये देखो भाई हो गया भाई। आप बोल रहे थे ना रुक एक्सचेंज, सब एक्सचेंज मतलब क्वीन एक्सचेंज वो हो गया। आप मैं exactly सेंड गेम की बात कर रहा था. Like Black has one extra pawn. हाँ. And you have 2 rooks, and now it's difficult to win because you have no weakness to attack basically. है तो King G6 है ना अभी? King G6 है ना? King G6 है। तो ये भी ड्रॉ। तो सारे ही ड्रॉ ही हो रहे हैं क्या? आज कोई नहीं जीतेंगे क्या हम एक भी बोर्ड? अरे होंगे भाई, कुछ रिजल्ट्स आएंगे अभी। पक्का? अभी तक तो नहीं देखा भाई। जो मेडल जीतना है उसमें किसी का नहीं जीत रहे भाई, सब ड्रॉ। Team A, I don't think can afford to draw actually. I think they will lose their medal chances. Like फिर तो वही है कि बारिश पड़ जाए मैच के दिन, like वो वाली उम्मीद है। तो ड्रॉ साहिल भाई, हिमेश जैन पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए एक स्वैग से स्वागत करेंगे। हेलो हिमेश जैन, नमस्ते। और अपडेट देंगे साहिल भाई। अब अभी आप देखो कैसा यार, इतने लोग अभी बोलेंगे वाचिंग फॉर फर्स्ट टाइम कि आपको पता चले। करना सबका स्वागत से स्वागत। हिमेश भाई स्वागत है आपका। स्वागत नहीं, स्वैग से स्वागत सिर्फ होता है इधर साहिल भाई। हाँ, तो बेसिकली भाई यहाँ पे इंडिया का मैच चल रहा है, एंड एज ऑफ नाउ आई थिंक थिंग्स आर नॉट लुकिंग सो ग्रेट, लेकिन अब आप आए हो तो भाई थिंग बढ़िया हो जाएंगी, मुझे लग रहा है। स्कोर्स अपडेटेड है नीचे। सोचो अगर हिमेश के आते ही हम लोग जीतने लगे तो हिमेश लकी हो जाएगा। तो हिमेश को भाई मेंबरशिप गिफ्ट और वो रोज आएंगे भाई चैट में। उनको लिटरली मेंबरशिप दी जाएगी, आप आ जाओ बस।
How Harika drew, wasn't she very better? Yeah, I think she lost she her spoiled edge. advantage, I think, at one point. रौनक इज लूजिंग भी चल रहा है भाई चैट में. तो क्विकली देख लेते हैं. Honestly speaking, यहाँ पे वाइट के पास okay, so दो पास पाना. यार यहाँ समझना मुश्किल था. You really need time to understand. But apparently, according to the Indians, white की best move rook d7 है, which is not an easy move to play, honestly. Once you see b5, you want to interact in some way with the pawn. And अगर bishop rook d7 नहीं खेलते हैं, बाकी सब variation में रौनक is folding most likely. So maybe a practical choice. Let's see what white plays here. बहुत important moment है white के लिए. लेकिन clock में तो दिखा रहा है कि रौनक की move है, right? Something might have been played ना. नहीं आप क्लॉक थोड़ा मतलब लाइव पोजीशन लाइव में देखेंगे तो इट इज द सेम एंड ही इज थिंकिंग. तो कुछ चक्कर है. I think maybe he did not. I don't know what's happening. I don't know. इट्स वाइट्स टर्न. अच्छा, और मेरे को रौनक लगा हुआ बैठा हुआ. अरे यार, he looks a bit like मेरे को रौनक. भी रौनक ही लग रहा था. मेरे को लगा रौनक बैठा हुआ है. He literally looks like रौनक, है ना? Sorry यार. Even I thought it's रौनक. Levon lost. Yes, chat. Levon lost. Okay. Yeah, white is Raunak, thinking. guys. White is thinking. Can you find rook d7? rook d7, rook e4, ये सब मूव अच्छे दिखा रहे हैं. इंडियन भी दिखा रहा है. But अपन Chat, क्या the खेल idea सकते is, हैं? after rook d7, I'll give, if you take on a4, let's say, I will play h5 check. Oh. And then you go back to the king to g7, and then comes bishop g4. h5 check. I will. Why I'll go Pawn से, back? pawn से, भाई pawn से. अच्छा sorry. वही मैं सोच Bishop रहा है. से नहीं भाई. मैं सोच रहा मार रहा है. King g7. ठीक है. King g7. King to g7. पीछे खत्म. And now bishop g4. Now bishop to g4. And the issue is somehow bishop e6 भी आ रहा है, and h6 भी आ रहा है, and you have too many threats. Like I think the bishop is pinned basically, and ये h pawn will decide the game. Let's say you play rook to e5. I don't know, to stop bishop e6. Yeah. Now h6 check. Oh. Pawn push, and you can't maintain protection because king g8, h7 check, king g7, rook takes f7, and the game is over. So I think यहाँ पे rook d7 is very deadly. I'm really hoping white doesn't find it, because otherwise this will be very, very difficult. Rook d7 के बाद apparently bishop to g8 is one of the only moves, but that's very difficult and also looks very awkward. So I think the best case scenario is he does not find rook d7. Draw is also okay for the team 2 chat. Draw is also okay. It maintains their chances for gold, I think, for a good medal at least. Yes, Gukesh has drawn. Nihal has drawn. 2 game बचे हैं. Raunak is worse and Parag is also worse. So both games very critical. Parag has played rook c2, by the way. I just saw. Let's see what Raunak's opponent plays though, because it's a critical moment. Yeah. rook d7 मत खेलना यार. कुछ भी खेल देता है. मार देना. पॉन मार दे. दिक्कत क्या है तेरे को? पॉन मारने में क्या हो रहा है भाई? हाँ ना, पॉन मार रहा आराम से. पॉन एक्सचेंज करो. सारे पॉन एक्सचेंज कर लो. मैं तो कर ये वाला ऐसे ये वाला एक्सचेंज कर लो. फिर इधर खेलते हैं ना, इस साइड एक साइड पे. क्या कह रहा है? सही तो बोल रहा मैं. चैट में क्या चल रहा है? रौनक लूजिंग, गुकेश ड्रू, कनिष्क राजपूत. यस, एवरीवन कैन कमेंटेट भाई. व्हाई नॉट? जितने लोग चैट में हैं, सबके सब एक बार हाय लिख दो भाई. दिखाओ भाई कौन कौन है. And I would love to know, chat, what do you think? Will Team India manage to hold today? Looks difficult, man. Once Gukesh stopped striking, suddenly it became very difficult. Yeah, I think that tells you how difficult it really is to play in the Olympiad. Gukesh, made it feel very easy, honestly. Yeah. मार दे रे पॉन बाबा.
कितना सोचेगा? कितना टाइम है इसके पास? 30 मिनट से टाइम भी तो ज्यादा है अपने से. Parag may strike, possible, but for now he's trying to be equal. Yeah. आज कुछ वैसा एक्साइटमेंट नहीं आया यार, कुछ ऐसे क्रेजी गेम्स. जीतने रहे ना. Suddenly हाँ, these guys start winning. राहुल. तो मैं भी कुर्सी में अब खड़ा हूँ अभी. हाँ, राहुल गायकवाड़ इज देयर, रास्ता किलुआ, शांतनु नीलाद्री, सैफुल, सहदेव, दर्श, मनव, चेस, जितिन, ऋषभ, प्रतीक और एक्सन, श्रीवी, टोटोरो, चेस्का, सैफुल, अग्निश, अमरीश and Gaikwad. Thank you everyone for being here and hello. Agnish, so far Armenia is losing against Uzbekistan. They have not lost as clearly, but they are losing almost all the games. Oh. And we'll be doing a giveaway at 600 likes, guys, and it is very close, just 36 likes away. So please do, 26 likes away. So please like it and let's move on, bhai. I'm just waiting. What will he play? Let's quickly go to Pragna. We'll see. ऐसा board पे जब change होगा तो पता चल ही जाएगा. Keep the cam on Ronak's only board only. And तो लोग Prag का देखते क्या चल रहा है. Knight b2 e4 पे rook c2. He played the best move. And he played the king. He played the king. Yes. Oh, let's go. Can we go to one of those games of this? Please. Yes. He did not play the king. That's awesome. Yes. Can we check? What did he play? He played king e3. He played king 2 e3. Insane. Insane क्यों है पर वो इतना? अरे मतलब नहीं खेला ना बेस्ट मूव. हाँ बट इतना स्पॉइल हो रहा है क्या पोजीशन इससे? एंड हो रहा है तो कैसे हो रहा है? वही मैं देख रहा हूँ. I'm opening the game. Let me see. So he played king 2 e3 and so the thing is it's a good move overall. I think it's not a bad move. Clearly king develop हो रहा है. But now if black got extra tempo यार rook d7 से पहले. Even rook f1 feels tempting now, right? मैं तो कह रहा हूँ मार दो ना. मार दो भाई सीधे यार pawn. हाँ, but rook f1 bishop e2 maybe is not clear. I was thinking like rook f1 bishop e2 rook b1 but somehow वो b pawn ना थोड़ा डर लग रहा है मुझे देख के. Maybe not. Oh, what can you play here? No 9-0 guys. 8.5 only for today. Come on Ronak, come on. And 16 likes away guys. Let's go. Chat, maybe Ronak holds this. Maybe he just holds this. Luckily, opponent did not find rook d7. If he had played rook d7, I think Ronak would have lost. Unfortunately, I think he would have lost because it was just too practically difficult. नहीं यहाँ तो सीधे मार दो ना pawn को. pawn मारो फिर क्या? बिशप से मारेगा? अगर pawn मारता रुक से भी मार सकता है. हाँ, रुक से मारेगा. You could take the pawn. I don't think he played my move. Okay. What did he play? Hopefully that will not hurt him. He played my move, rook f1. Okay. That was the first because if I capture the b2 pawn, no, then suddenly I can stop the b5 pawn from behind also. That was my idea, but I'm hoping it works because the bar doesn't like it too much. Rook f1 with bishop f3 is a strong move. Apparently, chat. Bishop f3 is a strong move. He played rook f1. Let's see what happens. Come on. Make him one more mistake, man. One more mistake. Come on. Which Prague is also fighting. Yeah, I think he's slightly worse. Now the position is equal, but at least practically he looks slightly worse. So both players battling for equality here. Chat, board 1, Gukesh has drawn. Board 2, Nihal has drawn. And I think we need at least a draw. Winning के chances कम है. Draw भी मिलेगा तो we will at least be ranked second in the standing. So we'll have chance for gold and silver and so on. हार गए तो बड़ी problem होगी भाई. So आज कुछ तो करना पड़ेगा. Yeah, this was my plan exactly, Viz bhai. ये रुक पीछे defend करने का. And this should be comfortable. But the issue is कि this might not happen. That's the issue. ये पर वो क्या करेगा अगर मैं b1 गया हूँ ये इसके बाद क्या कैसे बचाएगा ये pawn? नहीं, he will not play bishop e2. I think bishop f3 is apparently stronger. Bishop e2 नहीं खेलेगा, क्या खेलेगा? Bishop e2 rook b1. Bishop e2 rook b1 surely. Oh, bishop f2 बोल रहा है. f3. Bishop f3. c2 नहीं, f3. He plays bishop f3. Exactly, he plays it. He plays bishop f3. Why bishop f3? It's more active, no? I can actually support the pawn on b7 now. Bishop e2 कुछ कर नहीं रहा ना? Because now when I take on b5, I can support the pawn also.
Rook b1 doesn't work now. I think 8 b5 wins for white. Oh. Because bishop c6 aa raha hai, and that's a very strong pawn. So Ronak needs to find it's not easy now. It's not easy now. Rook e1 check is one possible move. bf4 is one possible move. Not easy chat. Not easy. Both players matlab on different boards by. Arey yaar, it looks difficult, man. Looks very difficult. Both players fighting for equality. Tickoo 2022. ऐसा बोला गया तो मैं बीच में. हाँ, वो दोनों बोर्ड के लिए बोला था. भाई नर्वसनेस हो रही है यार मुझे अब. Draw doesn't help ना. उज़्बेक तो जीत रहे हैं. Yeah, but at least Armenia के equal आ जाएंगे, and tomorrow we'll play Uzbekistan, and if we beat them, we go ahead. There's a legit chance we do it, and if we lose to Uzbekistan, we anyway won't have a chance. So what I feel is कि draw तो compulsory है. हार गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार. बहुत मुश्किल हो जाएगा. हार गए तो बहुत मुश्किल है ना. ड्रॉ हो गया तो एटलीस्ट 1 पॉइंट तो मिल रहा है अपने को. हाँ, एक मिलेगा तो चांसेस मेंटेन रहेंगे 2 राउंड के बाद. And we rank second still. So बिशप f3 के बाद है p कैप्चर e4. भाई मैं तो कह रहा हूं मार के खत्म करो भाई. As an कौन update, बीटी है. Harikrishna is still drawing, nothing spectacular. Dead draw है. Arjun also still drawing, nothing spectacular. Sasikiran is still playing. He played knight f6, still equal, but he's trying to push. He's slowly trying to push. And if anybody wins, it's Sasikiran. So team 1 still has chances to win this match thanks to Sasikiran. I think he might be the one to basically help India win this. But okay, for now it looks equal. Come back. Let's see. Ronak has an all-important move chat. Apparently, you know, any move apart from rook e1 check and bf4 loses. And we do again. Yeah, I think today he tried, man. He really tried. He really tried to, you know, launch an attack on the king side, g5, knight h5, put on a khela, but it did not work out. White simply simplified and ended an endgame. So there was no chance for him basically. Black pieces is mushkil rehta hai. It's very difficult, man. It's very difficult. Ronak playing something. Hopefully he has something clever in mind in this game. भाई क्या उठाने वाला है भाई. रुक उठाना भाई. रुक से चेक ध्यान से देना. उठाना भाई. जो भी करोगे रुक ही उठाएगा, बट कहाँ चलेगा, that's the issue I think. बट रुक से चेक क्यों. पहले पॉन मार दो ना यार. a4 वाला क्यों पॉन. a4 वाला पॉन तुमको देख के बीट ही नहीं हो रहा बार बार कि वो कब कैप्चर करके ले लेगा. वो है. He's playing. He's going to capture the pawn. He's thinking. He didn't capture. He push. Oh, bhai, he pushed the pawn. And now how do you defend this pawn? This pawn is very weak, na? a5 pawn. No, the thing is, it's difficult to attack. But if पहले क्या था chat? एक pawn था. So even, you know, even if you lose that pawn, कहीं drawing chances रहेंगे. अब क्या है? If one pawn falls, you resign. If a5 pawn falls and the a pawn runs to 8, bishop supports it, you resign. So now Ronak is going for the ambitious play कि भाई ठीक है, I want to take on b2, push my own b pawn. So it's double-edged now, more double-edged. लेकिन it's also worse for him. Like objectively, it's worse for him. And Shashi is winning, guys. Chat लिख रहे हैं. Chat. Oh, मैंने अभी बोला था he was better. Let me check. Is he winning? Chat. Oh, he managed g4. He exactly played what I told you. g4. He exactly played what I told you. Knight f6 and g4. Exactly that. And now, if you take on f6, there's an intermediate move. Bishop takes f3. That is the problem. And Sasi will try to win this chat. I think he will. Rook d3 from white now. And so Sasi might just, you know, if India 1 wins, 2 loses, we might have India 1 against 2 tomorrow. And whoever loses is out. Sorry. If India 1 wins, we might have, and India 2 loses, we might have India 1 against India 2. पर last 2 day पे ऐसा नहीं हो सकता ना. Last day पे second last पे हो सकता है, I think. Ideally, chat, India 2 has to draw. They cannot afford a loss today. They really need to figure out that motivation. You know, yesterday they're playing the US, so clearly US is a strong team. Like you feel pumped up, yeah. But suddenly after that you feel like having a low suddenly, and वो motivation maintain रखनी है. Hopefully they can find out some good moves.
let's go back to Group B. I think maybe like this will take some time. Let's go back. I think here the only question is, do we win or draw? I think वहाँ पे तो we have chances of losing. As an update, Vaishali is still playing on. She's spawned down, but is theoretically drawn. So I expect that to end in a draw. Chat, Ronak's evaluation has चैट dropped. कह रही है भाई लास्ट 2 डे पे नहीं हो सकता है, तो इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी नहीं Really? होगा। Oh, then it's awesome. है Then it's भाई, awesome. पर पता नहीं। But of course, it's not awesome if India B loses. So it's not really awesome, yeah. But yeah, okay. यहाँ पे rook d7 again is plus 3.5 for his opponent, chat. And the thing is, it's pretty similar. Nothing changed. After rook d7, the plan is similar, yeah? h5 and so on, simply pushing the h pawn all the way. And the rook on f1 is now even not there for defense. Like rook e5 bhi nahi hai hamare paas. And this looks rather bad. Even bishop d5 here, going to the rook endgame, is apparently winning for white. And again, for that reason, because white will have maybe even 2 penetrated pass pawns on the king side, queen side that is. VD blunder भाई, VD गेम खत्म हो गया यार। प्रज्ञानंदा का क्या हुआ? VD गेम खत्म हो गया, ड्रॉ हो गया। क्या प्रग का खत्म हो गया? नहीं, प्रग का चल रहा है। उनका ओपोनेंट अभी सोच ही रहे ना क्या खेलना है। इधर रौनक सोच रहे हैं, रौनक का ओपोनेंट सोच रहे हैं उनको क्या खेलना है। अरे यार रौनक के ओपोनेंट भाई यार कुछ करो ना, गड़बड़ यार, कुछ तो कर, एक आध मूव दे दो यार हम लोग को। गलत, बस एक एक्स्ट्रा मूव दे दो हम लोग को। ऊपर से चक्कर ये है, Azerbaijan wins, they go to 15. And they will face, I think they will face Uzbekistan tomorrow. Oh. And if Uzbekistan defeats them, they get gold, mostly 99%. So, and if they win, they get it. So I think काफी complicated scenario है. Nehal winning, Nehal has already drawn, buddy. The game is over. लिख के लिया, रौनक will win and Prag will win too. India भी top में आएगा आज surely. Najib, I really hope so, man. I would even accept a draw right now if I can. Win तो दूर की बात है. I would even take a draw. कैसे गलती से रौनक ड्रॉ कर ले और प्रग जीत जाए, क्या मजा आ जाएगा। He played rook to g4 check. Interesting choice. Not the best move. Because it really just helps black realign his king. Because पहले check h5 के साथ check आ रहा था. It was giving white a free tempo. But now the king can go to h6. And if rook f4, king g7. So I basically save a tempo. I think he's trying to come to f5. ये देखो भाई क्या, और फिर यहाँ चेक दे देगा। फिर हम ये पुश करते हैं। इतना सिंपल नहीं होगा रे। ये मार दूं हम, ये मार दे और एक सीधे एक वो अप। अरे रुक जी फॉर ब्लंडर क्यों है? अच्छा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है रे। और completely winning. He played king h6. Usually the bishop is in the light square. No, so you put the king on the dark square. And the idea is now he wants the king to go to g7 and then rook f5 attacks the a5 pawn. That's what he's trying to do basically. Strategy wise, absolutely correct. थोड़ा स्ट्रीचिंग कर लो भाई, अभी स्ट्रीचिंग कर रहे हैं भाई पेट की with a burger. मौका दो भाई ओपोनेंट को गलती करने का, क्या पता कर दे। खेल लो किंग h7, दिखा जाएगा। अपेरेंटली वो कुछ इंजन उसको भी रिफ्यूट ही कर रहा है। ये खेलने के बाद, ये करने के बाद भी रिफ्यूट हो रहा है। कैसे रिफ्यूट हो रहा है? किंग 2, अच्छा किंग 2 e2 सिंपली अटैकिंग दिस। इधर कैप्चर नहीं ले सकते और ये अपना हैंग। वाओ, I hate it so much. I hate Indians. Like king h6 खेला है, rook f4. Are they repeating?
King G7. समोसे को बिट रहे नहीं यार, सॉरी, डोंट टेल समोसा. मैं पूरे दिन बैठा रहता हूँ, स्ट्रेचिंग कर लो थोड़ी. थैंक यू साकेत भाई, लव यू भाई. गुकेश का ड्रॉ ऑलरेडी ड्रॉ भाई. अंशुमन कुमार भाई. Bees bhai, it's not looking good, yeah. True. He played King G7, Ronak. Good move. और क्या ही खेलते King G7 के अलावा? I have a gut feeling that now the Indian teams in the open section are going to make a podium finish. I really hope your gut has some bacteria and it's not a correct feeling, bhai. Going to make a podium finish. Podium finish अच्छा होता है ना? क्या होता है? Podium top 3 होगा ना? तो You're saying none of the teams will make it. प्रग लॉस्ट ही बोल दिया भाई. क्यों प्रग क्यों लॉस्ट? नहीं प्रग का तो गेम चल रहा है ना. प्रग का गेम चल रहा है चैट. It's still equal, chat. Prag is holding for now. Ronak has to hold somehow. I think Rook B1 is rather, I think the only move, right? Rook B1, I think. Because he can't save the pawn now, so you should take the B2 pawn, I think. I think it's pretty obvious. He has to go Rook B1. There's nothing else. He plays Rook B1, Rook A5 played. Now Rook takes B2 will happen, I think. I really hope White ke dimag hota kya, chat? It also depends on what White player thinks about this position. If he feels ki because Black has the B2 pawn, B4 pawn, it should be drawn, he will not even think too much. But usko andar se feeling aa rahi hai na ki they should be winning. He will sit down for 15 or 20 minutes if he has to and find the winning sequence. So it really depends on how he feels, how comfortable he feels. It really matters. So I'm really hoping he is not able to find it. And how things are going? Things are not going that great right now. सब सारे boards पे draw ही हो रहे हैं हमारे तो. और एक पे worse भी है यार, that's the issue. हाँ, नीचे all the scores you can see for the open and the women section. Open section में अभी women open section में एक ही draw हुआ है. What is it not updated? विदित का draw हुआ है ना सिर्फ. और हाँ अभी एक ही हुआ है. एक ही अभी चल रहा है. बाकी सब खेल रहे हैं. Okay, but बाकी सबका एकदम drawish है, right? But शशि का थोड़ा better, yeah. शशि is winning by chat ने लिख दिया भाई. कुछ हुआ क्या शशि की गेम में? No, it's still the same position. It's winning in the same position. Let's go back to Team B. I think that's somehow. I think Sasika. I think we'll come back to that. I think important to be Ronak. I think Ronak's game is most important because Chad, if you're looking for gold, Ronak's game becomes very important now because Team A, regardless of what they do, they cannot get gold or even silver. I think. क्योंकि दो टीमें already आ गए हैं, Armenia, Uzbekistan, and so on. So it's impossible. But if you want gold, I think Ronak's game is the only one. He takes on B2 now. And now it's all about which pawn is stronger. I think somehow because White के पास ये extra pawn है, it can cause a lot of problems. But luckily, Black's pawn is far advanced. I'm really hoping that provides him with enough counterplay to, tempt White into just being like, ठीक है यार, जल्दी draw लेते हैं, इससे पहले हार जाए. Why is it called open section, not men's section? Because anybody can play. Actually, women can also play in that section. Yeah, but the thing is, chat, basically, if you are rated around 2600, मान लो तुम हो, I think you would like to play in the women's section, जहाँ पे you will have more chances for a medal, right? And obviously, because it's like you can play those and gain experience, but even if you had the chance, most women will probably play in the women's section. Even I would if I was a woman, clearly. Medal chances, you want to finish on the podium, man. That's the dream for every chess player in Olympiad or whatever it is. So clearly, people will choose the women's section, even if they were like say, Yufan was playing, she might play in the women's section.
if India does not win the medal, do you agree this might be a very bad performance given Russia and China not playing? Yeah, clearly not a good performance. I wouldn't say it's very bad because clearly we've seen spectacular results by Gukesh and Nihal and some other games, and I would say it would not be a great one, of course, clearly, because India mein ho raha hai, we have 3 teams in both sections, and Russia, China, as you said, are not playing, and US also, are not in their form because we defeated the US. So yeah, but there are a lot of teams, and it's very hard to kind of win a Swiss event because usme kya hota hai, even some other team who's played weaker players can quickly catch up at the end. So it's always a tough task. But yeah, I can agree if India does not win a single medal, then it would be a slightly disappointing performance. And it might have a ripple effect because imagine karo, like, someday PM Modi kursi mein baithe hain, kya raha uska wo jo Olympiad ka tha, medal mila kya hame? नहीं सर मेडल नहीं मिला, तो इट माइट नॉट हैव दैट इफेक्ट, सर्टेनली वो फर्क पड़ता है. बट ऑफ कोर्स वुमेन्स में मेडल इज क्लियरली आई थिंक इन आवर पॉकेट एज one medal at least, as long as Vaishali can draw today, and it does feel like she might, so we might get one there. But we of course want in the open section, man. You've defeated the US, you're playing, it's such strong teams, man. They deserve one. उमेश गुकेश घूम गया क्या खेलेंगे तो ओपनिंग भाई. एंड रौनक जानबूझ के उठ के चला जाता है क्या कि ओपोनेंट के लिए एक अच्छा ड्रॉ ही है. No, I think it's also because stress hota hai. When you're sitting at the board, when your opponent is thinking, it's really stressful because you constantly see your opponent thinking and you think, "Arey yaar, kuch khatarnak nikal dega." So sometimes, kya pata washroom ja raha ho, kya pata he's just looking around the other games also because he wants to know what's happening in the other games, and sometimes just to kind of relax your mind a little bit, just kind of stable the nerves. चल रहा Prague is better भाई. क्या बात कर रहे हो? No, it's not better. I think knight a c5 stops everything, so it's still equal, Chad. It's still equal. He has stabilized quite a bit, though. I think it's definitely much better than it was a few moves back. So it's still equal. That's a good sign. कि Prague के पास potential है, to win this game. That's a good sign. We might need it. We don't know, Chad. Ronak's game is very difficult, yeah. Yeah, hopefully. Prague के game पर game बहुत बाकी है. It's not like it's like simple enough to. The thing is, Black ने अपने pawn फेंक दिया ना. So what it does is it gives Black extra army to attack the White King. लेकिन if it doesn't manage to do it, then suddenly in the end game एक rook या queen घुस गई ना अंदर, तो suddenly Black का king ही लग जाएंगे. और फिर वो h5 pawn भी दादा बनेगा सबका. You'll put it to h6 and suddenly it will be mating idea. So clearly Black has to be very cautious as to how he attacks because he's really overextended himself on the king side. If he cannot do anything with this, then what was the point of playing g5 f5 if you can't do much about it? So clearly ये rook a1 and knight a4 knight e4 ये सारे पीस इस्तेमाल भी करने हैं. Otherwise suddenly in the end game once he makes a slight mistake and rook या queen घुस गए white के, it will be all over. My chat carry Shashi is winning and opponent has just 1 minute. Oh, really? Shall we shoot to that game then? Yes, Shashi का opponent अभी तक move नहीं खिला रही. Shashi उठ के भी खड़े हो गए भाई. बाकी लोग के गेम देख रहे हैं, हरी के गेम देख रहे हो अभी, और उनका opponent अभी सोच रहा है. Yep, Chad, they have already reached the time control, so I don't think he has any time. Is this after the time control? Yeah, this is after the time control, brother. But he only played 42 moves. Did he think for 30 minutes here? Yeah, he was thinking. Wow. Then na. He plays bishop e2. It's over. It's over, chat. This is Niranjan bhai. This is over. Wow. Good night. Crazy night. Knight is coming to e4. Yes. Takes on f3. Pawn से मारना जरूरी है. I think. Yes. Pawn से मारना बहुत जरूरी है. If you take with a bishop, I think white will take. Pawn takes and bishop takes f6 intermediate move आएगा. Pawn से मारना. यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या? Bishop f3. Pawn से मारना बहुत जरूरी है. f3. King f3. Sahil by सही बोल रहे हैं. Intermediate move. Knight g4. Knight g4 खेल सकते हैं. Okay. अभी bishop f4 खेलना होगा. e3 pawn को बचाना है. हाँ, and then maybe e5 even looks. अभी mate in 6. ये क्या? Yes. Rook b2. यहाँ Oh, it's over. Oh, उसके बाद कैसे defend करे? Is there any defense? No defense. Rook f1 knight h2. Rook f1 knight h2.
तो साहिल भाई ये बोल रहे थे कि पॉन से पॉन मारना जरूरी है स्टार्टिंग में. हाँ. 43rd मूव. वाओ, दिस इज ग्रेट टर्न ऑफ This इवेंट्स. is awesome. एंड उसके बाद भी कुछ कर नहीं सकते, बस 2-4 चेक देगा एंड इट्स ओवर. श्रीनाथ इज हैप्पी. श्रीनाथ भाई देख के गए क्या game? हाँ, गेम देख के गए, खुश होके गए. भाई साहब, शशि किरण स्ट्राइकिंग व्हेन नीडेड भाई. उनका ओलंपिक Arjun is रिकॉर्ड भी है. converting too, really? No, Arjun is still on his tiny better child. वो classic advantage है. That might still end a draw. But team A would win. No, that's the best part. Yes. So they would go to 14 points if they can convert this, and that would maintain their medal chances. Chad, that is really important. ओपोनेंट के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है. शशि हैज लॉट ऑफ टाइम. ही कैन प्ले द बेस्ट मूव. पॉन से मार के बिशप एंड देन नाइट. एक बार अगर डिफरेंस दिखा दे, if you take with the bishop now, now bishop takes, of course. You of course take with the pawn, and now bishop takes f6. And this. I don't know if this winning, draw, whatever, but I don't want to go here. Basically, most likely it might be a draw. So ये knight हमें खोना नहीं है. Knight बहुत important piece है. Bishop on e5 is absolutely stupid. It's located in an empty diagonal, and no, I think simply now king takes f3 should have been. मैं अपना ये सोच रहा था pawn बचा के यार. हाँ, उसमें I think कुछ check and e5 कुछ ideas आएंगे. I think वो king थोड़ा trapped सा है. He takes with the pawn. He took with the pawn. Chat. Sasi is winning. Sasi is completely winning. Completely winning now. ओ भाई, उसके opponent के पास टाइम वैसे ही नहीं है. नहीं, कोई अब मतलब नहीं है. Even if Sasi had 40 seconds, he would win this game. This is done. नहीं, opponent के पास टाइम नहीं है ना. शशि कह रहा हूँ उल्टा भी होता. Even then Sasi would win. Like this is over. This is over. Yeah. Prag is way better भाई. चैट लिख रही है. क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ इसमें? यहाँ पे rook to e1 खेला. His opponent played rook to e1 and now rook to a3. But that's very difficult, Chat. He will not find this, unfortunately, I think. Rook a3 में very difficult. Knight attack कर रहा है ना. हाँ, the idea is to double up rooks on the a file, which is very uncomfortable because black is threatening moves like g4, f4 now. He's trying to attack. मैं तो यहाँ आ रहा हूँ ना, और ये भी आ रहा है. हाँ, but it's very. यहाँ पे mate भी हो सकता है. यहाँ पे अगर कोई न हटाएगा तुम तो सीधे. I know, but it's definitely not the idea because अब सोचना मुश्किल है because you are attacking now, right? You've been defending for the past 20 moves. So it's very difficult for you to suddenly start attacking because if you could do it, then Prag, well, I would be very surprised and I'd be very happy because this is not easy to do for anyone. नहीं भाई खोज लेगा भाई. Let's go Sasi game once. Let's see it finish off. Chat खत्म होने वाली game बहुत जल्दी Sasi की. Let's go back. Sasi Kiran shining today for India. He has played knight g4 by the way, and now rook takes e3 check. You lose the e3 pawn. Bishop to a1. Bishop to a1 खेल दिया भाई उन्होंने. Because he wants to avoid rook b2, right? So you prevent that. But ये मार दूंगा सीधे. हाँ, you take the e3 pawn now over. And ये क्या करेगा? यहाँ जाएगा. King g2 I guess. Then you give one more check on e2. You can't come to s3 because rook h2 is mate. फिर दरवाजा बंद कर दो e5. हाँ, true. मेरे को पहले कहा रंजन भाई किसी को. यहाँ आएगा क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आएगा. I don't think so. यहाँ आएगा. प्लीज ना यार, आने तो ना यार. दिक्कत क्या है तुमको? ठीक है. नहीं वो हमारे हिसाब से चलेगा ना यार. ये यहाँ king to g1. Oh, Prag played rook a3. He played it. He played it. Oh, बेटे, come on. Ronak, hold it, bhai. Please hold it. आ रहा है भाई, ये आ रहा है. If India 2 wins, no, bhai, I would go crazy, buddy. I would go crazy. Come on. Oof. Ronak game देखते हैं एक बार क्या चल रहा है. Ronak's opponent also made a slight mistake. Now b3 for Ronak is probably drawing. Come on, Ronak, b3 khelo, please. b3 khelo, Ronak. I think instead of rook b5, rook a7 was the best. Threatening bishop d5. That was the best move. He played the second best move, but now b3 is probably holding for black with perfect play. खेलेगा ही ना, b3 तो खेलेगा ही. You can also tempt yourself into playing rook b1 or something, but that's not working enough because then white plays bishop b7. rook b7 एक बार ये हो गया एकदम, ये से प्रोटेक्टेड है. इधर आऊंगा रुक लेके, कभी भी उसको मारने जाएगा तो मैं इसको ये pawn मार दूंगा. हाँ, the idea is to exactly to stop that pawn. And the thing is, luckily white के जो pawns है ना, they are completely isolated. The h pawn can be stopped easily. अगर h pawn extra भी रहा, it will still be a draw. हाँ.
Come on. भाई मैं तो कह रहा सब कुछ एक्सचेंज कर लो इस साइड में, रुक बिशप I दोनों think- पॉन और बस ये पॉन बचे और लास्ट में यहाँ पे तो होता ही है स्टेलमेट. But what will he play? He has to play B3. Come on, bhai. B3 is very obvious. You have to save the pawn. Come on, Ronak. Come on, Rana, you can do it. You are the best. You are the craziest. भाई एक बार शशि किरण की गेम So just भाई कह रहे हैं rook is playing bishop, but yeah, but the thing is उनके पास extra pawn है and rook के पास कोई weakness नहीं है attack करने के लिए. So it might be better for white, but it's difficult to convert. Come on, Ronak, push B3, dude. Come on, push it. Push, Rana, push. Come on. भाई कैसे 5 मिनट में ऐसे भाई एनर्जी कितनी खुद की हो जाती है यार. Suddenly I'm excited now. Yes. Yes, he plays it. Awesome, he plays Let's B3. go. Let's go, buddy. Let's go. B3 on the board, chat. B3 on the board. B3 is on the board, guys. Prag के opponent knight C5 खेल दिया है, but now Prag has to find rook C8. I don't know. Rook B7 played by white. Okay, interesting. He plays rook Yes. B7. हाँ. Very quickly played by white. Third is bishop D5 clearly. I think king को move करना चाहिए, right? You want to move the king. Computer बोल रहा है What? rook B1. Yeah. How can rook b1 make a draw here? And will Ronak find this? This is a very thin line. He's No, but saying if I rook come B1, bishop D5, Arey, B2. nahi. He didn't play. bishop F7, rook E1 check. Oh my God! Why I don't bishop think F7? मैं ये he played इस्तेमाल bishop के check D1 दूंगा. though. He played bishop D1. He played a mistake. He played bishop D1. Really? He played bishop. No, something happened. No. King f8 खेला उन्होंने. King F8 खेला. He played king. That is King the F8 logical is move. a- हाँ, King F8 I is would play second that best too. move. I would play King F8, but he played bishop D1 now, and that pawn is lost, right? Or not really? कैसे क्या बोल lost? रहा हूँ? नहीं, हाँ, मैं hallucinate कर रहा हूँ. Rook B1 now, but rook B1. King f8. I think bishop now- d1. Yeah, so rook B1, king D2, rook A1. Simple, right? You exchange pawns. Yes, this is the engine line. नहीं, और कुछ है भी नहीं actually. I don't see anything else. What can you do now? Come on. But does white have anything after that? Like, can he stop the A4 pawn from losing? Like, maybe rook B4, yeah? You still maintain the pawns, and the king is coming to C3. It's not clear, chat. It's not clear yet. Vaishali is still playing, chat. That game is still a dead draw, so Vaishali will hold, I think. If she holds, India का gold medal कहीं नहीं गया भाई, हाथ में ही है यार. Oh, Prag played rook C A2 क्या? Oh, he played it. He found rook C A2. So Prag is right now much better, chat. It's plus 1.6 for him. If he can somehow just manage a couple of moves, rook A7 is incoming, F5 is weak, and that's exactly what I said. ये pawn आपने फेंक दिए ऊपर, but एक बार हमारा piece घुस गया, तो आपने जगह पहले से खोल के रखी है अपने लिए. तो it will be easy to basically penetrate with the rooks. I think that's the main thing. क्या बातें कर रहा है साहिल को, I have no idea. Yes. अभी अगर क्रिकेटर कोई कमेंट्री कर रहा था तो वो बोलते हैं धागा खोल दिया. हाँ. नहीं बोलते हैं penetration with the rooks. That is a very well known quote in chess. I think the second rank is very vulnerable. So Exactly. So coming back to the games, two exciting games, one Ronak's game and one Sasi Kiran's game, and then we also have Prananda. By the way, Sasikiran won the piece. It's over. He won the game. Piece मर गया. कैसे Over. I am sure they finished the game. Yeah, he's not there. It's over. Sasikiran has won, chat. That's absolutely insane. 1.5 in India's favor, with literally, both Hari Krishna and Arjun better. So clearly, I don't think they can lose. Now it's time to offer draws. I think it's time to, first they'll try for the tie breaks. And Arjun also better now, slightly. I think Arjun has finally found some formation where it's some pressure, on F7. I think this bishop on B8, rook D8 is very awkward. Rook A5 now threatens basically rook A8. But even if he draws, chat, even if Hari Krishna and Arjun draw, we will kind of win this match. So that's awesome for Team 1. They maintain their winning chances. And I think it's time for Hari Krishna to offer a draw, chat. What do you think? Because I don't think he can win this, right? Equal number of pawns is nothing. It's time to offer a draw, basically. Because yes, उसको देख लिया होगा ना उन्होंने शशि का गेम जीत रहे. तो yeah, it's time to offer a draw. Because honestly, you can only go down from here. Like, there's nothing to gain, to be honest. So it's time to offer a draw and basically go home and hope that, like, Arjun will draw, of course, he will not lose.
because यहाँ पे chat देखो tie break भी important है, but somehow this winning के chances के almost zero हैं यार. Like if Sasi somehow, because Black will simply play Rook C7, Rook K7, there's nothing to do. Can we go to अगर प्रग तुरंत हरा दे तो रौनक का ओपोनेंट एकदम टेंशन में आ जाएगा. हाँ, बिकॉज पहले वो देखा था कि यार ड्रॉ हाथ में है, क्या मैं जीत सकता हूँ, सडनली से भाई हार रहे हैं, क्या मैं बचा सकता हूँ? दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. ही प्लेज रुक बी, ओह ही प्लेड रुक A2. ओह व्हाट द हेल हैपेंड? What the hell happened? Rook D7 blunder. Oh no! He blundered. No. ये क्या है समझा नहीं. What the hell? Ronak realized immediately. He slumps in his chair. Oh no! ये हुआ क्या? मेरे को समझा नहीं. Oh no! He blundered the game in one move. What the hell? He realized immediately, chat. He realized immediately. खेलने के बाद ही भाई. क्यों ये मार Rook F7 आ रहा है, and if you take with the king, then Bishop B3 wins the rook back. What a horrific blunder by Ronak. Oh man, this is what happens. Ronak white नहीं of course. This is what happens, Chad. You know, when you have been defending for a long while, you just can't find these moves. And with this, Team B Prague cannot win today. They can at best draw, and it's all in the hands of Prague now. Prague has to win at all cost. Can we go to Prague's game? More pressure on Prague's shoulders now. We were talking about winning this match. It's already over. We cannot win this match. We can draw at best. Arey yaar, simple tactic, chat. This tactics, Ronak, even if he had missed this in, you know, some bullet tournament, he would be angry at himself. Like, this is such simple tactics. But the thing is, he was tired. He was exhausted. That's why it happened. And this is just tragic. Prague has to absolutely win. He has no choice now. He cannot take the draw. Tiebreak India ka already acha. He has to go for the win. Azerbaijan causing in a mini upset here, I would say. Meri battery tak baith gayi. He's like, what the hell is going on? Let's go Prague. 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 Yeah, Chad, the final position rather tragic, I have to say. Yeah, just looking sad, man. Just looking sad. भाई है कुछ अच्छा खेलने को भी opponent के पास Prague के. I think he can play F4 and start attacking, and he can hope that Rook E1, Knight E4, Rook F8 works perfectly. I think that's what he has to do. I don't see anything else he can do. Because F2 is the weakness, F4 पे right? मैं मारा फिर. Yeah, he will take with the G pawn. He will अब पूरा pawn फेंक ही दिया, पूरा ही खोल दो. Like, I think that's what he's trying to do. अगर मारा तो मैं ये You can see your king is opening up, right? Your king is opening up, so it's not a one-way street. अगर वो बैठे रहेंगे एक जगह तो प्रग के लिए आसान हो जाएगा, because then यहाँ बोल रहा है रुक A8 खेल दो, बोल रहा है. वही ना, he's not asking to take with G pawn, right? So it's clear that it's not easy to win this. हाँ. और इस यहाँ पे तो exchange हो जाएगा ये रुक्स, and फिर हम जीत जाएंगे chat, don't worry. हम जीत जाएंगे chat, tension मत लो. Restarts off कर देना एक बार यार. अच्छा. चैट डरने की कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ हम जीत जाएंगे चैट, हम जीत जाएंगे, मैंने बोल दिया ना, जीत जाएंगे. अब ड्रॉ कर लेंगे, यू मीन? नहीं हम वही ड्रॉ कर लेंगे, प्रग जीत जाएगा. नहीं वही ड्रॉ कर लेंगे. आई थिंक ओलंपियाड की बात कर रहे हो ओवरऑल. ओके. Oof, that was sad, man. Can you show okay, can we look at the last move once of Ronak? Why did the bar go down? हे अब ये सब पे मत लगो यार. रौनक वॉकिंग टू मच ड्यूरिंग द गेम, ये सब मत करो. बच्चों ये सब मत हरकतें करो. क्लास में चलना अलाउड नहीं है ये सब, ठीक है? इंडिया लास्ट गेम तो रोमांचक बना ही देता है यार. You know, if I want romance या रोमांच, I will basically watch movies. I want stability here. And you know, I think वो ऐसा ब्लंडर है कि literally if मैंने बोला ना, like वो बुलेट में भी करता ना, he would be pissed at himself. So clearly Ronak would not be happy. He would be very angry at himself in this game, because if he had been outplayed, you kind of feel sad. Okay, you lost, but you tried your best. But simple tactics से हारना, it's just very demoralizing. You don't know what to do about it. Like, what do you work on for this? You just don't know what to work on. Let's go Ronak. रौनक गया भाई. Let's go Prague. भाई मत बोलो यार आप. Come on Prague, देखो भाई, उसने राकेश भाई ने बोला भाई. Let's go रौनक. हॉल में घर जाने को बोल रहे हो क्या उसको? ये क्या है भाई? गजब बेइज्जती है. ये क्या बेइज्जती क्या है यार? By the way, Vaishali is still drawing chat, so I hope that will be good for Team India at least. And एक बार मुझे I should check यार वहाँ पे यूक्रेन वर्सेस उसमें क्या हो रहा है.
women section में, because they are the challengers, right? पीछे पीछे. But now Prag knows that he has to win, right? Yeah, he knows. He must have seen, no? Like result देखा होगा उसने, I'm sure. Of course, बगल से तो उठ के गया होगा ना भाई. देखा ही होगा. By the way, Georgia में Anna Muzichuk lost to Nina Batiashvili. So they lost one game. And then wait a second. No, it was a draw for Maria Muzichuk and loss for Anna Muzichuk. So 1.5 in favor of Ukraine. Sorry, in favor of Georgia. And then third board पे कौन था? Let me quickly check. And सबको एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दें. Let's go for the भाई गिव अवे क्वेश्चन. भाई 600 लाइक हो चुके हैं भाई, 700 पहुंच जाते हैं. And let's go for the give away question. साहिल भाई, आप बोलो भाई, आप पूछो. मैं गेम देख रहा हूँ अभी, बहुत important. I'm trying to find it. Okay भाई, क्या है गिव अवे क्वेश्चन निरंजन भाई? क्वेश्चन ये है कि अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पूछ लिया, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ. हाँ, ये है क्वेश्चन. जी ऐसा करना जिसका डायरेक्ट आंसर हो भाई, ये नहीं कि बैठ के भी निकालना पड़े. ठीक है. थैंक यू भाई. Which chess piece controls 14 squares irrespective of where it is placed? Very simple question. ऐसा कौन सा पीस है जिसको आप कहीं पे भी रखें वो 14 स्क्वायर्स ही कंट्रोल करता है? ये आंसर आप रैंडमली पिक करना, जो फर्स्ट है वो नहीं, रैंडमली. By the way, that's awesome. Ukraine और उनका ड्रॉ हो चुका है women section में, so that's perfect for Team India because they basically nobody kind of joins, so India will still have that lead of 1 point. I think that's awesome. जनरल मोदी क्वीन लिख रहा है. क्वीन कैसे होगा भाई 14 स्क्वायर? क्वीन will control much more than 14 स्क्वायर. हाँ, I think the answer is obvious, but कुछ लोगों ने लिखा है already. ये देखो भाई, जनरल मोदी भाई कैसा चेस प्लेयर है भाई तू. द आंसर इज आई थिंक रुक, राइट? हाँ, I think so. So Rook is the right answer. Niranjan bhai, can you confirm? Correct. Rook is the right answer and I can select a winner and the winner is, एक का नाम दिखा मेरे को randomly, SA Varieties. Technically the question was a bit flawed. अगर pawn A5 पे तो Rook is not controlling 14 squares technically. But I think No, on an empty board. I mean that has to be understood. हाँ. But okay, आंसर था ही नहीं वहाँ पे तो. ये लो भाई, मैंने दे दिया. ऐसे क्रिएटिव्स भाई आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो निरंजन भाई भाई ट्विटर पे. F4 played by black. And now EF4 is the only move for Prag chat. He cannot allow black to open up it completely the game side, so EF4 is very important. And then अच्छा, यहाँ पे सीधे जाने पे क्या दिक्कत होता है मेरे को जानना था बस. If you play directly, I think black will take on A8 apparently, and then play G7. And नहीं, रुक A7 जाने में अगर क्वीन अटैक कर रहा हूँ मैं तो. अच्छा, rook to A7, but queen is coming to like some H3 squares or something. यहाँ कह रहा है knight to D2. ये थोड़ा सा नहीं, even queen H3, no? Queen H3? Queen H3 even. Threatening mate in 1. That should be good, I guess. And then you play queen to G2 and then you capture. Then white can't be better there. White is clearly worse. Ronak कितना बुरा लगा. हाँ यार, ये तो है. I mean, for example, if Prag can hold this, then probably Ronak would be still fine. But if Prag by chance, cannot win this, let's say, and India loses, so of course he would feel really mad at himself. And it's not also about losing. It's how you lose somehow. It really bothers you. Like, because if you get outplayed, you actually learn a lot from the game. If you lose a game in one blunder, like simple elementary blunder, you don't know what to work on. किस पे मेहनत करोगे भाई? You've worked tactics for your entire life, so there's not much you can work on for that. That's the issue. What is Twitter handle of Niranjan bhai? Niranjan bhai, आप I am Niri. Twitter handle. I am Niri. And let's go, guys. E capture F4 is incoming, guys. Prag अपने आँख साफ कर रहा है. You can see. हाँ भाई, वही कर रहा है ना. आँख बिगड़ के क्या कर रहा होगा? साफ ही कर रहा होगा ना. भाई किसी की ये कुत्ते भौंक रहे हैं. मेरे जी कह रहे हैं. Interesting. निरंजन भाई के ऐसे घर के बाहर में भी.
दंगे हो गए क्या भाई रौनक के हारने पे वहाँ कुत्ते ना Dog खुश is going crazy. मैं कुछ और बोलने वाला था, बोला नहीं. इतनी एनर्जी आ गई थी यार सडनली, फिर से ना ऐसे स्लम्पी हो गए यार. अरे यार इतना ऐसे हाइप हो गया सडनली. ओ माय गॉड प्रक इज ओ माय गॉड रॉक इज होल्डिंग, ओ माय गॉड, एंड सडनली पूरा उल्टा हो गया. दैट्स ट्रू भाई. पर सबको एक लाइक कर दे और एक बार हाई लिख दे फिर से भाई. बट भाई तो नहीं हाई भी ना लिखे भाई, पहले एक बार चैट में लिख दे आप कि कौन क्या प्रग जीत पाएगा, यस या नो. डालो भाई डालो. इमोजी भी डाले. ये क्या रिक्वेस्ट है भाई आपका अलग ही. अभी आप देखो कैसे कैसे इमोजी डालेंगे आप, आपको आइडिया नहीं है भाई. डॉगी आप ही देखना फिर. रौनक लॉस. ये क्या भाई? Prag is playing something. Come on, Prag. Please take that pawn. He takes F4. गुकेश का मैच ड्रॉ हो गया देव पटेल. मेरी लाइट ही चली गई. Not a good sign for Prag. आई थिंक दैट्स द बेस्ट साइन भाई. ग्रहण तू ही लगा रहा था और तुझ पे ग्रहण लग गया तो हम बच जाएंगे. वही पता लगेगा भाई क्या होता है रिजल्ट में. Let's see. अभी देखो भाई, अभी देखो इन 5 He played seconds F4. लाइट But जाते ही Black he will played capture G4 the now. F4. Black Yes, played G4. He did not capture the F4 pawn. That's very, very interesting because now Prag के पास only move है. Can you find the only move for Prag? Chat, can you find the only move for Prag? It's insane move. Beautiful move, chat. Who can find it? Who can find the only move? It's an insane move if he finds it. If Prag, and that's the only move by the way, otherwise he loses. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, और स्क्वायर ही नहीं है क्वीन के पास. हर जगह कैप्चर हो रही है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Chat, बताओ कहाँ है move? The move is the spectacular Queen to H1. What is the problem with Queen to G2? The idea is Queen H4 आ रहा है and we can attack your own king. Queen G2 क्या करेगी? Queen G2 पैसिव ही है ना. Queen H1 is the only move. क्वीन मर रही है यार स्क्वायर पे भाई. Exactly. There's not much. E3, D3, C3, B3 सब covered है. So very simple answer. पे तो काम मर रही है. हाँ G2 कर क्या रही है वहाँ पे? अरे तो ये तो क्यों यार ऐसे मत करो यार. रानी को घर से he plays which one? सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं है यार. उसको बाहर निकलना है, काम करना है, नौकरी करनी है भाई, बिजनेस में बनना. कुछ भी बोल देता है कभी टिक्कू भाई. This is the only move. But यार G2 पे पर कर क्या रही है? G2 भी खेल सकते हैं पर कर क्या रही है? Exactly. क्या ऐसे उसके सपने भाई, उसने बिजनेस करना है, निकल के H1 पे. ओ भाई. Let's go. Queen coming to H4 भाई. Let's go quickly. And the thing is, एक बार वहां आएगी तो भाई ये हमेशा नाइट अटके रहेंगे, मतलब नाइट रुक सब कुछ. एंड ब्लैक ने वॉलंटरीली F5 क्लोज कर दी एंड नाउ ही कांट ओपन इट अप एवर. सो Prag completely winning. He played Prag Queen H1. completely winning. Quick update, India 3 has won with the score of 3-1 Okay. against Awesome. Estonia with draws Wow. by Isha and Vishwa and wins by Nandita and Sahiti. नंदिता awesome, इज इन ग्रेट awesome. फॉर्म ना. Great form. अबे क्या मिसोजिनिस्ट बे. मैं तो यही बोला ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी. इनको ना लाइक चैट को if for example they hear one word, no, they hear one word and immediately why. मैंने उल्टा बोला. They don't belong there. Anyways, let's go. So Queen H1 played now. Let's go, buddy. कैंसिल साहिल टिक्कू. I agree with you guys. आज तो 10 बार कैंसिल होने के चांसेस आ चुके हैं भाई. कोई बात नहीं. Let's go. Come on, Prag. Queen H1, beautiful move. एक वो common pattern है, tactical pattern Queen H1 का. I'm so I've seen it. Queen H1, Bishop G5 and then mate on H7. बहुत सही है. Bishop G5. हाँ, Queen H1 एक tactical pattern का puzzle आता है ना, बहुत famous. You play Queen H1 and then Queen is attacked on G6, it goes to F6 and then Bishop G5. H takes, Queen F6 attacked and Queen H7 mate हो गया. Nice pattern. हाँ, वो बहुत common pattern है. मेरे को Queen H1 अगर आप बोलेंगे तो मैग्नस कार्लसन का गेम याद आएगा. कौन सा वाला? आप मैग्नस कार्लसन Queen H1 ऐसा डालोगे तो आपको एक गेम मिल जाएगा. वो है मैग्नस वर्सेस. मुझे कुछ तो याद आ रहा है, उसने खेला था बट आई एम नॉट श्योर कि मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ लाइक किसी और की गेम. Queen H1 मैं बताऊंगा. रॉजर फेडरर कह रहे हैं 500 करोड़ की वर्थ है B-Stats. कुछ भी भैया. 500 करोड़ डॉलर में कितना हुआ रे? जस्ट क्यूरियस. 500 करोड़ डॉलर कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया भाई. 500 करोड़ डॉलर में कितना हुआ? अच्छा डॉलर में कितना हो? 500 करोड़.
I don't know भाई. इतना सोच भी नहीं सकता भाई मैं, कुछ ज्यादा ही पैसा. हरी और अर्जुन का क्या हाल है गाइस? हरी का गेम ड्रॉइश था लास्ट टाइम वी सॉ. ड्रॉइश ही अभी भी है भाई. nothing changed I think. Okay. And Sasi has already like Won. right? And Arjun ka I just saw he's still pushing, but yeah, I think And he Arjun might ka ye even win position this. I think he's winning apparently. And he's pushing and he might win guys. Sahil Tickoo ये हमारे G5 कैसे आ गया? How did he? crazy commentator. Yeah, this is winning I think Chad. This might be winning. Maybe he will win also. That's awesome. 3-1 जीतेंगे तो और बढ़िया है. So India A is going to win. That's absolutely awesome. But India B को hold कर रहे हैं. Can we go to Prag's game now? India B में guys एक बार बता ही देते हैं ना. गुकेश का गेम ड्रॉ हो गया है, निहाल का गेम ड्रॉ हो गया है. रौनक has lost by a tactic at the end. And Prag का गेम अब चल रहा है. I know Nihal had chances to win, man. Rook C7 was possible, but okay. And now he's played knight to E6. So he's trying to challenge the knight on D4 and trying to push his passed pawn. I think he's trying to go to his only triumph now because F5 closed है, so the pressure on F2, F1 is totally evaporated now. So the only trump card is basically to push the D passed pawn. So Rook E1 already has, so that will really complement his pieces. But Knight E6, does not address their position entirely, I think. But let's see. So यहाँ पे I think fight has to take because there's no other move apparently. I don't see any. Knight मार देंगे, Queen से मारेगा. हाँ, and then I'm not really sure which one is मैं best. कब से try कर रहा हूँ अंदर जाऊँ, जा ही नहीं पा रहा भाई. Yeah, I'm not sure which move is best now. We just Queen H4. Indian says H6. H6. Yes. Okay, what's the idea? Idea might be Rook 8 now. Oh, trying to make black. Now Rook 8. Ah, interesting. Yeah, very good idea by the way. Now we can use the H pawn, yeah? So those who were asking about Queen H1, I think Sahil bhai also. ये गेम जो मैं मेंशन कर रहा था वो है मैग्नस कार्लसन वर्सेस सर्जी करयाकिन फ्रॉम टाटा स्टील 2013. Oh, awesome. करयाकिन हरा था ना? Yes. Crazy. तो क्वीन H1 वहाँ पे बहुत फेमस हुआ था कार्लसन के मूव. यार क्वीन H1 में क्या बोल रहा था तो? सॉरी, क्वीन H4 पे क्या आइडिया? नहीं, just to bring the queen in the game. और कुछ ऐसा कुछ crazy वो नहीं था. Next to play Rook A8 now, and now it's more threatening समानो because Queen D8 का आइडिया भी हमारे पास मेट हो जाएगी बहुत जल्दी. But Knight तो मारना ही है. I just don't see any other move because अगर नहीं मारोगे तो फिर suddenly वो फिर F4 sack वैक कुछ कर दे, suddenly the game opens up. I don't want to give any sort of possibility about that. Sack नहीं करेगा, I think it doesn't work, but let's not go there. Like मार दो यार, खत्म करो. क्यों ही करना भाई? आराम से सब कुछ मस्त. In fact, यहाँ पे एक Rook A8 trap है. Like Rook A8 looks very strong. And what he's doing? And he played it. That is a mistake. That is a mistake. He played Rook A8. He directly played Rook A8. That's a mistake. मैं सोच रहा था कि that looks tempting, but that's not the best move in the position now. Knight takes D4. Black is at least fighting. Knight takes D4. Exchange sack मारना है. The thing is, Knight on D4 is coming to F3. That's the issue. Rook A8 is a blunder, chat. It's a complete blunder. It's a blunder by Prag. And the problem is White's king is now again going to get assaulted. Oh, and ये आ रहा है ना भाई? Exactly. Knight F3, Knight to some moves आ रहे हैं. This could be dangerous now. Looks a bit dangerous, chat. अरे Knight तो मार के कर देता ना Rook A8 यार. या मुझे लग ही रहा था कि Rook A8 ना बहुत वो है. Like it's so tempting. And Black को I think देखना पड़ेगा. The only move he has is just to go for the counter Knight takes D4. There's nothing else. He will do it. He will do it. He knows he's lost otherwise. मत खेल भाई, कुछ गलती कर दे, but I think he will do it. मत खेल. He saw ऐसे look दिया भाई उसको. ऐसे look दिया, वो कुछ सोच रहा है भाई. ऐसे look दिया अलग सा प्रग को, है ना? हाँ, exactly. I think, yeah, he takes it. But he played it. He takes it. Chat, the game is getting more and more complicated. I don't like this Prag here. He really needs to find some good moves now to convert. Doesn't look easy at all. White's king is literally, stuck. Rook F8. Rook F8. Idea Rook A7. Yep. One of the good moves there, I guess. I assume. सोचा मैं, पर यहाँ पे पहुंचने में तब तक लेट नहीं हो जाएगा. But apparently after that move, King H6 is equal. यार King H6 बहुत difficult move है. क्या खेलेंगे? नहीं, I think that's obvious because I think it prevents the H6 pawn.
You don't have any checks from the queen and h4, right? Because g5 s6 is controlled, and there is no check. Absolutely no check, and knight f3 is incoming. Yahan pe chat, only one move is winning. That is rook to b8, and I have absolutely zero clue why. Just being honest. तो नहीं लग रहा मुझे. I don't know. I mean, the bar tells me, but I'm not sure about this. भाई इसका क्या करना है पहले ये तो. The Irish pick up b6. Knight f3, then we simply play king g2, and there's no more checks. Okay. For now. Chat, he needs to find rook b8. The idea is to take the b6 pawn, clearly. That's the only idea. And now king s6 gives a check on b6. So that's the basic premise. He needs to find rook b8. These two knights are dangerous. हाँ सही बोल रहा chat मेरे को. 500 करोड़ टर्न की तो मुझे याद ही नहीं है भाई. Come on. That's why s6 was so important to be played now. अरे यार, he plays rook 8. He played the move rook 8, chat. This is not looking good. King h6 for black. If he plays it, I think he might just hold. In fact, he might have even winning chances now. This is not looking good. King h6 मत खेल भाई, कुछ भी खेल दे. बस h6 खेलना white को यार. White just needs to play h6 somehow. बस king h6 मत खेलना भाई, please भाई. Chat pray करो भाई, king h6 ना खेले chat please. भाई कुछ वो अटैक करने चले जाए भाई. हाँ कुछ check वैक दे दे. I don't care man क्या करता है. बस king h6 मत खेलना यार. Chat pray करो please. कुछ go for an attack भाई. कुछ है क्या? क्वीन को ऐसा ले आओ कि नहीं कहाँ है बेचारा. क्वीन हटा दो डर के. Come on. You know, when you're winning, live feeds look so awesome, but when you're losing, you're like, मुझे देखते हुए खेलते हुए देख रहा ही नहीं उसको h6 पे भाई. I don't want to look at this shit. It's so crazy. Guys, टाइम प्रेशर पे कुछ भी हो सकता है. सही बोल रहे हैं भाई रामानंद नायक भाई. कुछ भी हो सकता है टाइम प्रेशर पे भाई. और both are so low on time भाई. 30 सेकंड ही प्रग के पास दिखा रहे भाई. हाँ प्रग के पास टाइम पर 2 मिनट है. हाँ 2 मिनट दोनों के पास है, बराबर है. दोनों के पास 2 मिनट है. कहाँ देख रहा है भाई. चैट कह रहा है कि किंग की तरफ नहीं देख रहे. अरे यार पता नहीं ना यार. हाँ पर देख तो उस साइड रहा है ना. लग तो रहा है उस साइड. ऐसे किंग क्वीन हटाने का सोच रहा है वो. सब कुछ देख रहा है. आई थिंक दोनों हटाने हैं कभी ना कभी, बट पहला कौन सा हटाएगा, दैट्स द इंपॉर्टेंट डिटेल. नो, किंग लुक्स मोर लॉजिकल बिकॉज़ h6 चेक आ रहा है, राइट? That's also a threat. So how do you defend it? And you also want to defend rook a7. So man, king h6 नहीं खेलना चाहिए यार. कुछ भी खेल दे भाई, तू जो करना है कर. Yes, doesn't play it. He played the check, chat. He played king g2 now. And now the issue is king h6 पे apparently rook 2 to a7 is still winning for Prague. It's still winning. How? Don't ask me. I have absolutely zero clue. क्या ये check दिया क्या? Oh, look at this, the difference. I really want to look at the difference. So, basically, without knight f3 check, king जब g1 पे था, the bishop was hanging. So, queen takes b5 was threatening mate on f1. Once I play king g2, the bishop is defended with the queen. So, queen takes b5 is not possible. I can take the damn queen. Oh, इतना हल्का सा difference. Knight f3 is a blunder, and now king g2, I guess only move. Yeah, what else? Hopefully he's not considering taking on f3 the queen. Huge change. Please don't do that. In the evaluation. Huge. अब यहाँ क्या खेलेगा? Queen h6. He's moving the king. He plays king to h6 now, but now rook 2 to a7. Only move for Prague. The idea is to put the rook on a7 and the second rook on h8. That's the only move for Prague. Everything else loses or draws. Rook 2 to a7. Come on, Prague. What a crazy game. He needs to find rook 2 to a7 and then rook to h8. Everything else loses because black is completely winning on the king side. Nero king, you have no play there. The queen h1 is stuck. The queen has no moves on h1. So you need to strike right now or you're completely lost. Come on, rook a7 is completely winning for Prague. Rook 2 to a7. Come on, Prague, find it. Otherwise, you're completely lost. Come on, rook 2 to a7. Pray karo, please. Rook 2 to a7. He needs to find it. He played something else. What did he play? He played rook to c2. He played rook to c2. No. Rook c6 check hai threat shayad. Yes, that's still equal, chat. That was the only move that gave Prague equality, but it's equal now. Knight c5 holds the move for black. Rook c2 is a clear blunder. He was completely winning.
And now rook c2 is a blunder. It has a clear threat of rook c6 check. But now knight c5 and queen e7, both moves draw. Oof, man. Yeah, he was completely winning. He needs to win this, chat. If he doesn't win this, India to lose. Draw nahi chalega. Knight c5 पे तो बंद कर देगा वो. Knight c5 पे rook c5 exchange तक देना पड़ेगा हमें. Only move. Chat, look at Prag's queen on h1. It has not a single square on the board to go to. कुछ भी नहीं है उसके पास. You need to play h6 check, तभी queen h5 पे निकलेगी, otherwise completely lost. वो h6 check important है. उसके लिए हम rook c5 खेलेंगे, bc5, rook a6 check, king moves and he play h6 check and we get the queen to the game through h5. That's the only move. Chat, they have no time on the clock. Both players, Prag has 1 minute 59 seconds. Opponent has 42 seconds. भाई गलत खेल दे भाई, गलत खेल दे. Knight c5 मत खेल. But यहाँ गलत करना मुश्किल है. I don't think he has anything else. He has to defend, no? There's nothing else. Because white, there's no check to white. So I think he has to play knight c5. There's nothing else. But will Prag find knight rook c5? That's also important, right? He must have seen it. Chat stream like कर दो जल्दी से भाई जल्दी से. Yeah, that's why h6 important, chat. Queen अगर h5 में लगी तो कैसे खेलेंगे यार? He's thinking what will he play? He moves the queen to e7. Good move. Another good move by black. Now rook c6 check. He has to play rook c6 check. And now maybe Prag has some chances again. Come on, Prag, give the check. But the check will only help black, isn't it? Knight f6 and then queen e4. Oh, queen is coming to e4. But if you play queen e4, I have rook f6 check, no? And then h6 check, rook f6, and maybe I'm not sure if there's something, but there should be. Not sure, but... No, this move is really difficult to find. White has only one move and that is rook g8. Idea rook g6. Oof. Wow. No. So hard. And they are both playing on seconds, literally. He will give the check. I think when you have low time, the first thing you do is give a check, yeah, always. He plays the check. Yeah, the knight will come to f6 now. There's nothing else. Knight comes to f6. And now, chat, there are many equalizing moves, but no winning move, unfortunately. Rook g8 is a possible move here. Again. Rook g8, rook a4, rook a3. All these moves are possible, but I don't see how Prag will win this, chat. I don't see. You can claim it to Niranjan Bhai. You can contact Niranjan Bhai on Twitter and he will help you out with that. Essay varieties. Yeah, chat, this looks difficult, man. Because how will my queen ever come into the game? I'm literally playing with two rooks. तुम समझ रहे हो ना? Like his knight is basically dominating my entire queen. So he's clearly up on material, and if I can't do anything, then what is the move? I just don't see it. I think rook g8 here is the only move for Prag to, give any chance at all. Rook g8, he has to play it. कितना टाइम है? 50 सेकंड है. 50 सेकंड है बस भाई. The idea is to pick up the g4 pawn, chat, because knight on f6 pin, rook g8 is the only move. Find it, Prag, come on. भाई 50 भी नहीं, 25 सेकंड है भाई. ग्लिच था भाई आपका. Chat, I know team A is winning. They will win today, but what about team B? They really need to play rook g8, Prag. Come on, play the... play it now. Rook g8 now, let's go. 20 seconds, only 20 seconds. Opponent is 1 minute 24 seconds. He needs to find rook g8 right now. 10 सेकंड बाकी होंगे भाई. शाबाश, कह रहे rook g8 इजी. भाई मुझे घंटा दिखी थी भाई rook g8. रुक g8 तो नहीं दिख रहा था. रुक h8 तो फिर भी हमसे सोच रहा था. रुक g8 कौन सोचता है भाई? The idea is to pick up the g4 pawn. Once it goes, the queen comes to h3. 3 सेकंड में उन्होंने मूव खेला. 3 सेकंड में. जब 3 सेकंड बाकी थे, रुक he played rook a3 instead. Free rook है. That's a blunder. That's a blunder. Prag is losing, chat, I think. The rook is being lost by the queen. Queen takes a3. Rook takes f6. I don't know if it's lost or drawn, but it's not winning at all, chat. Yeah, it's a very difficult position. वो कह रहा है ये रुक ले लो मेरा और मैं तुम्हारा नाइट ले लूंगा, पर इसका होगा कैसे? काश opponent पैनिक कर जाए. काश opponent पैनिक कर जाए. He does not take the rook. Come on, पैनिक कर जा लड़के. जानता नहीं है कार्सन को पेल चुका है लौंडा वो 2 बार. डराओ रहे उसको. प्रे करो यार कोई. Oof, chat, this is so emotionally nerve-wracking, man.
Because opponent 18 सेकंड है भाई. Will he panic or will he take a chat? What do you think? 18 सेकंड भाई, 16 सेकंड उसके 15 पास. सेकंड, 15 भाई, भूल जा खेलने, भूल जा. Get into deep thinking भाई. Oh, he takes it. He takes it. 10 सेकंड He में takes बैठ it. गया यार. He takes it. And he captured the rook. Take the. Sorry, उसने knight Yeah. मार दिया, फिर उसने Take knight मार दिया. B6. Take B6. That's the only move. He takes it. Thank God for that. He takes it. Chad, this is all very intense, man. This is all very intense. ये खेला, उसके बाद ये मार दिया. किसी तरह S6 पुश करके क्वीन अंदर लाके कुछ हो Queen सकता है लानी क्या? है. Exactly. That's the entire premise of this game. Queen लानी है. कैसे लाएं उसको? वो आई नहीं रही ना. Vaishali is still defending her game. Vaishali is lost. What? What the hell? Vaishali is completely lost. Vaishali is -9. It's all over. She's losing the match. Olivia maintains her 9/9 record. Wow. Oh my God. What a horrible day for India. भाई पर This- ओपोनेंट को ऐसा भी इधर देखो भाई, सिर्फ 20 सेकंड बाकी है भाई. Team women's का मेडल अब दाव में आ गया यार. गो भाई, ओपोनेंट के पास टाइम नहीं, कुछ तो ब्लंडर कर भाई, नहीं मिल रहा है तो. टाइम चेंज क्यों नहीं है दोनों का? दोनों का टाइम कांस्टेंट क्यों है? अरे ग्लिच होता है यार कभी कभी. हो सकता है खेल भी दिया हो अभी. पोल चल रहा है एनपर्सन का भाई. यहाँ पे किडनी फेलियर हो रहा है और पोल एनपर्सन का चल रहा है. या चैट ब्लैक ने h6 खेल दिया है एंड विद दिस अनफॉर्चुनेटली Prag is नहीं. completely lost. तो कुछ है नहीं ना There's उसको nothing करने को? here. The queen is trapped and India B is going down 3-1 unfortunately. Gukesh not winning today and women's team is also losing. Hari Krishna has by the way drawn chat and Arjun has won his game. So Arjun has won. That means team A की तरफ में I think they ए only भाई, पर मैं ये यहाँ पे चेक देके ये पॉन मार दूं ना, उसके बाद तो मेरा कोई निकल जाएगा. Yeah, so rook g6 check loses on the spot, I think. Oh no, wait. Yeah, king f7, rook takes g4, knight to d2 is winning for black because the bishop is you're losing the bishop. He plays that move. There's nothing else to do actually. King f7. King h7 would again give him drawing chances. Chat apparently for some reason. I think bishop d3 check होगा. Oh, king h7 पे knight to bishop d3 check है. King h7 खेल दे भाई. King h7 खेल दे भाई. Please. 12 सेकंड. किंग S7 में क्या है? अब bishop d3 check आएगा. He played king h7. He played king h7. He played king h7. Dude, Prag is fine. मार Prag मार. g4 मार. भाई मार g4. Oh, this is coming. Okay. Come on, Prag, take the pawn. He blundered. Rook king h7 is completely winning for his opponent. पर ये भी कैसे बच रहा है, मेरे को समझा नहीं. फिर I'll just take on g4 now. हाँ, g4 तो ठीक है, g4 ले लिया. हाँ. And after that क्या? अच्छा. The idea is to win the queen now, no? तो queen He कैसा takes है, it. brother? He takes it. What would you play? That's black. Chat Prag can still only move for black is queen b3 or queen c3. Only two moves of Prag is again better. Come on, Prag, do this, man. Please, kuch kar de, bhai. Please, please, please. Chat, this is insane. 15 seconds for his opponent. This is chess, chat. This is so intense, man. I can't imagine any other game, sport जिसमें इतना pressure होता है भाई, time pressure में, like last से कुछ moves में. Will he blunder your opponent? In 9 seconds. 5 seconds. He played on 3 seconds. He played what? He played d4. हाँ, d4 खेला उसने. He played d4 क्या? हाँ, d4 खेला. Rook g6 is winning for Prag. Rook g6. Rook g6 खेल भाई. Queen h3 आ रहा है. Come on, Rook g6. Rook g6. Rook g6 Let's पे क्या आ रहा है? go. Let's go, buddy. Rook g6 आ चुका है. Now he can bring the queen to h3. Oh, h3 आ रहा है. Oh. Queen h3. Prag is winning again. Prag is winning. Let's go. इसी को भाई. Come on, let's go भाई. But अब knight d2 पे? Knight to king h3. King h3. Queen b7 check. Crazy moves.
92 king 2h3 is the insane move, allowing queen b7, and that'll be queen g7 mate. भाई ये And क्या जो है? d5 pawn है वो diagonal Wow. close कर रहा था, उसने Got it, खुद ही got it. खोल दिया भाई. Come on, Parag, you can save team B. That will still be a decent day for India, I think. He plays queen to e7 instead. अब क्वीन तो छू ही दिया उसने. Queen s3 दो खेल दो, सेकंड पे खेला. awesome. Bishop d3 is completely winning. Queen s3 is completely winning. He has multiple choices now. क्वीन s3 और Bishop d3 is +8. 9 seconds. Come on, Parag, let's go. Queen s3. Obvious move. बिशप d3 पे ये मर नहीं रहा है मेरा. He played Bishop d3. He played बिशप Bishop d3 पे d3. क्वीन नहीं मर रहा है. Rook हाँ, e6. but Rook check आ रहा है. How did he find Bishop d3? क्या How did he find क्या this थ्रिलर है भाई, क्या What थ्रिलर है. a move by Parag. What a move, chat. It And is ये all दोनों मर over. रहा है. It is all over for his opponent now. He's completely lost. Parag is going to save the day, buddy. It's insane. Double exclamation mark. Bishop d3 by Parag. Wow. What a move. What a move under time pressure. Opponent की लगी पड़ी है अब. Well, let's go, Prag. Yes, yes. Beautiful, bhai. He might literally save India a medal here with this performance. Queen a3 played, I think, back. Now Bishop f5 or Rook e6 check. Both win. Rook e6 is winning on the spot. Simple endgame में जाएंगे हम. We'll take on e1. Rook e6 check. Simple solution. रुक e6 चेक और ये मार दो ऐसा. He plays it. He plays it. Hey, did he play it? Did he play it? Where's the rook? Yes, he played. Yeah, Rook. Oh, he played. Rook is on e1. Okay, मैं को rook कहाँ गायब हो गया? He played it, chat. He played. Chat, Parag is winning. Parag is completely winning this game. India is going to win. They will tie. They will tie. Insane. Parag is definitely winning this game. The game has simplified. India is drawing. India to maintain his chances, भाई. बच गए भाई, बच गए यार. मैं रो देता भाई स्ट्रीम पे. वुमेन्स टीम भी हार गई. अभी ऐसा नहीं ना है कुछ हो जाए. नहीं, अब कोई चांस नहीं. अब इट्स ओवर. अब इट्स कंप्लीटली ओवर. इट्स रिजाइन्स. इट्स रिजाइन्स नाउ. ये रिजाइन है. यहाँ से मैं भी जीत जाऊंगा. यहाँ से मैं आई कैन विन, आई थिंक. This is completely over. He knows he's shaking his head. No, he knows. हाँ, he's shaking his head. He can't believe this. This is simple. Parag OP भाई. अबे अब क्या जीत करूंगा यार. ये तो लिटरली 1200 जीत जाएगा यार. Now it's game is over. Prag OP भाई, Prag OP. नहीं 1200 नहीं जीत पाया. जीतेगा भाई. हारेगा तो नहीं भाई. Let me think. Chat, this is queen endgame. Okay, this is not. Yeah, this is over, man. This is over. एक pawn है बस. I think king को check देने हैं. H6 भी उठा लेंगे हम check के साथ. And we will have 3 pawns up. Completely lost for him. Resigns नहीं यार. I think black still has 1 passed pawn. He will Queen keep playing. E4 check and फिर उठा सकते हैं क्या? हाँ, Queen E7 check. I think King G8, Queen E6 check, King G7 and Queen G6 check picks up the pawn with check. So it's all over. Oh wow, भाई क्या तेज है भाई तुम लोग. उठा भी रहा है check के साथ. मैं तो नहीं. Now Queen E8, Queen G6 over, yeah. Oh, Queen E8 पे Queen hanging है. My bad. Queen G6, yes, Queen G6. Let's not follow my moves. Yes. भाई and check के साथ मरेगा. That's very important by the way because Prag OP भाई, Prag OP भाई Prag कहाँ से कैसे गेम निकालता है भाई. he resigned. Prag has won. Prag has won, guys. Let's go. Awesome. Did he resign or they are signing the new वो? नहीं, New sheet भर रहा है new भाई. sheet है क्या? हाँ, new sheet है भाई. Oh, my bad. Sorry. Keep on playing भाई. Sorry. Or did he resign? No, he resigned. He resigned. He resigned. Prag has won. He resigned. Prag has won. Prag saves the day, buddy. He saves the day. Oh my God. Prag winning on demand from a worst position. Doing it twice in this tournament. What a great guy, bhai. Bhai sahab. Prag OP, bhai. Prag OP in the chat. Bad answer about true, bhai. Oof. And Arjun has also already won in India A. With that, I think India has clearly won, right? So India 1 has, I think, won, and India 2 has tied, chat. That's very important because, you know, they go to 15 points at least, and they'll be at least second rank now. That's very, very important. It might be the difference between winning gold or silver or winning none of the medals, yeah? So on the other hand, the women's team has, I think, lost. Vaishali, I don't know how Olivia converted this, but
that means women's team के लिए there'll be a tie for first place now for 2-3 teams. So it will not be an easy match for the women's team. They will have to play their best chess in the last rounds to finish. And Olivia has, Olivia performing really well, man. Just, somehow striking with 9 on 9. The only person in this Olympiad to have 9 on 9, by the way. Great performance. बाल बच्चे भाई literally. भाई एक सेकंड तो मैं इतना nervous हो गया था, faint हो गया था literally. Chad, I think it's time, first of all, to look at the Team 1 games. है ना? So quickly have a look at all the results. So first of all, if we go to the games, Vidit has drawn, Hare Krishna has drawn. Yes. Then you have Arjun has won and Sasi has won. So Team A wins 3-1 against Brazil. It was very nerve-wracking at some point, but they managed to somehow come back. So they also go to 14 points. Even Shashi Kiran played so well and Arjun bhai. Yes. You know? Then for the US team, Dominguez drew, Wesley So won, Aronian lost, and Caruana won. So they also win convincingly actually at the end. 2.5 is not pretty decent. Yeah, pretty decent. Then you have Netherlands, jahan pe Anish Giri has drawn, Benjamin Boak has drawn, Max Swammerdam has drawn, and in the final game it's Rook Bishop versus Rook, and Tabai, the Iran guy, has the Bishop. So Netherlands is fighting for the draw there. Oh. So Iran is trying to win, most likely drawn. And now we come to the all-important match between, Uzbekistan and Armenia. Usme first board pe Sargsyan against Abdu Sattarov. There's an endgame going on, and somehow, through some magic, I think Sargsyan is going to hold the game. I don't know how he did it. It was completely lost for him, but I think the game is a dead draw now. That will be a draw. Board second is also been agreed to a draw. So 1 each. Board 3 pe Uzbekistan has won. Sindaro strikes, so 2-1 in their favor. And board 4 pe bhi Uzbekistan is completely winning. It's done. It's over. So Uzbekistan defeating, I think, Armenia 3-1 very convincingly. And tomorrow's match most likely will be India 2 versus Uzbekistan. And if they defeat Uzbekistan, they'll be the favorites for gold. If they draw, then Uzbekistan is for gold. And if they lose, Uzbekistan is still for gold. So tomorrow will be an all-important match. And women's section mein, bhai? Women's section, I think India has lost. Vaishali is about to resign. I think it's all done and done. Yeah. So I think with this, India will be tied. I think first of all, their opponents Poland, and also I think one more team. I think that is, if I am not mistaken, that will be Georgia. So 3 teams will tied on 15 points, if I'm not mistaken. And we'll have the last 2 rounds become very important. So jo bhi last round acha khelega, they will win gold. I think they're still should be confident of a medal, but it's gone drastically down. So Olivia maintains her perfect score of 9/9. It's almost impossible to imagine how well she's played in this tournament, and she converts this dead draw end game somehow against Vaishali. So hats off to her. And now, chat, I think all games are finished. Am I wrong there, or are the games still going on? Vantika's game is going on. Vantika's game going on. So I think Vantika is still playing. She's fighting for a board prize. Maybe we can update the scores ताकि chat को पता लग पाए कि actually हुआ क्या आज. मैं थक गया अभी भाई यार, intense था यार. Intense भाई, क्या ही खेला है भाई प्रग ने लास्ट मोमेंट में. And it is, कह सकते हैं क्या, the win was on demand भाई. It was required, नहीं तो हाँ, absolute must है ना, absolute must, on demand. Must win situation, and from a bad position भाई, from bad position वहाँ से निकाला, found the best moves for a couple of moves, and उसके बाद position equalize किया, and then finally found the best variation, bishop to d3, which you also said was the best move. Bishop d3 या d6 था? Bishop d3. d3 था ना? हाँ. What a move to find a time pressure, man, like insane. The queen h1 is hanging, yeah, crazy move. मेरे को तो मैच तुमने बोला भाई कि ये साहिल सेड अरे बिशप टू d3, हम लगा अरे क्वीन तो मर रहा है ना अपना. नहीं लाइक अरे ये चेक आके ये मर रहा है, लाइक वाओ. ऐसे वैरायटी पे आएगा भाई, रिप्लाई आएगा यार. निरंजन भाई स्ट्रीम पे ही है ना. क्या क्या करेंगे भाई वो एक टाइम पे, थोड़ा पेशेंस रखो, आएगा रिप्लाई भाई, आएगा. ऑलरेडी टोल्ड 7 to 14 days guys, keep some patience, it will take time but you will get it. साहिल भाई चिल्ला के मूव्स दायर थे प्रक को. तो साहिल भाई हमारा स्कोर 4.5 हुआ क्या out of 6? You mean in the open section?
सब मिला के 6 टीम्स में 4.5 मिले ना. Acha, oh, you mean that way? Yeah. So I think Team A won, Team B drew, Team C won. So that's like literally 2.5. And then women's may I think Team B and C won. That's 6.5, and Team 1 lost. Yes, 6.5. And unfortunately, Team 1, if they had even drawn, their chances would have literally, been much, 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 much higher. And now they have to really play well in the last 2 rounds. Like, I think they have not lost a single game. This is their first loss. So clearly, I think they are underestimated their opponents today. And hats off to Olivia. Yeah. What a tournament for her. 9-9, dude. That's insane. 9-9, insane. Never easy to have such a score. एक बंदा लिखा है you cannot defeat these kids in blitz. ये भी है. Blitz में तो ये लोग बहुत अच्छा है ना. True भाई. भाई एक बार तो ऐसे 2 सेकंड पे मूव खेला उसने, उसके ओपोनेंट ने. रख के ओपोनेंट ने. And this happens in every tournament. I know stakes यहाँ पे high है. But when you are playing chess, I think Niranjan bhai will totally can attest to it. Like for you, it's the entire world, right? When you're playing. Yeah. चाहे वो normal कोई local tournament ही ना हो या तुम बाहर खेल रहे हो. Yes. For you, it's the entire world. तुम 6 घंटे से वही गेम खेल रहे हो. So and you playing this game, इतना nerve-wracking होता है ना, because one move is deciding the game, and it's insane to play it. And once the game finishes, if you lose, it's just like the world fell apart around you. Like इतना बुरा लगता है. Like, so it's very like chess is much more intense than other games. I feel like at a time for sure. True. आज जो भाई सारे स्कोर्स हम नीचे भी देख सकते हैं. बाय द वे एक बार हम लोग एक स्टैंडिंग्स देख सकते हैं कल क्या, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं क्या होने वाला. इंडिया का तो मोस्ट प्रोबब्ली उज्बेकिस्तान से मैच होगा, बट इंडिया 1 का किसके साथ हो सकता है एंड व्हाट आर द चांसेस वहां पे देखने को मिलेगा. यू मॉर्निंग रवि भाई, कैसे हो? हाँ बिल्कुल भाई. आजकल इंडियन नहीं बोलते नहीं यार. 8.5 उसका. एंड चैट वुमेन सेक्शन में यू कैन सी इंडिया वाज 15, नाउ दे लॉस्ट. Georgia drew against Ukraine, they come to 15, and so does Poland. And Bulgaria, Kazakhstan का मैं देखा ही नहीं है उनका क्या हुआ. So clearly now the competition has become much more intense. And it will not be an easy ride now. Even if they had 1 more point, they'll be way out of the league, right? Yeah. So but एक बात बता, जो अपना इंडिया का तो सब टफ टीम से हो गया ना. जॉर्जिया हाँ, but उनका भी हो गया ना आपस में. Oh, okay. So it's like they have also played now. So सबका अब नीचे से ही होगा, like Bulgaria, Kazakhstan, Mongolia and Armenia, whatever. So उनका भी हो चुका है. So आज Georgia, Armenia का ही था match and they drew. So it will all be a matter of India का tie break is I think better. That's a good sign. Not Poland का higher actually. So it's not even the best. So I think India really has to, I would say, win the next 2 rounds to ensure a medal. At least gold के लगा fight कर रहे हैं. So we'll see how it progresses. Next 2 अगर हम लोग जीत गए ना, तो I think we are clearly the favorite to win यार. हाँ, if we win top next 2, I think we will be gold or silver confirmed. But now it's not like gold confirmed there, because if the other teams also win both rounds, they might have a higher tiebreak. As you can see, Bulgaria, Poland both having a higher tiebreak as of now. Okay, got it, right. एक बार मेन सेक्शन पे जाके देख सकते हैं उनका क्या है. एक बार हाँ मेंस में आते हैं या फिर हाँ that will be better. बोलो. 8.5 हो गया. Yes, 8.5. वही देखेंगे अब यार किससे मैच पड़ेगा टीम 1 का. I think we have the rough results in terms of क्या हुए हैं सब टीमों के. So we have the results there, and Armenia finally loses their first match against Uzbekistan. So Uzbekistan is turning out to be a really strong team, and they lost 3-1. It wasn't even close. And they could have lost 3.5 by the way. First would be हार रहे थे जहां पे draw हुआ. So Armenia stays on 15. Uzbekistan goes to sole lead with 16 points. And tomorrow, wait a second, by the way. हम लोग second पे आ गए ना. एक second, because अब India 215 पे गई ना. हाँ, इंडिया 215 पे गई, आर्मेनिया गई 15 पे रह गया, उज्बेकिस्तान 16 पे, इंडिया 1 14 पॉइंट पे. So now Netherlands, Azerbaijan and Iran के scores matter quite a bit, because उज्बेकिस्तान का पड़ेगा उस टीम से जो 15 पॉइंट पे हाईएस्ट सीड है, not India 2. So highest seed, Netherlands right now is 1.5 each and they're drawing. So if they draw, both teams stay on 14, not 15. Then it comes down to Azerbaijan. What happened to Azerbaijan? They won, right? They drew with India, right? Azerbaijan का हो गया. They drew with India. Yeah. So India, if Netherlands and Iran draw, India 2 versus Uzbekistan tomorrow confirmed.
Oh. If Netherlands and Iran draw, if Iran wins, what's Iran's seeding, by the way? It's lower than India too, right? Oh, it is lower than India too, I think. Mhm. Yes, it is 13. So chat, tomorrow confirmed. India 2 versus Uzbekistan, 99.9%. And India 1 का? अब इंडिया 1 के हो जाएंगे 14 पॉइंट, आई थिंक, हाँ. राइट? 14 हो जाएंगे. Yes, sir. 14 में बताना बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत टीमें हैं. Oh. So they will not face any strong team. They will not Hmm. face any strong team. I think it will be strong, but not like US से नहीं होगा most likely. Because उनके ही 14 होंगे and there will be many teams on 14 और अगर points. नहीं होंगे तो we can actually दोनों गेम लास्ट दो जीत के 18 पॉइंट पे पहुंच सकते हैं. We have chance over there also of winning. हाँ, but last round tough होगा if they win. Last round बहुत tough Okay. होगा. Hmm. And आज का भी कितना tough था भाई. It felt like an easy team, yeah, but in the end it was like nerve-wracking था बहुत. Hmm. So India 1 का guarantee Awesome, नहीं, शायद बहुत टीमें होंगी 14 पॉइंट पे. We'll see how it goes. But India 2 and Uzbekistan, and if India 2 wins tomorrow, it will be crazy. Netherlands is lower seed. No, but Netherlands is the team which is defending in that game. They cannot win. They have Rook against Rook and Bishop for Iran. So Iran is the only one who can win. Netherlands cannot win, and that means Iran has a lower seed. Hmm. India and Netherlands हो सकता है. Yes, India 1 can face Netherlands. It's very much possible. कल Hari versus Anish देखने को मिले. It is possible. Yeah, quite a lot of chances, and I think all the games are completed. Vaishali ka game, what happened? I think इस position में तो resign हो जाएगा यार. Yeah, she resigned. This is lost. Has Vantika's game finished? You can't capture with this or this. 4-0. Okay, great. So, chat, I think all games have finished. Gukesh, yeah, tomorrow Gukesh against Abdul Sattarov. Yeah, crazy match tomorrow for Gukesh. Hopefully he can strike there, and he will have the black pieces. Let me check. 1 second, chat. He should have the white pieces, no? Right? Uzbekistan had the white pieces today. So did India. And whenever you have a pairing जहाँ पे दोनों के same color आने हैं, higher seed के always they will switch colors. They will get the colors they had to. And Uzbekistan का seeding क्या है? It is number 14. So India is the highest seed. India 2. So India, Gukesh will have the black pieces tomorrow. Most likely. Black होगा. Yes, Gukesh will have black. खेलेगा भाई. He will have the black. 5 and this was 6th game with black. But technically, he won with black against Caruana, and also Abdul Salam lost with the white pieces to Hari Krishna. So it's not the end of the world. चलो black ही सही है. कल निहाल के white आएंगे ना. कल निहाल के आएंगे, रौनक के white आएंगे. That's also a plus point. Awesome. And इसी के साथ भाई, this is the end of round 9 of FIDE Chess Olympiad 2022. Thank you everyone for joining. Sahil Tickoo OP, India OP, Niranjan bhai OP, everyone OP bhai. He's by OP wide. And सबको एक बार लास्ट बार जाते जाते like कर दे आज stream को. Thank you so much for joining everyone. Love you guys. Bye, take care, and see you tomorrow in the round 10, and hopefully we will win some medals. Bye, take care, and peace out. Bye, chat. See you soon.
or that with Grandmaster Gukesh. Gukesh, I'm going to ask you a few questions here. We have to choose. Tal or Fisher? Fisher. Botvinnik or Lasker? Botvinnik. Handshake or fist bump? Nowadays fist bump. Okay. King walk or king hunt? Probably king walk. Knight or bishop? Bishop. Carlson or Nepo? Carlson. Blindfold or Simon? Blindfold. Fisher random or bug house? Fisher random. Opening or endgame? Both. Rook endgame or king and pawn endgame? King and pawn. Armageddon, in Armageddon, which is your color, white or black? Probably white. Round robin or Swiss? I have not played much round robin before, so like it's a new thing. So round robin. So you want to try round robin? Yeah. We hope you get invited to many strong super round robin events. Adibin's B3 or Nepo's bomb cloud? Sorry, repeat. Adibin's B3 or Nakamura's bomb cloud? Probably Adiban's beat. Thank you, Gukesh.